We're going to start with our workshop. Please ensure that your mobile phones are on the silent mode. In this world that is full of pollution, we need a helpful solution. We need people's contribution to make our environment be a beautiful place to have an imagination. All people want to have a good place to live in peace, enabled to achieve. You just need to believe that someday we're going to live in a beautiful and healthy earth. Good morning to one and all present here. On behalf of Amity School of Applied Sciences and the University of Uttar Pradesh Lucknow campus, I, Vindika from BTech Biotechnology, and I, Rumaya from BTech Biotechnology, welcome you to the National Workshop on Spreading Awareness on Emerging Challenges of Air Pollution and Climate Change on Human Health in Urban Ecosystems. We are honored to have a distinguished lineup of experts with us today. Professor Chirashi Ghosh ma'am, Professor Dr. Suryakant sir, Dr. G.C. Kisku sir, Professor Dr. Kamar Rahman ma'am, Professor Dr. Anil Bashish sir, Professor Dr. Anil Kumar Tiwari sir, Professor Dr. Asita Kulshrestha ma'am, and Dr. Upasana Yadav ma'am to discuss various aspects of air pollution and climate change, its impact on human health, and its management in today's world. Ladies and gentlemen, it is my great pleasure to extend a warm welcome to each one of you at this prestigious national workshop being organized by the Environmental Pollution Laboratory, Department of Environmental Studies, University of Delhi, in collaboration with the Amity School of Applied Sciences, Amity University, Uttar Pradesh, Lucknow campus. This workshop is proudly sponsored by the Department of Science and Technology, Government of India. Before formally opening today's workshop, I would like to present a few couplets on today's theme. Agar Maholiyat Khalis ho. Maholiyat means environment and Khalis would mean pure. Agar Maholiyat Khalis ho, to har saans ek वरदान है. अगर दम घुटता हो सांस लेने में तो ये बड़े शहर की पहचान है. माहौल में जहर घोलने वाले कोई और नहीं, हम इंसान तुले हुए हैं जमीन को बर्बाद करने में, तुले हुए हैं जमीन को बर्बाद करने में और कहते हैं कि हम इंसान महान हैं. Indeed, we need to hold ourselves accountable for what effect our activities have had on our environment. Moving forward, as we gather here to share knowledge, insights, and innovative ideas, I am honored to introduce our very own Professor Dr. Asita Kulshrestha ma'am, Coordinator and Head of the Amity University Applied Sciences Department. Dr. Kulshrestha has completed her MPhil and PhD from Aligarh Muslim University and received her postdoctoral fellowship from CSIR. She has more than 50 publications in the field of solid-state spectroscopy and radiation physics and has over 30 years of experience in teaching graduate and postgraduate students alike. Currently, she is working as the head of Amity School of Applied Sciences, managing institutional and administrative responsibilities. I would kindly request Professor Dr. Chirashi Ghosh ma'am to present a planter and a memento as tokens of appreciation to Professor Dr. Asita Kulshrestha ma'am. Please, everyone. I would request all the dignitaries to please join us up here on this stage and then proceed with the felicitations. I would request Professor Kamar Rahman ma'am, Dr. Asita Kulshrestha ma'am to please come up here on the stage. Professor Dr. Chirashi Ghosh ma'am, we welcome you on the stage. Please. A huge round of applause, everyone. We would also request our very own dignitaries, our chief guests, to
please honor us by coming on the stage. Please. A huge round of applause, please. अरे माइक के भाई इधर करेंगे फिर माइक माइक बदल I would also kindly request Dr. D.C. Kisku sir to please come up on the stage and join us. Please, sir. Yeah. Okay, thank you, sir. I would kindly request Professor Dr. Atinakul Shrestha Ma'am to join us and open the workshop with a welcome address. Please, ma'am, we invite you to the podium. Round of applause, everyone, please. Very good morning to everyone. With the blessings of our Honorable Founder President, Dr. Ashok K. Chauhan sir, with the Honorable Chairman sir, Dr. Asim Chauhan sir, and with the blessings of our Pro-VC sir, Professor Dr. Anil Vashisht, Deputy Pro-VC sir, Professor Wing Commander Dr. Anil Tiwari sir, and our Honorable Dean Research, Professor Dr. Kamal Rahman ma'am. I would like to welcome all our guests and all participants and students for this workshop on spreading awareness on emerging challenges of air pollution and climate change on human health in urban ecosystem. As for this workshop, I would like to welcome the organizer of this workshop, Professor Dr. Chirashri Ghosh ma'am, who has very given her consent and means promoted this initiation for the working of this workshop and just motivated us to take part in it so that our students will get a briefing that what is their role and how can we really contribute in climate change and can keep this our air little bit more cleaner. So I would like to welcome Professor Dr. Chirashri Ghosh ma'am from Delhi University, Department of Environmental Science. I would also like to welcome Professor Dr. G.C. Kisku from CSIR IITR, who has also worked a lot on this air pollution and for environmental causes. So welcome, sir, for this workshop. He will definitely be able to advise
our students about what all we can do to keep a check on our environment pollution and how can we really contribute in climate change. I would like to welcome our Dean Research, Professor Dr. Kamal Rahman ma'am also, who has always been very, very supportive and always been there with us for whatever we do for the cause of environment, because she is has done a lot of work on air pollution, has contributed a lot in a very constructive and a positive manner. She has suggested a few possibilities or how can we keep our reduce air pollution. So lot of research she has done in this field, and definitely her expertise on this area will help us to know more about the various causes and the remedies. So I would like to welcome all our heads of institutes and faculty members from various institutes for who are present over to attend this inaugural session of the workshop, and all the participants who have registered or here for this workshop. I welcome you all, and I'll simply just say that attend this conference very enthusiastically, participate in it and attend it to in the completeness. Don't just be here for a small time and then move away from here, because if you do the workshop, if you do the hands-on training, you will come to know various other aspects which you may not be aware of. So welcome all, and I hope this workshop will be a very, very good effort from our side and will result in some positive vibes for cause of environment. Thank you, everyone. Thank you, ma'am. Before moving forward, I would kindly request Professor Gautam Ghosh, sir, Vice Chancellor of Gandhi Institute of Engineering and Technology, to grace us by coming onto this stage. Please, sir. Huge round of applause, everyone. I would also kindly request our chief guest, Dr. Suryakant sir, Professor and Head of the Department of Respiratory Medicine, King George's Medical University, Lucknow, to please grace us on this stage. Please, sir. Okay, he'll be joining us shortly. So, moving forward, Ritika. Let's begin our event by invoking the blessings of Goddess Saraswati with the Saraswati Vandana and the lighting of the ceremonial lamp. We kindly request our distinguished guests and esteemed faculties to grace the stage for the lamp lighting ceremony, which marks the illumination of our event and the beginning of our shared journey of knowledge and enlightenment. Your presence truly honors us. Please, ma'am. तेरी शरण में हमें प्यार देना
दुनिया ने समझी दुनिया ने जाने जलतम की भाषा गंगी भाषा। Thank you, everyone. Next, I would like to introduce Professor Dr. Qamar Rahman ma'am. I would kindly request Professor Rashi Ghosh ma'am to present a sapling and memento as tokens of appreciation to Professor Dr. Qamar Rahman ma'am. Please, distinguished please. Please give a huge round of applause. Thank you, professors. Dr. Rahman is the Dean of Research at Amity University, Uttar Pradesh, Lucknow. Dr. Rahman is also a renowned chemist with over 50 years of expertise and in the toxicity of occupational and environmental pollutants, including fibers, particles, and nanoparticles, with an MSc and PhD in chemistry from Agra University. Her groundbreaking research has earned her honors like the UP Ratna Award and the Yash Bharti Award. She currently serves as Distinguished Professor and Dean of Research at Amity University, with global roles such as EU External Advisor on Nanotechnology and as a visiting professor at the University of Rostock, Germany. She has published over 200 papers, 12 monographs, and collaborated with leading institutions worldwide. We would like to invite Dr. Rahman to share her address with us. We are honored to have you here today with us, ma'am. A round of applause, everyone, please. Thank you. आप सबको मेरा बहुत बहुत आदाब and I congratulate Dr. Prithviraj and Dr. Upasana for organizing a conference on such an important subject. I welcome all the guests, Professor Mrs. Ghosh, Dr. Ghosh, and from my old institute, Dr. Kesku, and all the staff members and students. You know, this is a very, very important topic. We are organizing meetings on this topic from long time, but every time when I see the environment, it is degrading. If I remember COP 28, it was a conference at Dubai, and everyone has decided that they will not use fossil fuel. What happened? In the other conference, in the latest conference in Paris, these people kept quiet. Nothing happened. In Glasgow, we Indians have decided and committed that we will not use much coal and we will reduce methane. Nothing happened. So we organize conferences. We try to work on that. थोड़ा बात ना कीजिए, थोड़ा सुन लीजिए. Hello. But nothing is happening. I hope that the young people of Amity University will take a step because it is very, very important. Development is important. On the other hand, sustainable development, which should not degrade the atmosphere, which is very important. You see how much the air is polluted.
We are responsible for that. Today I wanted to reach here at 9:45. I reached here at 10:30 because there was so much traffic jam. It's everyone is using cars. I remember we organized a meeting in Delhi. And some of the participants from Oslo University, they said it's strange that you people don't use the cars together. Everyone has a car. I think all the students also having their own cars. And the traffic jam is so bad. It's very difficult to come or to reach the places. Everyone wants to go. There is no law, no rule. So we must think about that. And I'm sure you people do. I remember 1737, the Chipko movement. When the people from Rajasthan, they cut the trees and they said, we will not let the trees cut, you can kill us. We have to organize such things. We should do those things because we must work on that. It's not that we organize conferences and we forget. We should do work on that. We should try to do something for the environment because environment day by day is going very bad, and especially the air quality up here. You know, today I'm talking to you, I'm standing and winter is coming. Pollution will increase more. The villagers will burn their stables and that will pollute more. Apex law has come. They are trying to control that, but it's very difficult to control. And people also don't want to listen. For example, I'm talking to you and some people are talking their own things. We must work seriously on these issues. I worked throughout my life. I tried that as much I can, I did. But then too, at times I feel very sad that things are not coming. We publish papers. I published 400 papers. 45 students have done PhD under me, and they are doing very good work. But the things which should happen, it's not happening. For the first time today, I'm talking in a slightly sad way. We must work, and you young people should do that. I hope Upasana and her boss will take that because they are on. This is the second meeting you are organizing or third? The third one. So they are taking, but they can take only the help with your help. And I hope the younger generation of Amity University will do that. And I am ending my talk, whatever I talk to you, with a share. ये चिराग जैसे लम्हे कहीं रायगा न जाए, कोई ख्वाब देख डालो, कोई इनकलाब लाओ. तो आप लोगों को इनकलाब लाना है, कोशिश करना है कि हमारी हवा जो है वो साफ हो. Because you see what is happening, and we must work, and it is the responsibility of everyone. Try to cool the cars, try to use bicycles. You know, I was at Rostock University, and on my birthday, the president of the university came to give me flowers on a bicycle. He said, I don't use cars. And you young people, if you use bicycles, it's always good, not the cars. So it's just a message which I'm giving, and thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am, for your inspiring words. Audience, we are also joined by our chief guest, Dr. Surya Kant sir. Please give a huge round of applause. It is my honor to introduce our esteemed convener and organizing secretary, Professor Chiraji Ghosh. First and foremost, to formally welcome Professor Ghosh and to honor and appreciate her contributions, I respectfully invite Dr. Upasana Yadav ma'am and Dr. Asita Kulshrestha ma'am to felicitate Professor Ghosh with a planter and a memento as tokens of our gratitude. Let's hear it from Professor Ghosh with a warm round of applause.
Professor Ghosh earned her PhD degree in ecotoxicology from Vishwabharati University at Shantiniketan, followed by a postdoctoral research at the University of Wageningen, the Netherlands, in the area of wastewater management using non-conventional methods. In the year 2000, she was a recipient of the prestigious Dark Fellowship and attended a graduate program on water technology at the University of Applied Sciences, Sugarloaf. Upon returning to India, she began significant research in environment, pollution and health at IIT Delhi and joined the University of Delhi in 2003 as a faculty member in the Department of Environmental Studies. She has been the project coordinator of a number of sponsored research projects and is also the founder member of Center of Environmental Studies and Disaster Management at Miranda House and Shivaji College, Delhi University. One of her major research contributions is the preparation of carbon footprint map of Delhi, which has been presented at Copenhagen Summit 2009 by the State Chief Secretary. She has been also a coordinator of National Air Quality Monitoring Program, SUFFER, since Commonwealth Games 2010. In the year 2011, her work, Water Footprint Map, was presented as a case study from Asia-Pacific region by the International Climate Change Work Group and the meeting held at Johannesburg, organized by ITRC Canada. She was selected as a panel speaker by the SEG Women's Network Committee in the year 2019 at San Antonio, Texas. Till now, she has published 80 research publications in the peer-reviewed journals and supervised 30 doctoral theses. Being a teacher and researcher, she is trying to mobilize community on environmental issues and sensitizing them on how their specific effective lifestyle changes can help them to attain better quality of health. Please join me in welcoming Professor Chirashi Ghosh to the stage for a welcome address. The stage is yours, ma'am. Please give a huge round of applause. Very good morning. And I'm very happy to see so many young blood and young faces here. I'm really first thankful to the Vice Chancellor of this university. Then I provision Dr. Professor Anil Mrs. Then I respected the Dean Research Ma'am, Raman Ma'am, and then Head Ashita Ma'am. And definitely all credit goes to for the day at the Upasana Ma'am. And my heartfelt thanks to the participatory, the contributor of this main program, our chief guest, Professor Surya Kant, and also Dr. Kishku sir and Dr. Gautam Ghosh from the other universities and the other fraternity. You know, this program is not possible by this contribution and participation from all of you. Today I need your one date. This is the whole day you will be with me. And here, it's not a listening paper, as ma'am rightly said, what exactly I am for, came here from Delhi. My same opinion, like Professor Rahman just now told, that we have done enough on environmental paper publications, research, contributing to the student syllabus, but we have severely failed. Why we are today? Why it is need that we are leaving our own domain and comfortable zone, coming in the different university to discuss with you what is the problem. Problem is there that we have forgotten our role to the society and also to the environment. Because we'll come whole day, we'll spend with me, so I'm not going in detail anything, but two index value can tell you how bad we are right now in suffering with the environment. It is not the media is telling us, it is the international platform. We are proud of India. Our country is such a 5 trillion economy. We are proud in computer, anything. We are dominating in Silicon Valley. We are dominating in art, culture. We are a global leader right now, and that proudly we can always feel that. But another version of the coin is that we are badly in environmental management.
When a foreigner is coming to our country and telling that it is the stinking, the pollution is so high in this country. Equally, after feeling happy for the country, we are feeling bad for the country. Environment, just rightly said, the small children have given a good study that exactly ये हमारे कारण है, किसी के कारण नहीं है. It is proven by that all research-based data set that climate change is right now not geogenic, no, it's an anthropogenic. मतलब we are the responsible. Environment is going down because we are managing badly. तो हमें तभी आज गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लाए हैं मेरी लाइफ एज यू ऑल नो द लास्ट ईयर गवर्नमेंट वाज मेरी लाइफ then definitely the government is thinking ek peड़ maa ki naam. Why government is thinking in that way? That not the top down approach. Right now the bottom up approach should be equally faster. That we should manage these two approach together the way that environment will not look the way we are looking at this. And as a result, we are getting different impact. Our professors, doctors are here, so he will discuss on very detail. And I will also show you some different types of monitoring tool, which is very easy whole day. And I have that will be much clarity. You have that how we do the research. It's not that you need big instrument to do research. I have a request to all the people kindly give attention. Otherwise, पहला सेशन ही नहीं सुनोगे तो सारे दिन कैसे चलोगे? Important part is there. Give attention to the program because all the senior people living there who are coming to you at your home. So we are guests. I think you will be much. I expect that your participation because at the end we are having quiz from this today's program. We are having some interactive approach. आप भी कुछ बोलोगे. ये नहीं कि हम ही कुछ बोले और बोल के चले जाए. It's not a program government has given money just to conduct for a protocol. The problem is that I am here to listen from your side to convey to the government also to the DST. So this money for me it's every penny count where I want to listen the young boys. आपकी क्या प्रॉब्लम जानकारी है कहाँ पर नॉलेज गैप है आप क्या सुनना चाहते हो आप क्या जानना चाहते हो यही आज की क्रक्स ऑफ द प्रोजेक्ट वर्कशॉप है we have tried that you like the program आप participate करोगे कुछ हम वर्कशॉप में कुछ ट्रेनिंग टूल दिखाएंगे you will calculate you will tell us कि at least at the end of the day when you go back you start thinking today's day after such a huge success of India in the climate change performance index we are going little bit better but environmental pollution index there are index this index we are in the bottom last chart mein hai. It is same for us that our SDG goals, for theory it is good, but this SDG goals we are not implementing properly because our environment is in a very bad condition. Just like ma'am, I'm also after doing so many research, so many years, still I have a guilt feel that we have not done enough for this country. And so we have started. This is my road show. आप बोल सकते हो ये खाली आपके पास नहीं हम हर जगह जा रही हैं her college, her school, even in the community, everyone is stakeholder. Everyone has to understand their way of living. So if there are some few tips, I want to know where you can do the changes and being not compromising in your lifestyle, you can do better. समझना है और दूसरे को समझाना है. This is the human chain, so I want to do. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now, to inform the participants, as ma'am also told you, we're also going to have an interactive quiz session later. So please stay attentive to the presentations. Moving forward, it is with great honor that I introduce to you our esteemed chief guest, Dr. Surya Kansa, luminary in the field of respiratory medicine and a beacon of academic excellence. To formally welcome Dr. Suryakant and to honor and appreciate his efforts, I respectfully invite Dr. Julashri Ghoshma to felicitate Dr. Kant with a planter and a memento as tokens of appreciation. Let's give a big round of applause to show our appreciation, everyone.
Please give a huge round of applause. Thank you, professors. As the professor and head of Department of Respiratory Medicine at King George's Medical University, Lucknow, Dr. Suryakant has achieved remarkable acclaim, being ranked among the top 2% of scientists worldwide by Stanford University, California, USA. His prolific contributions include 21 books, 69 book chapters, and over 500 research publications, showcasing his relentless pursuit of knowledge. Dr. Kant's illustrious career is adorned with 183 awards, 21 fellowships, 15 orations, and 2 US patents. His dedication to advancing medical science has earned him the prestigious BSc from Himwati Nandan Bahuguna Medical Education University, Uttarakhand. As the chairman of the North Zone Task Force for the National TB Elimination Program in India and a member of governing bodies at AIIMS Patna and Rajasthan University of Health Sciences, Dr. Kant's influence extends far beyond academia. He has held numerous prestigious positions like being the past president of the Indian Chess Society, National College of Chess Physicians, Indian College of Allergy, Asthma and Applied Immunology, Medical Science Section of Indian Science Congress Association, past Secretary General, Indian Society Against Smoking, and past National Vice Chairman of IMA-AMS. His commitment to community health is evidenced by his participation in over 20 NGOs and his recognition as a health icon in esteemed publications like India Today, Amar Ujala, and Outlook. Without further ado, please join me in welcoming Dr. Suryakant to the stage to share his invaluable insights and address us on this momentous occasion. Please, sir. Good morning, and I'm extremely sorry for being late, stuck in the commitment on the due some emergency commitment in the department. And it's my pleasure that I'm part of the dais where the living legend Dr. Qamar Rahman is there in the field of biotechnology and nanotechnology. So I think we have a grand round of applause for her. हमारी तो ये मतलब माता जी हैं, आपकी दादी जी भी हैं और आपकी mentor भी हैं. That's a wonderful thing. If Dadi is your mentor, then of course you are enjoying both things. You are enjoying the academic mentoring, social mentoring, emotional mentoring, and every kind of mentoring. So you are lucky enough that you are getting the at least 4 to 6 hours of patronage daily from her. I'm unfortunate that I'm getting often on very short while duration of time exposure and mentoring. So thank you, ma'am, for your attachment, affection, love, and blessings. And I'm really thankful to Delhi University, the husband and wife, Mr. Ghosh, Dr. Ghosh, and his UC vibrant wife. अब मेरी वाइफ नहीं है तो मैं कुछ भी कह लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता. वो होती तो थोड़ा रिस्क था कि मतलब किसी और लेडी को आप ऐसे कैसे कमेंट कर सकते हैं मेरे अलावा. So I was just interacting with Dr. Ghosh, and they have very potential for research. And one of my Dr. Tisku from the retired from the IRTR, is a very vibrant and dynamic worker for the air pollution and the technologies, dynamics, etc. The organizing lady, great show person, I would say, Madam Yadav, always organizing beautiful event every year, I would say. And I don't know how many of you were there in this hall last year also. How many of you were there in the last year?
So a few were there. So, okay. So I'm Dr. Suryakant, already introduced, working in the Department of Respiratory Medicine. So how many you have COVID last pandemic? How many of you have COVID? गर्व से कहो हमें कोरोना था, गर्व से कहो यार, पूरा हाथ उठाओ. हाँ, भगवान ने इतना लंबा हाथ दिया, आधा क्यों उठा रहे हो? Okay, so at least 20 people you have COVID. Okay. How many you have seen my COVID advices during the pandemic by YouTube channel or TV interview or media interview? Okay, mostly. Okay. Other than those who have not COVID, I think they have also seen in that role. So that was the very desperate time for 2 years. And I'm lucky enough that government me chosen as a expert for making the treatment protocol of the COVID-19 in Uttar Pradesh. That has become a very magic point, very talkable thing throughout the world. Even the international media, they interviewed me and my principal secretary, health and medical education, 3 times, that how you control the COVID in UP. So that was the era when people started new things. So many things they adopted, and still you remember. So can you tell me what new things you adopted during the COVID times? Anybody? At least those who had COVID, they can tell me. What new things which were you not practicing before COVID, but you learned during the COVID and you adopted during the COVID? Anybody? Number 1, जिसके चेहरे पे सब mask, yes. Number 2, yes. क्या बोला? Yes, sanitation, sanitization. Yes. Number 3, steam inhalation. भाप लेते थे नहीं. Number 4, immunity booster, काढ़ा लेते थे नहीं. Number 5, social distancing. अभी भी करते हो क्या? Okay. So these 5 things which we learned during the COVID times. And I don't know how many you are practicing. So with this background, we are coming to today's topic. I'm really thankful to this vibrant university, and house is always full. Even balcony is full. So thank you organizers, especially Dr. Upasana Yadav and her team. The air pollution. If you ask me what is the most important avoidable thing for the promotion of health or prevention of diseases, then my answer would be number 1, number 2, number 3, air pollution, air pollution, air pollution. So, and air pollution, which organ is affected the most for air pollution, by air pollution? Lungs. And I am the specialist of lungs. Okay. So this, I'm fortunate enough or unfortunate? So I'm both. So if you consider these 3 things in your life, then you will understand what is the importance of lungs, what is the importance of breathing, and what is the importance of oxygen. We can live without food for 3 weeks. We can live without water for 3 days, but we cannot live without breathing, without air for more than 3 minutes. कोई 3 मिनट से ज्यादा बिना सांस के रह सकता है? कोशिश करके देखिए कभी, करना भी नहीं. And we breathe around 25,000 times a day. ये सांस जो मिलती है हमें, because I used to say that we start our life from first breath, and our life ends with the last breath. So what is life? Nothing else. It's basically breathing. Without breathing, there is no life. Without oxygen, there is no life. So the God has gifted 5 vital organs to your body. Anybody who can tell me what are the 5 vital organs for the body? So many organs in the body: bones, muscles, joint, skin, hair, so many things, heart, brain, etc. But what are the 5 vital organs in the body? आप शुरू से शुरू करिए. इसके प्रोटेक्शन के लिए आप हेलमेट लगाते हैं. सो ब्रेन, यस. देन चेस्ट में आइए, 2 ऑर्गन है, हार्ट, एंड थर्ड इज द लंग्स.
and then abdomen में आइए, kidney and liver. So 5 are the vital organs. But what is the most important? Who is the topper among these 5? Is the lung. Brain cannot survive without oxygen. Heart cannot survive without oxygen. Liver cannot survive without oxygen. Kidney cannot survive. Nobody can survive without oxygen. So oxygen is body fuel. आपके पास बहुत अच्छी कार है, मर्सिडीज कार है, उसमें पेट्रोल नहीं है, चलेगी? चलेगी नहीं चलेगी? बोलो भाई, नहीं चलेगी? चलेगी नहीं चलेगी? आपके पास बहुत खूबसूरत दिल है, इतना खूबसूरत है कि हर 1 मिनट पे इधर से उधर चला जाता है, तो लेकिन अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो भाग दौड़ करेगा दिल, ऐसे ऐसे पंप करता रहता है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हाउ मेनी टाइम्स? 72। करेक्ट आंसर 72। किसने बोला? इनके लिए जोरदार तालियां। अब जिन्होंने 72 बोला है वही दूसरा आंसर करेंगे। एक बार में हम 1 मिनट में हम सांस कितनी बार लेते हैं ये नहीं मालूम। दिल की हर बात पता है, फेफड़े की कोनो बात पता नहीं है। So we breathe around 25,000 times a day, and in a minute we breathe around 14 to 18 times, average 15 times. 1 मिनट में हम 15-16 बार सांस लेते हैं और हमको पता नहीं चलता। Yes. So the most important thing in our life is oxygen, is breathing. कोई मर जाता ना तो क्या कहते हैं? उनकी सांसें रुक गई। Yes. So this is one pair of lung. Have you ever seen? Okay, this is one pair of lung. Anatomy of 100 square meter. 10,000 liters of air we breathe every day in 24 hours. 10,000 liters of air breathe every day. 10,000 liters of blood get circulated in the lungs. And what is the purpose of? ये सांस तो हमें समझ में आती है, फेफड़े में आती है, ये ब्लड क्या करने आता है? To get purified. So lung is not only supplying the oxygen, but it is a purifier of the blood. Blood is impurified because of the presence of carbon dioxide released by various tissues and cells of the body during our activities and daily activity, day-to-day life. And this blood get purified. The carbon dioxide get released by lung, oxygen get infused into blood. So this is the function of the lung. Number 1 is the ventilation. Number 2 is the perfusion. And what is the net result of this 10,000 liters of air and blood passing through lungs is the delivery of 500 liters of oxygen. हमको दिन में कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 500 लीटर। अभी कोविड में जब कोई भर्ती हुआ होगा, आपने बिल अस्पताल का भरा होगा, डॉक्टर चार्ज जितना, नर्सें चार्ज जितना, बेड चार्ज जितना, ऑक्सीजन चार्ज जितना। अगर सोचिए आपको अगर ये नॉर्मली बिना भर्ती के ऑक्सीजन चार्ज देना पड़ जाए तो क्या होगा? कभी सोचा है? सोच के देखिएगा कि कहां से मिलती है हमको ऑक्सीजन। 10,000 लीटर रोज हम सांस लेते हैं, उसमें से 500 लीटर ऑक्सीजन हमें मिलती है। ये मिलती कहां से है? कौन बताएगा? ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर। कहां से मिलती है? ऑक्सीजन प्लांट से। ओनली प्लांट्स, नॉट ऑक्सीजन प्लांट। ऑक्सीजन प्लांट तो हम लोग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगवाते हैं। So that's why during COVID time, if some of you have seen my YouTube videos or during COVID times, then I mentioned plants are not simply plants, they are oxygen plants. So they are supplying oxygen to us. अभी आप चल रहे हो, आपका एक पेन गिर जाए और पीछे से कोई दूसरा उठा के दे दे आपको, लीजिए, तो आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? सुनने में नहीं आया। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। कम से कम 2-3 बार तो बोल ही दोगे एक पेन, 20-25 रुपए पेन के पीछे। और ये जो 500 लीटर ऑक्सीजन देता है उसको कभी आपने थैंक यू बोला? दिन भर में 500 लीटर ऑक्सीजन दी आपको, और वो भी जिंदा रहने के लिए, आपने कभी थैंक यू बोला? बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? कितने लोग हैं आज के बाद बोलेंगे? अभी भी कुछ लोग नहीं बोलेंगे। अबे मर जाओगे नहीं बोलोगे तुम।
जब भी कभी पेड़ पौधे के सामने निकलिए, नमस्ते पेड़ पौधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जिंदा रहने के लिए 500 लीटर ऑक्सीजन रोज दी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये जेस्चर पेड़ों के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये जेस्चर होना चाहिए। जितनी इज्जत आप गुरु की, माँ की, बाप की, अपने देवी देवताओं की, अपने धर्म की इज्जत करते हैं, उससे भी ज्यादा इज्जत आपको इन पेड़ पौधों की करनी चाहिए। ये बात मैं क्या कह रहा हूं, अभी आगे सामने आई। दिस इज, ये बिल्कुल वही फोटो है जो आपके सीने के अंदर है, लंग की। देखिए, ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कैसा है ये, कैसा लग रहा है फेफड़ा? यस, ये भगवान का बनाया हुआ फेफड़ा है, हेल्दी लंग। ठीक, अब हम दिखाएंगे एयर पोल्यूशन ने कैसा कर दिया हमारा फेफड़ा। ये है पॉल्यूटेड लंग। कौन सा बढ़िया है, पहले वाला दूसरा वाला? पहला। तो हम दूसरा क्यों बना रहे हैं, किसकी वजह से बन रहा है? अच्छा, कुछ तो और महान है। एयर पोल्यूशन तो वैसे ही हम एयर पोल्यूटेड ब्रीदिंग कर रहे हैं, कुछ ऊपर से उसको और खराब कर रहे हैं। कैसे खराब करते हैं? अब हम ये क्वेश्चन पूछेंगे कितने लोग सुट्टा मारते हैं, तो कोई ईमानदारी से हाथ नहीं खड़ा करेगा, हमें मालूम है। इतने बेईमान बैठे हैं यहाँ। एक क्वेश्चन मैडम हम पूछें कि कितने लोग स्मोकिंग करते हैं, कोई आंसर ऑनेस्ट नहीं देगा मुझे, इसलिए मैंने पूछना बंद कर दिया। एक बार मैंने बहुत पहले, शुरू में मैं टेम्पररी लेक्चर था, तो बहुत ही उत्साहित था। आई वॉज वर्किंग एज ए सेक्रेटरी जनरल फॉर इंडियन सोसाइटी अगेंस्ट स्मोकिंग, और मैंने वो दूरदर्शन के अंदर उनके सपोर्ट से नया नया मॉल खुला था, ये वेब, फर्स्ट मॉल यहाँ पे वेब सिनेमा, वेब मॉल खुला था लखनऊ में। तो मैंने कहा हम कैंप लगाएंगे, लिखा एंटी स्मोकिंग कैंप। हमारे कैंप में एक चिड़िया भी नहीं आई, और हमें लग रहा था कि इतनी भीड़ सिनेमा देखने जा रही है, आ रही है, ये आ क्यों नहीं रहे हैं? तो पता चला थे तो उसमें बहुत स्मोकर, लेकिन हमने बैनर गलत लगा दिया था, एंटी स्मोकिंग। अगली बार हमने लगाया हेल्थ कैंप, भीड़ लग गई, लाठीचार्ज करना पड़ा, इतनी भीड़ लग गई। कुछ जगह हम मान लेते हैं कि लोग झूठ ही बोलेंगे, सच नहीं बोलेंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने अब पूछना बंद कर दिया, हाउ मेनी स्मोकर्स आर सिटिंग इन दिस हॉल। तो आप दोबारा देख लीजिए, ये था हमारा हेल्दी लंग, और ये हो गया हमारा एयर पोल्यूटेड लंग। अब अगर इस लंग को हम हेल्दी नहीं रखेंगे, तो जो फेफड़ा हमारा भगवान ने 100 साल कम से कम जिंदा रहने के लिए बनाया था, वो फेफड़ा हमारा कमजोर हो जाएगा 60 साल में ही, 70 साल में। हमारी बिना सिगरेट पिए, बिना धुआं के पे ही हमारी सांस फूलने लगेगी 60 और 70 साल की उम्र में, क्योंकि एजिंग प्रोसेस ऑफ द लंग and other organs will become faster. Now coming to the topic per se, air pollution. It's around 7 million premature deaths per year. ठीक, 70 लाख। ठीक, what a coincidence that yesterday was the Sunday, and All India Radio, they have a live interview of myself at their studio on the same topic. And in the evening, if you have, I mean, I don't know how many of you see the Uttar Pradesh Doordarshan News. They have also interviewed me for the same topic, and coincidentally, today also I'm speaking on air pollution. So I think this is the time of communication, awareness regarding the air pollution. So हमारे देश में कितने लोग मरते हैं एयर पोल्यूशन के हेल्थ हजार से? 17 लाख, 17 lakhs। पूरी दुनिया में कितने लोग बोलते हैं? 70। बहुत आसान है, 70 में से 0 हटाइए और उसके आगे 1 लगा दीजिए, तो इंडिया की मॉर्टेलिटी आ गई, और वर्ल्ड की मॉर्टेलिटी 70। ओके, 7 इज ए वेरी ऑस्पिशियस नंबर। आप शादी करते हैं, कितनी भावरें लेते हैं आप? 7। हुई है क्या? हुई नहीं है, लेकिन भावरें मैडम सबको याद है। उसमें पंडित जी कितने वचन दिलाते हैं, वचन करिए, पति पत्नी दोनों आपस में वचन निभाएं। कितने वचन होते हैं देखिए, मतलब दे आर रेडी टू लॉन्च। इनकी शादी करवाई, उपासना जी कहाँ आप एयर पोल्यूशन वर्कशॉप और उसमें, इनको भावनाएं कितनी होती है ये पता है, वचन कितने होते हैं ये पता है, दिल कितने बार धड़कता है ये पता है, सांस कितने बार लेते हैं ये नहीं पता।
ओके, तो सो व्हाट इज द ग्लोबल मोर्टेलिटी ड्यू टू एयर पोल्यूशन? 70 lakhs। ये जो मिलियन एलियन थोड़ा सा वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है, हम लोग लाख करोड़ में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है कि यार 7 मिलियन को, तब हमें समझ में आता है अच्छा 70 लाख लोग मरेंगे वो। So 70 lakhs is the global mortality of air pollution and 17 lakhs is the mortality in our country. WHO क्या कहता है? Around 136 million Indians means 96% of Indian population, almost every Indian face particulate matter 2.5। अभी हम बताएंगे PM2.5। सबको मालूम है PM2.5? हाथ खड़ा करो जिनको मालूम है। Have you heard the name PM2.5? नहीं? एमआईटी यूनिवर्सिटी से ऐसे उम्मीद नहीं थी, पिछली बार आए तो सबने हाथ खड़ा कर दिया था, क्या बात भाई इस बार कुछ? अच्छा नए बच्चे ने, अच्छा इसीलिए हर साल आपको बुलाया जाता है। ओ अब समझ में। ओके, सो अभी बताएंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि सबसे खतरनाक एयर पॉल्यूशन का कंपोनेंट है, उसका नाम है PM2.5। ठीक, पीएम से तो याद रहेगा, प्राइम मिनिस्टर वो भी सबसे खतरनाक होता है, इंपॉर्टेंट, और जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे खतरनाक भी है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, अब है तो वो इंपॉर्टेंट, लेकिन अब डर सबसे उसी को लगता है। तो WHO कहता है कि 96% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन फेसिंग 2.5 कंसंट्रेशन विच इज अबव द रिकमेंडेड लेवल। आप समझ लीजिए, अभी समझ लीजिए, आगे समझा देंगे कि 2.5 जो कंपोनेंट है वो सबसे खतरनाक कंपोनेंट है एयर पोल्यूटेंट्स का। अंडरस्टैंड? हमारी हवा जो प्रदूषित हुई है उसमें सबसे खतरनाक जो कारक है उसका नाम है 2.5। WHO कहता है कि 96% हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है, उसमें PM2.5 का एक्सपोजर नॉर्मल लेवल जो रिकमेंडेड लेवल है 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक करना, वो उससे ज्यादा। ओवर 66% ऑफ इंडियन सिटीज have reported annual average higher than the 35 microgram per ton. सोचिए आप। And PM2.5 pollution primarily from burning fossil fuel। अभी भी हमारे देश में फॉसिल फ्यूल समझते हैं, लकड़ी है, कोयला है, गोबर है, उपले है, कंडे है, टायर है, पराली है, ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल। और हमारे यहाँ सब जलते हैं। फसल काट ली, पराली जला दी, सर्दी आई टायर जला लिया, सर्दी आई अलाव जला लिया, लकड़ी जला ली। So what is air quality index? Understand? So air quality index, depending upon the various components, we have divided into the certain category. For example, depending upon the 8 components in the air pollutants, good quality is said when the air quality index is 0 to 50. Kitna? 0 to 50. It is said satisfactory when it is 51 to 100, moderate when 100 to 200, poor when 200 to 300, very poor 200 to, and more than 400 it is very severe, and even more than 500. आपको मालूम है इस साल अभी एक हफ्ता पहले की रिपोर्ट, 4-5 दिन के पहले, विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? अब दिल्ली नहीं है, संतोष करिए, खुश हो जाइए। कौन सी है? लाहौर। लाहौर में और पाकिस्तान के कई शहरों में 400 नहीं है एयर क्वालिटी इंडेक्स, 500 नहीं है, 1000 नहीं है, अब तो 2000 और 2000 से ऊपर पहुंच गया है। सो दे आर फेसिंग द क्रिटिकल एयर पोल्यूशन। अब हम कहते हैं कि गुड क्वालिटी है 0 to 50, उसमें भी मिनिमल इम्पैक्ट हेल्थ पे हो सकता है। हमारा टॉपिक ये है हेल्थ इम्पैक्ट, तो थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि समय कम है। तो सेटिस्फैक्ट्री में भी हमारे पास कुछ ना कुछ हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं, और जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जाता है हमारे हेल्थ हजार्ड्स बढ़ते जाते हैं। एटमॉस्फेयर हम सब जानते हैं कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर क्या होता है। एयर पोल्यूशन हम जानते हैं कि इट्स अ कंटामिनेशन ऑफ द इंडोर और आउटडोर एनवायरनमेंट, और WHO कहता है कि ये न्यू टोबैको है, यानी जितना स्मोकिंग और धूम्रपान के कारण हेल्थ हजार्ड होते हैं उतना ही इससे होता है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स जो आपस में इंटरेक्शन से बनते हैं। हमारे ये प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं और ये सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। ये मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और इनका क्या कंपोजिशन होता है, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब नेट पे दिया हुआ है, आप इनको पढ़ लीजिए। अब पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक है PM10। PM10 का क्या मतलब?
ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो है आपके हेयर फॉलिकल की। ये जो बाल है आपका, बाल का भी 1/28 अगर आप कर दें साइज का, तो वो PM 2.5 होता है, और उसका 1/5 कर दे तो PM 10 होता है। अंडरस्टैंड? तो कितना छोटा है, आंखों से दिखता है PM 10 पार्टिकल, दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है, ना 10 दिखता है, ना 2.5 दिखता है, और ना ही 1 दिखता है। तो 3 तरह के पार्टिकल होते हैं। PM 10 जो होते हैं, देखिए वो हमारे सांस की नली यानी ट्रेकिया और उसके नीचे तक पहुंचते हैं। PM 2.5 हमारे फेफड़े के अंदर हर जगह पहुंच जाते हैं। PM जो 1 होता है, लेस देन 1 होता है, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भी चला जाता है लंग से। मैंने कहा ना, लंग जो है वो प्योरीफाइड होके आता है, लेकिन ये ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन से हर ऑर्गन ऑफ बॉडी में जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन सब में होता है। सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन किस चीज से होता है? ट्रांसपोर्टेशन से। वेहिकुलर पोल्यूशन इज द मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स। और हमारा जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो भी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। कैसे? जो बीड़ी सिगरेट पीता है उसका 30% धुआं उसके फेफड़े में जाता है, और 70% धुआं इट रिमेन्स इन द एनवायरनमेंट एज ए ETS, एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक। और सेकेंड हैंड स्मोकिंग यानी पैसिव स्मोकिंग भी नुकसान करती है। देखिए, पापा पी रहे हैं और मम्मी और बच्चे नुकसान उठा रहे हैं। एंड पैसिव स्मोकिंग इज इक्वली हजार्डस टू एक्टिव स्मोकिंग। गांव में एयर पोल्यूशन कैसे होता है? देखिए, लकड़ी के चूल्हे से खाना बन रहा है, या कंकड़ पत्थर तोड़ रही है महिला, तो इस टाइप का रूरल एयर। अर्बन पोल्यूशन यूजली वेहिकुलर पोल्यूशन या इंडस्ट्री का पोल्यूशन होता है। हमारे यहाँ इंडोर एयर पोल्यूशन भी ज्यादा है। आउटडोर एयर पोल्यूशन से अगर हमारी टोटल बीमारियों का 3% कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इंडोर एयर पोल्यूशन से 6% है। तो हाउस होल्ड जो फॉरगॉटन 3 बिलियन दुनिया में बात की जाती है, वो इंडोर एयर पोल्यूशन की बात की जाती है। तो ये इनविजिबल किलर है, जो दिखता नहीं है लेकिन बहुत खराब। नॉर्मल जो हमारा देश होते हैं उसमें हम 5 सिगरेट के बराबर धुआं एयर पोल्यूशन से पीते हैं। और अगर मौसम जब खराब हो जाता है, जैसे अभी 10-15 दिन बाद होने वाला है, तो ये 5 सिगरेट का धुआं कितने सिगरेट के धुएं में बदल जाता है? 25 सिगरेट के बदल जाता है। सो इट्स ए इनविजिबल कलर। हमारे देश में आप सोचिए कि हर तीसरी चौथी प्रमुख बीमारियां वो एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही हैं। चाहे वो लंग कैंसर हो, स्ट्रोक यानी ब्रेन में फालिज मार जाना, पैरालिसिस, हार्ट अटैक हो, या दूसरी लंग की बीमारियां हो, हर चौथी या तीसरी बीमारी जो है इट इज एट्रीब्यूटेड टू एयर पोल्यूशन। हु इज एट रिस्क? एवरीबॉडी इज एट रिस्क, नोबडी इज लेफ्ट। तो कुछ शॉर्ट इफेक्ट होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म हेल्थ पे इफेक्ट होते हैं, जैसे हेडेक है, नोजिया है, कॉफ, ब्रेथलेसनेस, ड्राई स्किन, एक्ने, एलर्जिक रिएक्शन, हेयर फॉल, पुअर टेक्सचर हेयर, नोज एंड थ्रोट इरिटेशन। ये सब शॉर्ट टर्म है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो आप देखिए, इस बॉडी का, इस ह्यूमन बॉडी का कोई अंग अछूता है? इज देयर एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज लेफ्ट विदाउट द हेल्थ हजार्ड ऑफ एयर पोल्यूशन? कोई नहीं है। इस फिगर से पता चलता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एवरी पार्ट, एवरी ऑर्गन इज एक्सपोज टू एयर हेल्थ हजार्ड ऑफ एयर पोल्यूशन। हम सबसे पहले बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग की। तो आप देखिए कि कफ, व्हीजिंग, शॉर्टनेस, अस्थमा अटैक, COPD, लंग कैंसर, निमोनिया, TB सब कुछ एयर पोल्यूशन की वजह से ज्यादा होता है। अगर हम हार्ट की बात करें तो BP, हार्ट अटैक एंड अरिथमिया, स्ट्रोक सब कुछ इसकी वजह से। अगर हम ब्रेन की बात करें तो इंसोम्निया, कॉग्निटिव फंक्शन डिक्रीज, ऑटिज्म, न्यूरो इन्फ्लेमेशन, डिप्रेशन, डिक्रीज कॉग्निटिव फंक्शन, बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी सब कुछ ब्रेन में होता है। अगर हम लिवर की बात करें तो बिना दारू पिए एयर पोल्यूशन से हमें इतना हेल्थ हजार्ड होता है जितना एक दारू पीने। मतलब आप लोग कहते हैं कई बार कि डॉक्टर साहब हमें लिवर की बीमारी कैसे हो गई? हमने तो कभी दारू सूंघी भी नहीं, चखी भी नहीं, पीना तो दूर की बात है। सो दिस एयर पोल्यूशन इज कल्प्रिट फॉर दी लिवर डिजीजेस। आंख में देखिए, अभी बदलते मौसम में कितने लोगों की आंखों में खुजली, मेरे खुद हो जाती है। मैं आई ड्रॉप डालता हूँ हर चेंज ऑफ सीजन में। रेडनेस हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन, वाटरिंग आई, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। स्किन, हेयर, अभी देखिए आपके दादाजी दिख जाएंगे, उनके पूरे के पूरे बाल होंगे। और अभी हमारे जूनियर डॉक्टर 25-26 साल का आता है, उसके तो कभी कभी 1/3 गिर चुके होते हैं, कभी 10%, कभी 20%। तो ऐसा क्यों हो गया 20-30 साल में? बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन।
So hair fall, hair loss is also problem due to air pollution. डायबिटीज, लोग कहते हैं डायबिटीज का क्या रिस्क है? ये जो 1 माइक्रोन साइज या उससे छोटे पार्टिकल हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन में जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन से ये पैंक्रियाज में जाते हैं। पैंक्रियाज में क्या बनता है दोस्तों? कौन बताएगा? ऊपर वाले भी तो बता दो भाई, व्हाट्सएप देखते रहोगे, कुछ और भी करोगे। मैडम हमें पता है तुम व्हाट्सएप देख रही हो, दिख गया हमें, आप ही से कह रहे हैं, लास्ट खुले हुए बाल, यस। बताइए ये पैंक्रियाज बॉडी में क्या पैदा करता है? इज देयर एनी आंसर? चलिए नीचे से बताइए। यस, इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? So particle of air pollution less than 1 micron in size, they are hitting the pancreas, damaging the beta cells, and that's why they are precipitating the diabetes. इसीलिए डायबिटीज की कैपिटल हम बन चुके हैं। हमारे देश में 10 करोड़ लोग डायबिटीज के हैं। कहां से आ गए? यस। कुछ तो कहते हैं साहब हम तो दाल मोटी खाते रहे, हमने मिठाई चखी नहीं, हमको डायबिटीज कैसे होगी? तो भाई डायबिटीज मिठाई खाने से नहीं होगी, बीटा सेल्स खराब होगी, पैंक्रियास इंसुलिन कम बनेगा तो आपको डायबिटीज हो जाए। अब इंट्रा यूट्राइन एक बच्चा है जो अभी इस दुनिया में आया नहीं है, उसकी क्या गलती है बेचारे की? न सिगरेट पी, न धुआं पिया, न मोटरसाइकिल चलाई, न कार चलाई, न इंडस्ट्री में काम किया, न फैक्ट्री में काम किया, उसकी क्या गलती है? इंट्रा यूट्राइन लाइफ, एयर पोल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट द इंट्रा यूट्राइन लाइफ। आई डोंट नो, कल संडे था, कल का हिंदुस्तान टाइम्स किसी ने पढ़ा है? There is an article, very good article on air pollution. मेरा भी कोट है उसमें, आप पढ़ के देखिए। कल के हिंदुस्तान पेज नंबर 10, आपको गूगल कर लेते हो, हिंदुस्तान टाइम्स पेज नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑन एयर हेल्थ हजार्ड ऑफ एयर पोल्यूशन, स्पेशली रिलेटेड विद द women and air pollution. So air pollution and its impact on reproductive and neonatal health. Low fertility rate. पहले बच्चा इतने पैदा होते थे कि रात को गिनने पड़ते थे। सब आ गए घर के अंदर? नहीं आ गए, कुछ ऐसा तो नहीं, 2-4 बाहर। अभी क्या है? अभी 40 साल का हो गया, मैंने पूछा तुम्हारे बच्चे? नहीं सर अभी प्लान नहीं किया है। अबे यार प्लान तब करोगे जब इस लायक नहीं रहोगे। सो लो फर्टिलिटी रेट, कुछ देश तो है वो बाकायदा एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, बच्चा पैदा कर लो हमसे इतने पैसे ले जाओ। चैलेंज है, इतनी कम हो रहे हैं। एक तरफ हम पॉपुलेशन क्राइसिस, हम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, क्राइसिस हो रही है, बात ठीक है, लेकिन कुछ कंट्री में तो पॉपुलेशन इतनी कम हो रही है कि दे आर प्रमोटिंग दी प्रोडक्शन। स्पर्म की एक एबनॉर्मलिटी होती है, वो हो जाती है। अबॉर्शन बहुत हो रहे हैं। लो बर्थ वेट में पहले 2.5, 3 किलो के बच्चे पैदा होते थे, अभी 1.5 किलो को क्रॉस करना है तो हमारी क्वीन मैरी हॉस्पिटल की डॉक्टर कहते हैं हाँ गुड बॉय बेबी, वेट इज मोर देन 1.5 kg, नो प्रॉब्लम। अब ये कल परसों रिपोर्ट छपी मीडिया में कि 600 ग्राम के बच्चे को बचा लिया, और ये न्यूज बन गई कि 600 ग्राम का बच्चा। आप छोड़िए 600 ग्राम के बच्चे पैदा हो रहे हैं। सो लो बर्थ वेट, इंट्रा-यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, न्यूनेटल मॉर्टलिटी, मर जा रहे हैं घर के अंदर बच्चे, पोस्ट न्यूनेटल मॉर्टलिटी। एंड जब बच्चा पैदा होता है उसी समय उसे एलर्जिक डिसऑर्डर, इंक्रीज निमोनिया, इंक्रीज सो मेनी अदर कंडीशंस, ये भी प्रॉब्लम हो रही, तो कोई नहीं बच रहा है। अब ये हेल्थ पिरामिड है, आप देखिए सबसे नीचे क्या होता है, पहले लंग फंक्शन खराब होते हैं, फिर दूसरे ऑर्गन फंक्शन खराब होते हैं, अस्थमा होता है, फिर डॉक्टर्स विजिट बढ़ती जाती हैं, हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ते जाते हैं, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। दिस इज दी हेल्थ पिरामिड ऑफ हेल्थ हजार्ड्स ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सेम चैलेंजेस हैं, ऑलमोस्ट 7 चैलेंजेस हमने बनाए हैं उत्तर प्रदेश के लिए स्पेसिफिक, सब पूरी देश में भी ऐसे ही हैं। रोड ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन, स्मोकिंग, बायोमास फ्यूल, फैक्ट्रीज, ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू डस्ट, स्मोक एंड फ्यूम्स एंड पराली फायर्स। ये देखिए सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये हमारे चैलेंजेस हैं। क्या प्रिवेंशन की कोई स्ट्रेटेजी चल रही है? बस लास्ट 2 मिनट में खत्म करेंगे हम हमारी बात, कि अगर हम प्रिवेंशन कर सकते हैं तो तुम्हारा क्या रोल है, हमारा क्या रोल है, सबका क्या रोल है, क्या भारत सरकार कर रही है, क्या WHO कर रहा है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्या कोई सरकारी सिस्टम है, या सरकारी सिस्टम पे पूरी दुनिया में एफॉरेस्टेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हमारा एक बॉडी है, आपने सुना होगा अभी कुंभ लगने वाला है प्रयागराज में, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वार्निंग दे दी। वार्निंग इतनी तगड़ी थी कि जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, उनको हटा दिया गया। ही हैज बीन सैक्ड एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी।
उनके 50 दिन रह गए थे रिटायरमेंट के, एंड ही हैज बीन सैक्ड. So its National Green Tribunal is working against all type of pollution and it's a constitutional body. ये किसी को भी फाइन कर सकती है, सजा कर सकती है, जुर्माना कर सकती है और नोटिस दे सकती है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. दूसरा काम पूरी दुनिया में एफॉरेस्टेशन का चल रहा है, हम लोग भी चला रहे हैं. क्लीन एयर एक्ट बना हुआ है, ओजोन लेयर के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इंडिया में एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, हर स्टेट में स्टेट कंट्रोल बोर्ड है, और प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम शुरू की है उज्ज्वला योजना. कितने लोगों ने नाम सुना है उज्ज्वला योजना? कब शुरू हुई थी? 1 मई 2016. 8 साल हो गए. इसमें क्या करते हैं हम? गरीब परिवारों को जो लकड़ी पे चूल्हे पे खाना बना रही हैं लेडीज, उनको हम देते हैं क्या? गैस सिलेंडर फ्री, सो दैट वी कैन स्विच ओवर. तो अभी तक 10 करोड़ फैमिलीज, पुअर फैमिलीज को ये फ्री सिलेंडर दिए जा चुके हैं. तो उम्मीद है कि जो इंडोर एयर पोल्यूशन है वो कम होगा. एक गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया है, नेशनल एनवायरमेंट हेल्थ प्रोफाइल स्टडी. ये 20 शहरों में की जा रही है एंड उत्तर प्रदेश में एक शहर है कानपुर. आई एम द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर फॉर दिस रिसर्च प्रोजेक्ट. एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चला है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत अभी उसमें और ऑगमेंट किया गया है, बहुत सारी काम किए गए हैं. एक लाइफ शुरू किया गया है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट. ये भी प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है 2018 में. ये कि हमारा जो लाइफ स्टाइल होना चाहिए वो एनवायरमेंट का प्रो एनवायरमेंट होना चाहिए, और ये इसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं लाइफ के. एक छोटे मोटे काम हम लोगों ने शुरू किए हैं. इफ यू कम इन माई डिपार्टमेंट, आई थिंक Upasana ji, have you seen my all green zones in the department? So in last 10 years, I have developed 7 green zones in my department. So आपका तो वैसे ही green campus है. So you continue to plant. Plantation drive बीच में करते हैं. हमने रोटरी क्लब की मदद ली है, उसकी एक मदद से रोटरी हल्बर पार्क बनाया है, नवग्रह वाटिका बनाई है. एक हम टोबैको स्मोकिंग सेशन क्लिनिक भी चलाते हैं. तो जिन लोग जो आज शर्म से आंसर नहीं दे पाएंगे कि मैं सिगरेट पीता हूं या पान मसाला कुछ खाता हूं, अगर ऐसे लोग छोड़ना चाहें या उनके घर में कोई छोड़ना चाहे, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन माय डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन एट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ. ये एक एडिटोरियल है हमारा, बहुत पॉपुलर है. ये भी लेट अस सेव आवर प्लेनेट, पूरा फोकस्ड है इसके लिए. पब्लिक अवेयरनेस के बहुत सारे हमने आर्टिकल लिखे हैं एयर पोल्यूशन की अवेयरनेस के लिए. आप सब लोग भी लिखें. कुछ हमारे पर्सनल सजेशन है जिसको हमने मूवमेंट में चला रखे हैं कि प्लांट सैपलिंग दीजिए. अब तो एमटी में भी प्लांट ही मिलता है. मेक प्लांट सेरेमनी एज ए पार्ट ऑफ एवरी सेरेमनी. चाहे आपका बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, सब कुछ हो. मैं तो कहता हूँ कि भाई आज की शादी की 25वीं सालगिरह है, आप जोर तोड़ से पार्टी दीजिए. डॉक्टर सूर्यकांत को भी बुलाइए, मैडम कमर रहमान को बुलाइए, उपासना जी को बुलाइए, हम भी आएंगे. लेकिन उसके पहले दोनों पति पत्नी 25-25 पौधे लगा दीजिए. बच्चे का 10वां बर्थडे है तो 10वां केक जो आपने बनाया वो बच्चे से बाद में कटवाइए, पहले उससे 10 पौधे लगवा दीजिए, उसी से लगवाइए. उसे प्लांटेशन की आदत पड़नी चाहिए. इंक्रीज यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. में एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो हमारे यहाँ केडी सिंह बाबू स्टेडियम पास में मेट्रो स्टेशन है, मैं तो मेट्रो से ही जाता हूँ, मेट्रो से ही. नो स्मोकिंग एंड बिकम एडवोकेट फॉर नो स्मोकिंग. आज हम अभी आपको एडवोकेट बनाएंगे इसके एयर पोल्यूशन के, अभी आपको प्लेस करवाएंगे. टेक द एडवांटेज ऑफ उज्ज्वला योजना जिन्होंने नहीं ली है. Increase of walking and cycling, and at end of every day you should question yourself, am I responsible for air pollution? हर किसी को रोज शाम को पूछना चाहिए कि मेरे कारण कोई एयर पोल्यूशन या और कोई पोल्यूशन तो नहीं हुआ. अगर हुआ तो अगले दिन वो नहीं होना चाहिए. ये 2 धू से बचिए और एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा. धुआं फ्रॉम इंडस्ट्री, वेस्ट बर्निंग, कार, क्रैकर्स एंड अदर सोर्सेज, धूल, डस्ट फ्रॉम रोड साइड कंस्ट्रक्शन, ओपन ग्राउंड्स एंड uncovered areas. एक हम लोगों की संस्था है डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर. सो वी आर आल्सो कंसर्न्ड विद द क्लीन एयर एंड एयर पोल्यूशन. सो दिस इज अवर ऑर्गेनाइजेशन. ऑल प्रोफेशनल बॉडीज इंक्लूडिंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, माई एसोसिएशन, इंडियन चेस्ट सोसाइटी, सर्जन सोसाइटी, ऑप्थेल्मिक सोसाइटी, एवरी डॉक्टर्स, दे हैव मेड इस ऑर्गेनाइजेशन. डॉक्टर नहीं पहल करेंगे तो कौन पहल करेगा? सो इन 2018 वी मेड दिस ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारे काम कर रहे हैं हम. एक हमारी कैंपेन है वायु मित्र. जानना चाहेंगे क्या है?
आज से आप पर्यावरण के लिए काम करेंगे, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मिलेंगे। आप कैसे काम कर सकते हैं? जहां कहीं भी आपको लगे कि ये वायु प्रदूषण की घटना दुर्घटना हो रही है, उस पे प्रति लोगों को अवेयर करिए और कम से कम अपने को दूर रहे। मतलब आप धूम्रपान मत करिए, आप सिगरेट मत पीजिए, आप व्हीकल कम से कम इस्तेमाल करिए। कितने लोग हैं जो अभी भी साइकिल चला लेते हैं? अच्छा, कितने लोग साइकिल चलाना जानते हैं? कितने लोग साइकिल चलाना जानते हैं? ऊपर क्यों भाई, लड़कियों को साइकिल चलाने नहीं आती तो? ओके, अच्छा आओ, थैंक यू। कितने लोग साइकिल चलाते हैं? ये तो चलाना आती है, चलाते हैं। तो कितने, महीने में एक बार? तो आप किसी भी इंडिया के बड़े इंस्टीट्यूट में जाइए। अभी मैं पिछली बार गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, मुझे एक कार नहीं दिखी कैंपस में, हर तीसरे मोड़ पे मुझे साइकिल स्टैंड दिखी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर इज द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, which is in the top 50 institutions of the world. That is the only institution. एक बार प्रणब मुखर्जी ने कहा था, हमें दुख होता है कि फर्स्ट 200 में भी हमारा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं आता, लेकिन पिछले 10 साल में स्थिति बदल गई है। नाउ वी आर इन द टॉप 50 इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर इज वन ऑफ देम। और वहां पे सबसे ज्यादा साइकिल हमने देखी। IIT कानपुर चले जाइए, सबसे ज्यादा आपको साइकिल दिखेंगी। एमिटी में कितनी साइकिलें, गिनती करके बताइएगा अगली बार। तो वायु मित्र बन जाइए ये सब करके। मित्र का मतलब मेक इट नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, मतलब वायु के लिए काम करेंगे। इनिशिएट आइडियाज विद पीपल अराउंड, जो हमने बातें बताई दूसरों को बताएंगे। टेल अदर, ट्रेन अदर, रिमूव मिथ्स एंड लेथार्जी, एक्ट थ्रू आउट योर लाइफ। ये सब वायु मित्र के काम है, ये सब करेंगे। हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए पूरा। भगवान ने इतना बड़ा दिया है तो आधा क्यों करते हैं? फोटोग्राफर आपको तो मालूम ही है, जितना हाथ खड़ा है सबके फोटो ले ले, नीचे वालों के ऊपर वालों के, और इसको आर्काइव कर दीजिए एमटी यूनिवर्सिटी में। इन्होंने सबने कहा हम वायु मित्र बनेंगे। अगर ये स्मोकिंग करते जाएं या और कुछ गड़बड़ करते जाएं और प्लांटेशन ना करें तो इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होना चाहिए। हो गई फोटो, हो गई सबकी? आपने हमें ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Your informative words have been invaluable to us. To kick off this remarkable event, it is my honor and privilege to invite Dr. Upasana Yadav ma'am, a distinguished assistant professor at Amity School of Applied Sciences, coordinator of the Eco Club, and the co-organizing secretary of today's event, to kindly come up to the stage and deliver the vote of thanks. Please, ma'am. Huge round of applause, everyone, please. So good afternoon to one and all present here. It's my distinct honor and privilege to extend the heartfelt vote of thanks as we inaugurate the national workshop on spreading awareness on emerging challenges of air pollution and climate change on human health in the urban ecosystem. This significant event has been organized by the Environmental Pollution Laboratory, Department of Environmental Studies, University of Delhi, in collaboration with Amity School of Applied Sciences, Amity University, Uttar Pradesh, Lucknow campus, and generously sponsored by the Department of Science and Technology, Government of India. First and foremost, I would like to express my profound appreciation to Environmental Pollution Laboratory, Department of Environmental Studies, and University of Delhi for their invaluable collaboration and support. Our sincere thanks to go to the Department of Science and Technology for their generous sponsorship and making this event successful. A special thank you to our esteemed chief guest, Dr. Surikant Tripathi, for gracing with his presence and sharing his invaluable insights. We are immensely grateful to Professor Chirshi Ghosh, ma'am, our convener and organizing secretary, whose unwavering dedications and leadership have been pivotal in successful planning and execution of this workshop. I also extend my heartfelt gratitude to our keynote address and guest, Dr. G.C. Kisku sir, who is a scientist from IITR.
for his enlightening contribution and sharing expertise with us. And our deepest thank to Professor Dr. Kamal Rahman ma'am, Dean Research, Wing Commander Dr. Anil Kumar Tiwari sir, and Deputy Pro Vice Pro Vice Chancellor sir Anil Vasist sir, and our beloved Professor Dr. Ashita Kulshreshtha ma'am, who is our head of the institution, for her unwavering support and significant contribution. Your guidance and encouragement have been vital in making this workshop a success. I extend my sincere thanks to Ms. Ankita Shelley and Ms. Anita Dubey, PhD scholars under Professor Cheshi Ghosh ma'am, who have come all the way from Delhi and have played an essential part in functioning of this workshop. Your contributions are deeply appreciated. I would also like to thank our all participants joining the workshop. Your presence and engagement are crucial for the success of this workshop, and we deeply appreciate your commitment to the important cause. Before we commence, I would like to extend a heartfelt thank to all the distinguished delegates for their presence, and also the faculty members for their support and dedication, as well as efforts of the Amity School of Applied Sciences, AUP Lucknow campus, for their role in organizing this workshop. A special mention go to our student coordinators, volunteers, organizers, photography team, food team, IT team of Amity University and Noida campus, as well as Lucknow campus, and everyone else who contributed to this workshop. Your hard work and dedications and cooperations are deeply appreciated and have been instrumental in working this event a reality. I am confident that this workshop will both fruitful and educational, providing you with valuable insights and knowledge on the pressing issues of air pollution and climate change and their impact on the human health in urban ecosystem. Thank you all for being here. I look forward for your productive and insightful workshop. So we are breaking we are going for the tea break, and again we will join for the first technical session in 10 to 15 minutes. Okay, thank you. साथ में एग्री कर रहे हैं आने के So लिए welcome back everyone. Ritika, you see a lot of smiling faces. Yeah, sure. Well, yes, I do see that, Romessa. Looks like refreshments were ahead. Let's keep the energy going as we dive back into the program. Moving forward, it is with great honor that I introduce to you Dr. G.P. Kisku, a distinguished scholar and a luminary in the field of environmental sciences. To formally welcome Dr. Kisku and to honor and appreciate his contributions, I respectfully invite Dr. Rashmi Ghosh ma'am to felicitate Professor Kisku with a planter and a memento as tokens of gratitude. Let's give a huge round of applause, everyone. Please. Your clap signify the honor you're giving, so please don't be hesitant. Dr. Kisku's academic journey began with an BSc Honors and MSc from West Bengal, followed by an MTech in Environmental Science and Engineering from IIT Bombay, and a PG Diploma and PhD from Lucknow University. He has served as the former Chief Scientist, Professor of ACSIR, and Head of the Environmental Monitoring Division, hosting 32 years of dedicated research and development in the realm of environmental pollution. His expertise spans air and water pollution as well as soil contamination, making him a revered authority in these areas. Under his mentorship,
5 research scholars have obtained their PhD and over 22 MSc, MPhil and MTech theses have been completed from various universities. His vast knowledge in environmental monitoring, environmental audit and environmental impact assessment or EIA unparalleled, having rendered his services to more than 20 industries across Odisha, Maharashtra, Gujarat, West Bengal and Uttar Pradesh. His contributions to academia include publication of more than 45 research papers, 12 book chapters, and 10 articles, including works in Hindi. He has attended about 40 national and international conferences and delivered over 30 invited lectures at various esteemed forums. Notably, he also organized the first ever Skill India Development Program and numerous workshops for central and state pollution control boards. He has accomplished over 250 industry-sponsored projects, producing an equal number of technical reports. Since 1997, Dr. Cisco has been conducting an air pollution survey of Lucknow city twice a year during pre-monsoon and post-monsoon. And also at Diwali, with findings published by almost all print media in Lucknow to raise public awareness and recommend preventive measures to minimize air pollution levels. As a member and director's nominee for more than 12 PhD students, Dr. Kisco's guidance has been invaluable. Sorry, sir, for making you wait so long, but your contributions are endless. Please, sir, we invite you onto the stage. लैपटॉप में ऐसे ही करेंगे ऐसे बोलेंगे Very good afternoon to all. Respected Professor, Professor Dr. Patel Jadhav and Acharya, Professor Research Scholar and students. I am grateful to my university for giving the opportunity to deliver lecture. I lectured a topic which is common to all that everybody can take some message from the lecture. So I began the climate change. So I started this lecture in basic understanding of air pollution. First one. So I choose the air pollution. Air pollution may be defined as the contamination of air with pollutant in the atmosphere, which is harmful to the human being as well as other living organisms, and it can damage the property and it can damage the climate change. On the other hand, climate change is the long-term study, more than 30 years of study of weather, change of weather pattern with respect to relative humidity, temperature, rainfall. So this one is in the climate change. Next. And this is the basic understanding. If you understand the air pollution, you have to go to this one basic. Air pollution, size and nature of pollution, quality, then you have to measure how much. Qualitative determination. Without determination, suppose if a doctor, just like a doctor, he or she has take the temperature, so that way you have to quantify or qualitatively determine the pollutant. And finally, you have to take some preventive measures. Next slide. Wordless स्क्रीन का कोई माइक है वो इधर मूव करके And this is the air pollution standard point. And I am getting it quite. वो लेजर वाला है नहीं So my slide for your time. Next. And this is वो the इधर है ना उधर मूव करके बोलेंगे see that carbon monoxide and carbon dioxide. Then carbon dioxide today carbon dioxide 420 ppm in the that is the greenhouse gas.
And this is the atmospheric structure of our atmosphere, then stratosphere, then lithosphere, and then ionosphere and hydrosphere. So, okay. So this is the relation between the temperature graph and pressure graph. This you can see that in the lower agitator because of atmospheric mode in this lower region and pollution is also in the lower region. Next, you can go through this one. You have to understand the terminology: pollution, pollutant, contaminant, receptor, smog, and specific. Contaminant according to the composition. Current to the composition, that is contaminants, while receptor means that the person targeted or animal, it could be animal, it could be the property, so receptor. These are the interrelation with that. Then smoke you in morning half, nowadays in the winter season, if you see this one, that there is after 6 o'clock, 6:30, some hazy type is there. Because this hazy type is nothing but the pollutant. This in the midnight or after midnight, because of the moisture, the density of air particle it will increase, and so in the morning it will come down into the breathing zone. And since it is if it is water vapor, it could have disappeared in the very fast. But since it is the smoke, that is smoke plus particle, so it will be in the hazy. So that's why you will not see the sunrises. And specific chemical net. And suppose any study you must have some purpose. So check that just like if you see the study the air pollution of Lucknow city, then you have to measure at different points, and then you have to compare the data with the standards so that you can know that how much air is contaminated, and then you have to mitigate measures to impact on the environment compounds. And it is pollution is not only impact the human health, it also environment components. Next. And source could be two types. Three types. One is mobile sources, that is from vehicle pollution or truck pollution, that is airplanes also. Mobile stationary, if you go to the industry, so chimney, whatever the pollution coming out from the chimney, that is from station source. And area source could be mining areas and mining activity. Very next. And these are the pollution sources, could be different type of pollution sources. As you know, vehicular emission is there, burning fossil fuel. But some total, see, whenever we talk of air pollution, we only talk of about industrial pollution or we talk of about vehicular pollution. But there are some small roadside food cooking, roadside tire burning, roadside in winter season, garbage burning. So cumulative effect is there. And this cumulative effect is more than that of the bigger source also. Next. And type and sources of air pollution, it could be the primary pollutants. Primary pollutants are those which are directly coming on from the industry, like SO2, CO, nitric oxide, carbon dioxide, and nitrogen. And I think, for example, I am giving you that industry does not emit NOx. So industry only produce the NOx, nitric oxide, and immediately it is converted to NO2, then NO3, then nitrous acid, then nitric acid. And in this cycle, it also goes on. Next. As per the National Ambient Air Quality Standard 2009, we are supposed to measure these 12 parameters: particulate matter, cut-off side 10 and 25. These are inhaled air, and sulfur dioxide, and nitrogen oxide, ozone, carbon monoxide, ammonia, benzene, benzoypyrene, lead, arsenic, and nickel. This red color I have given because this can create the leukemia, blood cancer. It's just like benzene and benzoypyrene, and arsenic also can create cancer. And carbon monoxide, you know very well, this one is also lethal, and particulate 2.5 lethal. And many of the things are we know, understand the air pollution, but हम आप लोग को पूछेंगे
दिल्ली में कौन सा ह्यू एंड क्राई हो रहा है, किस पोल्यूटेंट का वजह से? आप लोग का अनुसार है जानकारी में? कौन से आउट ऑफ 12 पैरामीटर्स दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाते हैं किंबा जो ह्यू एंड क्राई हो रहा है, व्हिच पैरामीटर? सी पॉइंट, यस, नो? और डॉक्टर साहब ने पहले बताया था 2.5. 2.5 means 2.5 micron and below, less than 1. So smaller the particles, greater the surface area and greater the reaction. Smaller particle go into the lungs, it will affect the our lungs also, and ultimately it will go to the lungs and diffuse into the blood, and it can create the systematic poisoning. Systematic poisoning क्या होता है? Systematic poisoning जब lungs से blood से diffuse होके और कोई organ को affect करेंगे, ब्रेन को affect करेगा, किडनी को affect करेंगे, तब हम लोग उसको systematic poisoning बोलेंगे. And moreover, these particular metals are sometimes coated with some chemicals. जैसे डीजल जो निकलता है डीजल ये व्हीकल से, तो these are very cancerous and very small fine particle. Next, USEPA का मुताबिक में criteria pollutants are, these are the criteria pollutants, and right hand these are toxic air pollutants: polyurethanes, hydrocarbon, polychlorinated biphenyl, dioxin, asbestos, toluene, metal such as cadmium, metal में cadmium, metal, mercury, and next. Any next? So I will now tell you the particular metal PM10 and PM2.5 micron size. So you just read that in the definition. 2.5 particular is then cutoff side 2.5, which are very fine particles, which we inhale that one. And this red color particular matter is very small, less than 10 micron, remain suspended in the air for a period of time, easily inhale into the deep lung, increase death, mortality, and diseases, morbidity. Currently, PM2.5 identifying death rates and income. Just like आप लोग को मालूम नहीं पड़ रहा है, this इंडोर एयर वातावरण में भी काफी 2.5 and less than 2.5 माइक्रोन है, तो ये कितना कंसंट्रेशन है ये मेजर करने के बाद ही पता चलेगा. एंड इफ इट इज मोर देन सब्सटेंशियल अमाउंट, तो इंडोर इस वर्कशॉप में भी यू मे बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस वन PM2.5 और दिस पर्टिकुलरली. नेक्स्ट, ये एक ह्यूमन हेयर को साथ PM10 एंड PM2.5 को कंपेयर किया. नेक्स्ट, so based on the size, you can gradient PM10, PM2.5, PM2.5 ultrafine particles and nanoparticles. This is standard chart so that you can जिसे आप ये होंगे कोविड का वायरस कितना माइक्रोन के थे, कितना नैनोमीटर का थे, you can measure that bacteria, mold and tobacco smoke, oil and virus. जिसे कोविड का वायरस का साइज थे 36 micrometer. Next, these are the spiral जब आप कोई पोल्यूटेंट को होंगे, you have to measure this one. So this one PM10, this side left hand is PM10, this spiral is last sampler, and this one is right hand PM2.5 sampler. And nowadays the more sophisticated instrument are coming. Next, फिल्टर पेपर आप उसमें लगाएंगे. RSPM में आपको सिंपल वातावरण ये MIT कैंपस में आपको सफेद लगाएंगे फिल्टर पेपर, और जब आपको मैच्योर फिल्टर पेपर निकलेंगे इतना सारा ब्लैक और डस्ट डिपोजिशन होंगे. PM2.5 भी ऐसा डिस्पोजिट, एंड अल्टीमेटली दिस विल इनहेल एंड इट डिपोजिटेड इन द लंग्स एंड इट विल अफेक्ट द एल्वियोलर. देन नेक्स्ट, ओजोन सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट हाइड्रोकार्बन. नेक्स्ट, so ओजोन आप लोग को मालूम है, ओजोन इज वेरी two types of ozone are there. Stratosphere में that ozone is good, but in the troposphere it is bad because it will impact our health as well as external system also. Next, so how ozone is formed in the ozone? Troposphere is bad ozone because it can damage the living tissue and the. This one is formation. Ozone, a powerful oxidant, is readily reacting with other chemical compound to make many possibly toxic oxide. NOx, VOC are called ozone precursor. तो जैसे मैं one thing है, जब हम लोग एयर पोल्यूशन का बात करेंगे
हम लोग generally everybody knows that in the there is a chemical chain reaction of nuclear energy किंबा एटॉमिक बम जब बनाया जाता है रेडियोएक्टिव कंपाउंड। लेकिन एक चीज है, एयर पोल्यूशन में भी सिमिलर वे में कोई भी केमिकल कमिंग आउट फ्रॉम द इंडस्ट्री, इट हैज सम चेन ऑफ रिएक्शन इन मेनी वेज। नेक्स्ट, वो जो नेक्स्ट ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड के बारे में है। सल्फर डाइऑक्साइड इज आल्सो it can create winter time smoke, so sulfur dioxide is considered precursor of sulfates also. Very next, a bonding of sulfur dioxide का bonding है। Very next, ये इसके बारे में आप लोग जान के लिए जब polyatomic hydrocarbons, only this one the student may not know, this is polyatomic environmental pollutant and from both natural and anthropic sources. Natural sources include forest fire, volcanic eruption, degradation and biological materials and lead to formation in various sediment and fossil fuel. So atomic, this is the once it is made from the benzene rings also, and the later on they get converted. Next slide, you read this in the statement. So according to US EPA, 16 pH in the selected as a priority pollutant to monitor in water and wastewater. Next, see how from single benzene ring formation of polyatomic happens in the environment. Very next, this is very good slide how volatile organic compounds can create NO2 and peroxide nitrate and acetyl. Then nitrogen monoxide and nitrogen dioxide, how they can create the ozone. Pass second, third. Third row you see this one nitrogen dioxide, sunlight after getting the sunlight, NO2 is divided into NO plus atomic oxygen. This atomic oxygen again react with O2 and this will form the ozone and sunlight again. Next, pre-monsoon and air pollution. Since CSR IIT are carried out air pollution study for the public in Lucknow city twice in a year. One is summer season and one is winter season. So CSR IIT selected 9 locations. 4 locations in residential area and 4 locations in commercial area. Commercial area Chowk, Aminabad, and Amausi industry belt is selected for industrial pollution, and these are residential area. So every time we are so we collected the data, we analyze the data, and we give it to the print media and all the print media of Lucknow, so that people can come to know that what is the criteria with respect to air pollution status. Very next. So during pre-monsoon, upper one is the PM10, this one, and right hand that green color is standard. So you can see in all the sampling location, always PM210 is higher than the standard. Similarly, PM2.5 which also higher than the standard. That is in pre-monsoon, that is depending the April-May season. Next, air quality during Diwali of Lucknow city this year. This year, you know, since they can see Aminabad in the how much 552 microgram, 10 PM10, and Aminabad 379 2.5. As you know, the PM10 permissibly is how much 100 microgram per meter cube, and here it is 552. It means 6 times of the standard. Just Dr. Saab ने बताया आप लोग को लाहौर में it is 1900 something 2000 microgram per meter cube. Here it is 6 times of the taken. So once it is in the air, it will remain for a longer period of the PM 2.5, Chowk, Aminabad, because everywhere it is 5-6 times. PM 2.5 concentration is only allowable. ये permissible allowing 60 microgram per meter cube. Here 61, 262, 379 like very good. Next. Then post-monsoon air quality of Lucknow city. Residential air 2.5 this month, and all like 60 micrometers above than one. Commercial area, Chowk, Alamabad, Aminabad, if you go for that Amausi, everywhere that was like a concentration of the
air pollutant, inhalable air particle PM as a 2.5, always and every time it's higher than the national ambient air quality. And very next. So there must be environmental effects also. So how it is formed? Ozone is formed in this way: sunlight plus NOx plus volatile organic compounds like xylene, benzene, etc. So they form that ozone. Very next. So sulfur dioxide, once it is released into the air, it will form the sulfuric acid and sulfuric acid. Then nitrogen oxide also nitric acid. And this one, acid forming gases and particles have been linked a variety of impacts, including forest. It can be declined the forest, accelerated leaching of metal from rocks, soil, the decay of limestone, marble, and other building materials, and damage to the human respiratory system. Next. I knowingly I downloaded many of the things that the different models so that you can watch this one. This is similar sort of thing as it can the next. This is also in other form that the how sulfur dioxide is converted to sulfuric acid and then sulfuric acid and then next. This is the similar other format this one. Next. This is same thing in different it is presented that once it is in the release into the air, it will go up, react on the environment, and again it come back into the earth surface after wet deposition, and then it will affect your climate, environment, water, and leaching of the groundwater, leaching of the contaminants into the groundwater. So this is another one model. Next, this is another model that how this in the thing is affected, and even then the soil is affected, and then ground soil is affected. Ultimately, the cultivation or plants is affected. Next. Next. This is how photochemical smoke or peroxyacetylene nitrate is formed. Solar radiation, it breaks the NO2 and then NO nitric oxide and atomic oxygen will create, then atomic oxygen react with hydrocarbons and they will form the aldehyde and peroxyacetylene nitrate, and the atomic oxygen also create the ozone and molecular oxygen, and this is photochemical smoke like a chain. Next. This is similar thing which I told this one. This is another model by one model. So this one emission ozone cursor. And next, this is tropospheric ozone. How it is? This is another model, but theme is depend the in different way. Very next. So now the one thing is मैं आप लोग को पूछेंगे समर में पोल्यूशन का यू एंड क्राई नहीं होता है। जैसे नवंबर आ जाते हैं दिल्ली में और पेपर और इवेंट गाड़ी चालू करो, गवर्नमेंट के डिबेट होता है जो पोल्यूशन व्हाई इट इज हैपन। कभी आप लोग सोचा जो समर में कहा गया पोल्यूशन तो गाड़ी तो इतना ही थे और ये एनवायरनमेंट भी इतना ही थे और सनलाइट ज्यादा होते थे, लेकिन क्यों ऐसा होता है कभी आपने सोचा? साइंस इज हियर ओनली जे आप उसको अपना एक्सप्लेन करेंगे। See, I am telling you this one. In winter season में एक mixing height होता है। You can say summer season में winter season summer season में this much volume air can disperse, can disperse in this height. Say 3 kilometer height में about it can disperse. That's winter season में because inversion layer is formed. Inversion layer होने के वजह से टेम्परेचर ग्रेडियंट के वजह से अपर एटमॉस्फेयर में वो इन्वर्सन लेयर बनने के वजह से दिस हाइट मिक्सिंग हाइट कम इनटू द क्लोजर टू द ग्राउंड सरफेस, सो इट रिड्यूस द मिक्सिंग हाइट एंड मिक्सिंग हाइट जब रिड्यूस होंगे कंसंट्रेशन विल बी मोर विद द ट्रोपोस्फेरिक और ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन। बिकॉज ऑफ दैट वन ये क्यों होता है? क्योंकि विंटर सीजन में जो वेदर कंडीशन होता है, लो रेनफॉल, ये high moisture content, then ये low temperature ये एवॉल्व करते हैं
जो पोल्यूशन को नीचे लेके आने के लिए बैंड से कम हो जाता है, जब बैंड से कम हो जाता है पर्टिकुलर काम का, so because of this one winter season में you will get more pollution, so because of this missing है. Okay, next a subject में देखे जो environmental labs इसको देखे, suppose if you have the pollutant, so it should be dispersed in the vertically as well as the horizontally. So more the distribution of the pollutant in the vertical and horizontal way, then you will get the less concentration of the pollutant. Otherwise, you will in stable condition or in stable condition, bad condition, the concentration will be more. Next. Temperature inversion I told you like this. Next one. See this one, अगर वैली में अगर ये होंगे, सपोज ये वैली में सिटी है, इन्वर्शन एयर होंगे, वार्मर एयर अपर में होंगे, तो पोल्यूशन लेवल विल नॉट गो अप इन द 9 फील्ड. और इसी वजह से कोना ये में महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुरा एरिया में, चंद्रपुरा में वैली है और पोल्यूशन विंटर सीजन में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो डिस्पर्स नहीं हो पाता है. तो कीपिंग इन व्यू जब इंडस्ट्री बनाओगे ये में वैली में ये हाइट को मेजर करना है ताकि कीपिंग इन माइंड दिस इन्वर्शन लेयर एवरीवेयर यू कैन नॉट एस्टैब्लिश द योर प्लान इंडस्ट्री. नेक्स्ट, of impact of coal power plants and monsoon pattern distribution rainfall. You have come to know sometimes more rainfall in the Rajasthan desert, sometimes more in the rainfall in the Jammu and Kashmir, and where supposed to be the just the eastern part, Odisha, Bengal, and it is little bit less. Why it is happening? So coal power plants जब होता है, it emits the coal power is the single largest source of carbon dioxide, which is responsible global warming and temperature increasing of the atmosphere. So coal power plant will definitely come into the picture. Next, see in India more than 120 coal thermal power plants is there. And second thing मैं इस स्लाइड में आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल जो आप लोग को मालूम है, बिहार में जो है, एंड आप लोग को मालूम है साउथ वेस्ट मानसून ये आते हैं, एंट्री करते हैं वेस्ट बंगाल जोन से बिहार होके आते हैं. अगर इसमें कोल थर्मल पावर प्लांट 500 मीटर चिमनी आप लगा देंगे, एमिट्स 120 डिग्री टेम्परेचर में एटमॉस्फेयर को आप ये रिलीज करेंगे, एटमॉस्फेयर गर्म हवा को रिलीज करेंगे, नेचुरली जो क्लाउड है वो डिस्पर्स हो जाता है, और जब क्लाउड डिस्पर्स हो जाता है वो अपना ट्रैक को फॉलो नहीं कर पाता है. देन यू विल जैसे आपने हम लोग को जब मैं आपके बचपन में थे तो क्लाउड बास्ट कर गया, ये हमने कभी नहीं सुना था. नाउ अभी कभी कभी जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ में वाश आउट कर गया, एंड वर्ल्ड में मेनी ऑफ देम व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज नॉट यूनिफॉर्म. जहां एक जगह में कॉन्सेंट्रेट हुआ क्लाउड बास्ट में, and it is only because of climate change and air pollution only. Next, then air pollution, coal thermal power plants have also release this on all sort of I discuss this toxic metals and metals. Next, तो आप जब ये होंगे आप उसको विचार करेंगे. Next, so you will measure that in the chimney say coming out with the whatever the gases, carbon dioxide, unburned hydrocarbon, and dust particle, how much it is coming to the next ये मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट में पर्पस में हमने आप लोग को एक स्कॉलर सोचा 4-5 फोटो लगा दो. नेक्स्ट, हाँ ठीक है ना, लगा जल्दी भेजो मुझे. नेक्स्ट So dust can be you can study with the help of the SILAS size gradient. I have taken this study from the Lucknow University Geology Department. So SILAS instrument they have, so you can grading the dust particles. Next, climate change. Next, so overall impact, whatever the pollution is there, obviously either it will affect air, water, soil, noise,
everything, this is environment and ecology also affected with this pollution. Next. So climate and weather is daily weather temperature and what like this one, and climate is long based term basis or usually at least 30 years. Next. And this one carbon dioxide, how much sulfur dioxide not from coming out from plant. Next. This one you just see the contribution of carbon dioxide emission from China, United States, India, how much this one. Very next. This is temperature increasing, how the temperature is increasing from the pre with respect to pre-industrial revolution. Next. Next. Same thing. Next. And global warming, the ozone layer already discussed the ozone layer. Next. And this is very good model that fluorocarbon will be break down into chlorine and chlorine will destroy the ozone. So this cycle will go on. Next. 75. Health effects. Next. So these are the particles. Based on the particle size, it will have to bronchitis or lungs, how much it will go. Ultimately, alveolar, how much it will go to the alveolar, which particle at what size to lead to the alveolar. This model will give you this one. Next. These are COPD. Obviously, you know that neurological problem may be there, heart disease is there, and you know that air pollution is the single largest factor for human health, and it is the single largest and fourth largest overall. And already air pollution kill around 8 million people in a year. And economic loss around $5 billion. Next. These are no indigenous loss. Next. This is just for the human respiratory system. Next. This is also ecology system impact on ecology and the next. This is disease burden, how much the air pollution can be acute respiratory, chronic respiratory, lung cancer, asthma, tuberculosis, perinatal, cardiovascular, and their percentage. Next. A broadly respiratory से क्या करते हैं? Respiratory illness, chronic bronchitis, asthma, pulmonary emphysema, avaricularia, PH, cancer कर सकते हैं, sulfur dioxide, lung cancer, disease. Next. Next. Like this oxide of nitrogen and lead, what can lead can kidney and reproductive nervous system. Next. Pollutant carbon monoxide can this what next. And carbon monoxide are defined to PM how our body is affected with this one. Next. Next. So this is the same thing, just another change. This is also the same thing. Next. Next. So obviously there should be a norms, guideline to control the air pollution, technological intervention as well as legal intervention. Regular standard को बढ़ाना है और very next. And air pollution control pollution के Act 1981 इसको empower किया Central Pollution Control Board को ताकि whatever measures they can take that should be spread into the all state board and they can do uniform work and control the air pollution in India. Next. And suppose if you have the data or कोई भी data आप generate कर लिया, आखिरी में you have to benchmark standard से compare करेंगे. SOP कितना होना चाहिए, ओजोन कितना होना चाहिए, साल में कितना होना चाहिए, hourly कितना होना चाहिए, 8 hourly कितना होना चाहिए. These are the standard. This is National Ambient Air Quality Central Pollution Control Group का guideline का सबक में ये standard होना चाहिए. And these are method, ये method में आपको measure करना चाहिए. Very next. Same चीज है इन लोग का जो ये है 12 parameter का जो standard है. Next. And now proper management of pollution road act for sustainable development. आपको sustainable development में करना है और economic growth होना चाहिए sustainable development, judicial age, natural resources for environment protection. ऐसा ना हो जाए आप mining कर रहा है कुछ भी कर रहे हो and later generation will be affected because of this generation non-scientific
taxonomy. Next. And thank you from them. Thanks to all of you. And Does anyone here have any questions which you could ask her on his presentations? Does anyone want question? Just any question? Thank you, sir. Next, I'm honored to invite Professor Chirasi Ghosh along with a distinguished PhD student, Ms. Ankita Shetty from the Department of Environmental Studies at the University of Delhi to join us on stage for a hands-on training session on air pollution and human health. Please join me in welcoming them to share their knowledge and enrich our understanding of this vital topic. Technical one. Presentation. Technical. Good afternoon, all. Again, I'm back here. So, please be seated. Till now, I know you are too much the mind of pollution. Everyone is discussing on pollution. शेयर भी तो करने पड़ते हैं. Please provide ma'am the laptop. By the time I will start, I'll not take much time. If you listen, then I'll ask at the end of the session some interactive session, some questions. How much you have learned from the terminology at least. मुझे पता है एक दिन में सब सीखा नहीं सीख पाओगे, पर basic glossary of air pollution. You can at least understand this is my mission today. ये जैसे PM 2.5 सर ने पूछा, you didn't raise many of you. PM 2.5, I think every small school children they know. Maybe in your inhibition you have not raised, no issue. वो चलता है, पर जानना जरूरी है. आपके मन के अंदर ये पता होना चाहिए. Because in the news, I think if you have a mobile, how many of you, few things, just to set the stage on, I will ask you, what is AQI? Air Quality Index. अभी अभी बताए सुबह से बहुत बंदे. क्या है? कोई एक बच्चे बताओ मुझे. What is AQI? Air Quality Index. है ना? तो ये Air Quality Index दिखता कैसे है? मोबाइल में आप लोग देखते हो? Anyone? Is it a number? It is a color or it is anything? By color. एक माइक नीचे ले जाओ. बच्चे जब बोलेंगे तो आप. Okay, for me it's okay. So color. Now can you tell me? Thank you, beta. Anyone also tell me? I just try to understand. If your AQI is color, what will we say right now in Lucknow city? What is the AQI value? कोई एक बताओ. Range क्या है AQI की? आज के दिन. I'm talking about today. Is it moderate? Is it hazard? Unhealthy है. और कोई कितना unhealthy क्या कौन सी नंबर में आ गया unhealthy? कोई एक बताओ. मोबाइल देख के भी बता सकते हो. I have no issue in it. I just want to know from your side. You know your city or not? If you know आज के लखनऊ city लाल बाग का क्या है और ये नजदीक क्या है AQI, if you can tell me. So माइक लेके घूम रहे, कोई माइक पकड़ ही नहीं रहे. वैसे कैसे बच्चे हो तुम लोग? तुम लोग तो स्मार्ट सिटी में स्मार्ट नहीं हो. मैं दिल्ली से आई हूँ, मैं देखना चाहती हूँ स्मार्ट. 171. अब लाल बाग में. लाल बाग में अभी है. यस मैम. अच्छा, सुबह के टाइम 300 था. ठीक है. What I want to tell, and इस जगह क्या है नजदीक यहाँ पर एमिटी यूनिवर्सिटी के आसपास? किसी का नेट अच्छा घूम नहीं रहा है, पकड़ नहीं पा रहे. अच्छा अच्छा. Now you 160.
Okay, very good. Now, my thing is that things are variation with the kilometer you are progressing in different place. So pollution is not a static. Pollution is dynamic. Pollution, whenever you move, then pollution is changing. Whenever you have less, morning hour it will be different. अभी के टाइम जब सोलर रेडिएशन ज्यादा आ चुके हैं तब अलग है. फिर रात को जब आप पोल्यूशन मैप आज रात को जाके एक बार AQI चेक करना, in that place it will go much higher. So that means the pollution values are very difficult to understand. Why air pollution study came late? Water was relatively we understood much better than air. Since morning, everyone is talking about this thing. There are so many instruments, so many things. But one thing you have to understand, it's a cocktail of problem. It's not a one problem we're discussing. किसी ने PM 2.5 बताए, gas particulate pollution, किसी ने gaseous pollutant बताए. Now I will add on with the sir, both the sirs topic, that is air pollution in human health के अंदर major problem. Now we have already discussed on COVID. ये जो पैंडेमिक में प्रॉब्लम क्या था, ये डस्ट था क्या था? कैन यू एनीवन टेल मी? ओके, बायोलॉजिकल. एक ही बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा है और बाकी बच्चे कहाँ हैं? सो विजिबल होना है, इंटरैक्टिव है ये प्रोग्राम. प्लीज ट्राई टू टेल मी एनीथिंग यू नो अबाउट. सो बायोलॉजिकल है. बायोलॉजिकल में कौन कौन आते हैं? आई विल शो यू स्लाइड. पर आपका डिपेंडेंसी ऑन स्लाइड मुझे नहीं जानना है. आई हैव टू डिग योर माइंड व्हाट यू नो राइट नाउ फ्रॉम वेयर आई विल स्टार्ट माय लेक्चर. आई विल ओनली टेक 15 मिनट्स इफ यू नो बेटर. बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट में एयर जो पार्टिकल्स में कौन आता है, जिसको बायोलॉजिकल पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं. यू आर राइट. सो टेल मी हाउ मेनी थिंग्स कैन बी बायोलॉजिकल ओरिजिन. कि अभी तक तो सर ने डस्ट बताए, उसके पहले गैसियस बताए. अब बायोलॉजिकली कौन पोल्यूटेंट हो सकता है? हु इज द बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट? बोलो. नाइट्रोजन तो केमिकल है. 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री तो पता है ना? पोलन ग्रेन्स, वेरी गुड. और हम जो हाथ धोते हैं, सैनिटेशन करते हैं, क्यों करते हैं? क्या रहता है? मम्मी क्यों डांटते हैं? मदर से टेलिंग पहले हाथ धो फिर खाना में हाथ लगाओ. Some insects and bees. Microbes. The first word is microbes. Why is microbiology such important? From the microbes you are having bacteria, virus and fungi. If you are not cleaning your body, you have a fungal infection. Pollen तो बाद में आएंगे, वो तो seasonal है, plants से आएंगे. Every year is full of microbes. These are invisible problems. We can't see, so we don't understand. So everyone, we all know that if you are एक bread भी आप रख देते हो, अंदर में कोई खाना रखना भूल जाते हो in the fridge, you get to see there is a fungal infection. You always don't eat that thing which are left out in the outdoor because air is full of microbes. So why we are forgetting them in the air pollution? They are there. So all the diseases whichever is happening, आप एक PM 2.5 के अंदर biological entity भी है. How many people are here pet lover? कौन किसके पास पेट है? दो चार हाथ उठाओ. डॉग रखते हो घर में, कैट रखते हो? You sleep with your pet or you keep your pet outside your room? Very good. How many is sleeping with the pet? I don't know because nowadays we don't love people but we love pet. ये हुआ है ना, खर्चा हम पेट के पीछे करते हैं, अपने घर के पीछे नहीं करते हैं. The important part is there, you love pet, no issue, animal lover होनी चाहिए, but handle with care. Because the pet, they are the substrate, their saliva is carrying the different types of germs. If you are not maintaining, you are licking their face, you allow them to lick, so they are actually contaminating you. Love and handle with care because this is the saliva is going out in your inside the room. If you have a carpet, they are there and they're the growing of different types of germs and pathogens. So many times it's not that the only outdoor is a problem and you only give with the government to blame.
You have to understand your lifestyle can dictate. Earlier days, our living lifestyles are much bigger house, much ventilated house, much good place we are living in we are blessed on that generation. Why we are worried about you? Because you are the generation, you are more urban dweller, you cannot afford a big house. So naturally your life is concentrated in a small space where less ventilation. We always talk about in pollution. Pollution is never been, with my own statement, I'm telling you, pollution is not a problem, population is a problem. You have to understand, इस रूम में जो हो, अब 10 बंदे हो जाए तो pollution कम हो जाएगा. We are emitters. Are we? हम लोग emitter हैं, pollution emit कर रहे हैं अभी बैठे बैठे. वेरी गुड. तुम ही एक ही हो जो मुझे को समझते हो और कोई समझते ही नहीं है. बात भाई और भी कोई बोलो, ये बच्चे छोड़ के. Where the girls are going? I'm not happy for that. Very good. So एक तो CO2 है और कुछ निकलते हैं हमारे बॉडी से जब बात कर रहे हैं. Microbes. That means we are aerosol emit कर रहे हैं, हम लोग CO2 emit कर रहे हैं. So when we go for ODT or carbon footprint mapping, we always take care of ourselves also. So हम बचाओ बोल रहे हैं, पर हमारे रोल नहीं समझ पा रहे. हम तो emit भी कर रहे हैं. We are polluter also. Inside बैठे बैठे emit कर रहे हैं हम लोग. Waste water तो छोड़ ही दो, waste excretion तो छोड़ ही दो. That means we have to redefine our role for as a emitter, not as a, and being a consumer, we are the highest emitter in this planet Earth. If we do not, if you start blaming to other everything except yourself, then आज के जो environment के हालात है, आज सबको दौड़ के आना पड़ा है. डॉक्टर्स आ रहे, इंजीनियर्स आ रहे, टीचर्स आ रहे, आप लोग को समझाने के लिए भाई समझ जाओ, नहीं तो ज्यादा दिन आप लोग जियोगे नहीं. Why these SDG goals came? How many SDG goals are there? How many this side? How many SDG goals सुने हो? Sustainable Development Goals. गवर्नमेंट तो काफी कुछ दिखा रही टीवी में, एक बार भी भूल के भी देख. 70. What is the objective of these goals? क्यों बनाया? पहले MDG goals था, अभी SDG goals. क्या जरूरत हुई nomenclature change की? Although you were first time learner, तो मैं ये बता दूं कि ये जो गोल के ऑब्जेक्टिव है 17, ये खाली आप लोग के लिए, next for the better life of next generation. Because we are the generation, we have started a better life, then we destroyed our environment. Now we are thinking about the future generation, children like all of our children like you, कि वो अच्छा जिए. हम तो गलत कर चुके हैं, जिसका हम भोग रहे हैं. हमारे बास्केट फुल ऑफ डिजीजेस लेके हम घूम रहे हैं. हर घर में एक कैंसर है, वो किसी भी तरह के कैंसर हो सकता है. लेडीज के लिए अलग, जेंट्स के लिए अलग, कोई कॉमन कैंसर है. एपिडेमियोलॉजी जब स्टडी ऑफ डिजीज जो हम देखते हैं, वो दिखा रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस चिल्ड्रन आर सफरिंग विद एस्थेमिक अटैक इन द, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग सिटीज. सो ऑलरेडी एवरीथिंग टच्ड डाउन, बट द preface what I just tried to tell you, that we have a same concern. Whatever our degree and diploma, that doesn't matter. As a community, we are right now thinking about this is our social responsibility to make you understand. आप बच्चे हो, आपको कुछ करना नहीं है. Nothing you have to do. Only thing you have to understand the problem. जैसे आज आप घर के बाहर पढ़ने आए हो, तो पेरेंट्स आपके लिए कंसर्न है. They are calling you. Are you safe? Are you coming back to the hostel on time or your PG? Means they are concerned about it. Now we are concerned about it. And you have to live healthy. कि आप हमारे जैसे कुछ उम्र, हम तो आधा जिंदगी बिता दिए हैं, हमारे जैसे आप तक चल पाओ कि कुछ काम करो. जो सपना लेके आप आए हो बड़े शहर में, you can do something. With this note, I start and will be show how to do the problem. So this is the thing already everyone showed. I'm just skipping the slide. There are 3 problems. Particulate problem, यहाँ पर 10 and 2.5 की बात हो रही थी, but you must know that there is a below 2.5 is more concern than the till. हमारी जानकारी 2.5 में अटक गया है, because हमारे national ambient quality जो standard अभी सर ने किसको सर ने दिखाया कि हमारे पास वही standard है. आप जब जिम जाते हो, are you going to gym? How many people are going? ठीक है. तो BM आप बताओ, जब जिम जाते हो तो बॉडी मास इंडेक्स देखते हो ना, वो है क्या?
बॉडी मास इंडेक्स दिखा के क्यों जिम जाओगे? सब ऐसे ही चले जाओगे? आपको पता है BMI क्या है? तो हाइट एंड वेट के साथ आपको पता है कि आपको जिम जाने का जरूरत है कि नहीं? ये नहीं कि ये ट्रेंड है कि आपको खाली डोले सोले बच्चे को बनाना है और लेडीज को काफी इंपॉर्टेंट। हेल्दी मीन्स हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी मतलब तो कस्टमाइज बॉडी नहीं चाहिए सबको। हेल्दी माइंड आप जो काम कर सकते हो, दैट यू थिंक actually healthy, and you then if definitely there's no need, everyone has to rush to the gym. Simple exercise also can help you. So that means the gaseous particulate pollution के बिना भी एक problem है जो हम देख नहीं पाते हैं, which is a silent killer, that is the microbes and dander, pollen, many things are there. They are actually creating problem. Once there are different types of parts, there is the fibers, those are actually floating. अभी जो इस टाइम जो होते हैं डिफरेंट शिमुल फूल के जो वहां से जो तुला के निकलते हैं जो फाइबर्स, they are floating, they are also coming to inhaling, can create problem. So there's a myriads of problem we all know, and it is happening now. So Biosol is a new entity in the air pollution domain where we can understand microbial, plant and animal origin. Anything can be actually biosols, which is known as, another term we use, organic dust. Basically, so, and this is more important why I am here to tell you, because I know sir is here to tell you other thing. Indoor air pollution, we are not being in city, हमारे outdoor से ज्यादा हम indoor में ज्यादा रहते हैं. Indoor means this is indoor. When you are going back to your hostel or house, this is indoor. If you are traveling in a bus and car, this is indoor. It's not that indoor का मतलब अपने घर ही होता है indoor. So 90% of the time you are spending indoor. हमारे जमाने में घर से भगा देते थे, मार पिटाई होके हमें बाहर खेलते रहते थे. We are not having this. This is the menace of life. ये जो आपको सेसाइल बना दिए हैं, you do not want to, I'm not blaming you, I'm blaming the changes and transition. आप इसके attraction से घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हो. I think very few people are doing physical activities or playing outside for not as a normal lifestyle. So this is a threat for the indoor people, those are residing, because major zone is the AC चल रहा है. Wherever you have a moisture, bioresource generation शुरू हो गया है. हम bioresource निकाल रहे हैं मुंह से because हमारे यहाँ से भी communication. This is the only reason pandemic में social distancing बनाया गया था. The reason is that don't touch, don't contaminate, because we are also carrier. We are talking about this thing. Nothing is there. कोई social secularism नहीं था कि आपको हटा दिया. यहाँ पर था biological contaminant carrier हम हो रहे थे. So we have to, being urbanized and city dwellers, you have to think about indoor air pollution more compare along with the outdoor. Government को outdoor के बारे में पता है. I'm sorry to say in the big platform, indoor के बारे में पता नहीं है. I think few people those are doing research, and not only in Lucknow, in Delhi, no one knows. Most of the people are not having, and this is the only reason I'm telling you there is no guidelines for indoor air pollution. Still, it is missing link. You are the future generation. You have to do research. You have to help your teachers. You have to understand the problem, and you can take as a topic. You see, research is needed to get back the policy. पॉलिसी कोई भी पार्टी की कपड़ा पहन के कुर्ता पहन के आता नहीं है. पॉलिसी के लिए डाटाबेस चाहिए, रियल टाइम डाटाबेस चाहिए. आप लोग का ध्यान आप दूसरे चीज में चले जाते हैं. आप सोचते हो कोई पॉलिटिकल पार्टीज की कपड़ा पहनने से, नारा लगाने से आप अपने देश को हेल्प करोगे, कुछ नहीं कर पाओ. आई एम बीइंग ए टीचर, सिंपल टीचर, आई एम बीइंग ए सिंपल रिसर्चर. आई एम टेलिंग यू, वन डे आई थॉट फ्रॉम बंगाल टू दिल्ली में आई थी एक सपना लेके तुम लोग के जैसे. मैंने सोचा मैं कैसे गवर्नमेंट को हेल्प, एक्सेप्ट क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट. घर में बैठ के सोफा में बैठ के टीवी देखते देखते गाली तो सब मार सकते हैं, बट आई हैव टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. देन आई हैव स्टार्टेड माय स्मॉल स्टेप. छोटे छोटे काम करते धीरे धीरे मैंने database with my student I have started. Actually, I found there's a huge knowledge gap. Government is also struggling for the informations. If you go, आज हम कमेटी में हैं, हम हर जगह जाते हैं, हम अब देखें कि गवर्नमेंट का कोई डाटाबेस नहीं है. गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, पॉलिटिकल डेवलपमेंट करे, ना डाटाबेस रिसर्च करे. So these all people, academia,
we can do a better country if you really do a good meaningful research. वो कार्टन बेस्ड रिसर्च नहीं है जो बाहर वाले कनाडा क्या कर रहे हैं, अमेरिका क्या कर रहे हैं, उसको डाउनलोड करके उसको इस टाइप का छाप दो कि हमारे इम्पैक्ट फैक्टर में आ जाएगा. You know, this is very important that indigenous problem challenges you must understand. लखनऊ की एक अलग ही प्रॉब्लम है, दिल्ली का अलग प्रॉब्लम है. मैं कलकत्ता की हूँ पर मैं दिल्ली को ज्यादा जानती हूँ 40 साल से. दिल्ली का नुक्कड़ प्रॉब्लम मुझे पता है, so I will do research with that problem rather than doing USA की प्रॉब्लम. My request to all that student young guys from any discipline, computer science वाले AI को लगाओ, chemistry वाले chemical analysis करो, physics वाले biosensoring के काम करो, biology वाले biological method से करो. कोई अंतर नहीं है सब्जेक्ट की, इसका एक मिशन होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए. और जो आप लोग के पास, आप लोग सब्जेक्ट से बाहर आके बियॉन्ड सिलेबस रिसर्च करो एंड दिस में सब जोड़ जाओ एंड जोड़ के कुछ ऐसे टॉप लगाओ जो हेल्प गवर्नमेंट. एंड आई फील in this way I always recommend that indigenous knowledge, we are rich in indigenous knowledge. When we go abroad we can find out they are looking at us, and IUCN has given the natural biological solution. ये biological solution इंडिया के पास है, herbal solution इंडिया के पास है, all technologies, low cost technologies हमारे पास है, वो हमारे देश से लेके वहाँ कर रहे हैं. Why we are becoming fool and going for the, there's no harm in AI based research, but there's a harm in becoming fool to only copycat the other technology. So technology plus technological solution, biological solution, both the things should be interdisciplinarily attached, then any technology will be 100% renewable. सबसे इम्पोर्टेंट है, हम एक सेंटर भी जो मिरांडा हाउस कॉलेज में खोले हैं, जो ड्यू में डिजास्टर के बारे में भी समझना है, पॉल्यूशन एंड हेल्थ के साथ मिला के डिजास्टर. Every city is having tremoring, every city is having pollution. Pollution and disaster एक ही पन्ने में है. Pollution, disaster and health एक ही पन्ने में है. How many people are go and find out disaster? तो पिक्चर आ जाते हैं, पर किसको पता है कि डिजास्टर के बाद वो पर्सन का क्या हालत हुई है, कहाँ गए हैं? Have you ever find out the thing? Never. So we have created a program that we can go post-traumatic event management. How their people, their education खराब हो रहे, स्कूल बह गया, पानी का contaminated पानी वो लोग पी रहे हैं, खाने के सामान नहीं है. So please try to come out from your Google, try to come out from the media. Media is helping you, but there's a huge role of citizen science. And you are the citizen can do a science. छोटा छोटा काम करो, एक अपने जहाँ से आप आए हो, ये खाली लखनऊ सिटी की बात नहीं. You are from different place. One environmental conservation and management के काम, कहीं पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवा दो जहाँ का पानी के खराब है, कहीं पर कुछ भी करो. प्लांटेशन के बात किए हैं, तभी आज मोदी जी ने बताया कि एक पेड़ माँ की ना. माँ is the ultimate word for us. We all understand whenever we talk about माँ, तो हमारे एक इमोशन आता है, बाकी इमोशन तो ड्राई हो गया है हमारे. तो ये माँ की वर्ड में भी हम लोग एनवायरमेंट को नहीं देख रहे. You have to understand that प्रकृति, नारी एंड माँ ये एनवायरमेंट के साथ जुड़ी हुई है. So please try to treat the environment as a mother, because when we are the concern, I'm not telling you and you are doing, but that consensus you must have. So this is the bioresource source. As we discussed, all the things are coming. Viruses, bacteria, algae, and pollen. Everything is a part of it. Now, there's a natural source, anthropogenic source. Institutional की मानिए तो मैं आपको कहीं जाना नहीं है. कैंपस के अंदर आप देखो बायोरिसोर्स है कि नहीं. कैंपस के अंदर आपके जो लेबोरेटरी है, जहां पर भी वाटर यूजेस है, आपकी जो कैंटीन है, आपकी जो मेस है, this is a full of, and grass जहां बैठते हो, लॉन है, this is a full of bioresource. So that means we have done different study, survey study जो यहाँ पर कर नहीं पाई मैं. जनरली मैं आप लोग को ही देती हूँ कि जाके आप एक्सपोज करो, आप देख के आके बताओ कितना है कॉलेजेस में. Most of the cases this is happening that classroom is the less contaminated, canteen where you prefer to stay with your friends, they are the maximum. तो भले ही टीचर के डर में भागते हो, पर एटलीस्ट बायोरिसोर्स के डर में कैंटीन से क्लासरूम में आ जाओ, कि this is the safest place for you. If you are exposing 8 hours there, it will be a problem for you. So this is when you come back to indoor. So then also you find out AC duct है, attached bathroom चाहिए.
अब attached bathroom, जब most of the cases we are having bad toilet management habits. I must tell you, हम लोग ड्राई नहीं करते, पानी डाल के अंधेर पर. मुझे बात कोई बुरा मत माने, ये जेंडर बेस भी है. बॉयज सोचते जितना गंदा रहेंगे उतना मैचोइज्म होता है, वो नहीं है. यूरिनेशन तुम्हारे राइट नहीं है. हम क्यों तुम्हारे लिए कंटामिनेट हो जाए कि तुम घर रास्ते पे यूरिनेट कर रहे हो. द जर्म्स आर कमिंग एंड वी आर इनहेलिंग एक्चुअली बाय योर बैड प्रैक्टिसेस. डिफेक्शन तो छोड़ दो, चलो डिफेक्शन नॉर्मल बंदे कम करते हैं, एकदम गाँव में होता है, पर यूरिनेशन तो मैं देखती हूँ कहीं पर भी. दिल्ली में भले आम इतना बड़ा बड़ा हाईवे उसमें भी खड़ा हो गया. इस मतलब क्या है? The मतलब that people are totally stupid. The degrees are fake for this thing because urination is not only a pathway. गंगा जल नहीं ला, यूरिनेशन जर्म्स ला रहे हैं, वो जर्म्स एयर में आ रहा है. आप क्यों हमें कंटामिनेट, कौन राइट दिया है आपको? जैसे हम पानी को बोलते हैं सोर्स ऑफ कम्युनलिटीज, तो ये भी तो सोर्स ऑफ कम्युनलिटीज है. एयर को आपने किसने बोला है कि सॉइल एंड एयर को आप कंटामिनेट कर दो? So you have to understand this generation gap. आप AI के रिसर्च कर रहे हो और रास्ते पे यूरिनेट कर रहे हो. What type of actually hypocrisy you have? So this type of thing you have to understand. You have an attached bathroom should be dry all the time. खाली एग्जॉस्ट से ड्राई नहीं होता है. मैंने खाली टेक अवे दे रही हूँ, कोई रिसर्च डाटा नहीं दिखा रही हूँ. आपको ड्राई करनी पड़ेगी बाथरूम को, बिकॉज बाथरूम इज अ हब ऑफ योर जर्म्स जनरेटिंग. अब उसी बगल में बिस्तर है, वो जर्म्स आपको इनहेल हो रहा है. आपको किसी को गाली मारने का लखनऊ सिटी का चीफ मिनिस्टर को जरूरत नहीं. आप घर में बना के रखे हो आपकी प्रॉब्लम जोन. So that you have to understand that if you are not drying, your sanitation is mandatory. जो पैंडेमिक में सिखाए थे आज सब भूल गए हैं, फिर से 2 साल बाद फिर से रीडू करना पड़ेगा. You have to understand if health is going, you are going to damage by yourself. 70% आपकी अपनी गलती, 30% by the outdoor problem. So infectious disease, hypersensitivity disease, respiratory disease, सब बातचीत हो चुकी है. Now one thing I must try to understand, size matters a lot. Just like 10 2.5 की बात हुई थी, हर चीज ड्राफ्टेड है कि पोलन का साइज क्या है, कहाँ जाएगा, क्या क्या होगा. You know, I'm in the सफर प्रोग्राम where pollution पहले था कि वेदर प्रेडिक्शन होता था. ये बात मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ. टुमारो यू विल बी द रिसर्चर. IMD जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पहले खाली वेदर प्रेडिक्शन करते थे, ठीक है. उसका दिल्ली में मेन ऑफिस है. We are the IMD is a contributor of World Meteorological Organization. IMD का स्टेट भी बॉडी है. आज जहां पर भी बारिश होंगे, everything is every state they have a body. Now, once we found that climate change topic we have to discuss, then definitely not based upon the weather prediction. So can anyone tell me weather and climate change की definition का difference क्या है? Is it the same? Weather change बोलते हैं. आज का दिन जो है वो आज क्लाइमेट हो रहा है कि वेदर चेंज हो रहा है? तो एक क्लाइमेट चेंज में रिसर्च करोगे तो कितना दिन का डाटा लगेगा? 5. ये बच्चे कहाँ से आए भाई? 30 years मिनिमम डेफिनेटली. अब जब कोई भी इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात करोगे रिसर्च में, नॉट 5 years, यू हैव टू टेक मिनिमम 30, बियॉन्ड दैट. अब 100 तक चले जाओ, 200 तक चले जाओ. सो दिस इज द वे द क्लाइमेट चेंज डाटा रिसर्च. आप कल का डाटा लेके आप लोग हम लिख देते हैं, इट्स डिपेंडिंग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. वो रिसर्च पेपर हम लोग के पास आए तो डस्टबिन में फेंक देते. Important, you have to understand the difference between parameters are same, tenure time dependent response. So time is different. So this is the way size dependent response. Once the size is different, your response will be different. Allergy बहुत कारण हो सकता है. तो allergy के size जैसे जैसे problem आ रहे हैं, we all know that we are having this thing. Sources are also different. I will give the presentation. If anyone is want to take, the ma'am will forward you. Doesn't matter because this is the only reason we are here. So छोटा वाला पढ़ने का जरूरत नहीं है, बड़ा वाला पढ़ लो, जल्दी जल्दी समझ में आएगा. So these are all parameters. It's as I told you, it's a cocktail. It's a pollutant. पहले था हम लोग meteorology prediction कर रहे थे. Now we have added pollution through the suffer. So climate के बिना एयर पोल्यूशन है नहीं. वो मुर्गी अंडे की बात होता है, कौन पहले आया, कौन किसको प्रॉब्लम कर रहा है पता नहीं है. So if you really want to know, understand the climate change of a country, you have to understand the air pollution and climate change together. And in this case, we are now interested and working with the doctors to have the seasonal, because हमें पता है कि इस सीजन में ये बीमारी होंगे.
हम अभी डिजीज कॉजिंग एजेंट को ड्राफ्ट कर लेते हैं along with the polluted. Then we are having a neat understanding of the diseases, what we can help the doctors to give कि इस टाइम ये pollutant के कारण बायो रिसोर्स के अभी बैक्टीरिया ज्यादा बढ़े हैं, यहाँ पर फंजाई कम हुई है, इस टाइम वायरस ज्यादा आ रहे हैं, इसका मैपिंग भी हम कर लेते हैं, तो योर सीजनल problem of the diseases of a city will be properly invented. That was the mission we are having. I'm also working with there in the University of College of Medical Sciences, and there the doctors team are with me. I'm thankful to them also. Whatever research I'm doing, we are working together. So, as I told you, no guidelines for bioresource. Bioresource का कोई Indian guidelines है. हमें depend किसके ऊपर करना पड़ रहा है? American Conference of Governmental Industry ऐसे है कि 1000 CFU. CFU का मतलब है माइक्रोस को तो इंडिविजुअली देखना मुश्किल है. कॉलोनी फॉर्मिंग, कॉलोनी फॉर्म, हमें दिखाऊंगी पिक्चर आपको. कॉलोनी फॉर्म करता है एक माइक्रो ग्रो करके. हम लोग एक टाइम के बाद काउंट करते हैं कितना कॉलोनी है एक एरिया और साइज के. तो 1000 CFU पर मीटर क्यूब होता है, तो उसके ज्यादा हो जाएंगे तो इट इज नॉट लिवेबल प्लेस. इस रूम में आप मॉनिटर करोगे तो 1000 के ऊपर डाटा चला गया तो मतलब इसको डिसैनिटाइज करनी पड़ेगी. इसमें आपको बैठने के लायक आपको. सो दैट मींस दिस इज द गाइडलाइन बाय इंटरनेशनल. नेशनल गाइडलाइंस कहाँ है? हम जब मकान खरीद रहे हैं, हम लोग इतना भूमि पूजा गृह प्रवेश करते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, हमारे पास कोई गाइडलाइंस नहीं है. And this is the only reason after going to the new houses also we are falling ill. हम क्या बोलते हैं कि कोई शनि की दशा लगा है घर में, इतना पूजा पाठ के उसके बाद भी हमारी तबीयत ठीक नहीं है. हमें पता करनी पड़ेगी कि उसके अंदर प्रॉब्लम क्या बसी है. Because you have to remember one thing, no builders are staying in the houses for where they are making. We are the people, सारे जिंदगी का जो कमा रहे हैं वो डाल के खरीदने के बाद हम मर जाते हैं डिजीज लेके. So this is the high time to government take responsibility of making some guidelines for the indoor air pollution. आज के concept में green building concept आ गया है. So green building, if you anytime come to Delhi, you can contact me. I will make your visit to Indira Bhavan, which is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Here they are having model green building, जहाँ पर सब कुछ लाइट ऐसे ऑन नहीं होगा जब तक illumination sufficient रहेगा. And then only it will start switching on. So there are techniques. So I need technology. I'm not against technology. पर इसके बाद पर ऐसे प्लांटेशन, एरेशन, बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं कि आपको दिल्ली का एक्सट्रीम क्लाइमेट बाहर से जब अंदर जाएंगे आप देखेंगे 5 से 10 डिग्री कम है. So there are the geothermal energy they are using for parking the cooling the water, the parking the vehicles. So the total green building concept, I think this type of things we need to include all first in the institute. Any institute maybe they have, but we have to popularize. Tomorrow आप घर बनाओगे तो at least एक आध चीज आपको करना पड़ेगा जो green building में आते हैं. So these are the thing how size matters. So I'm not going that part already. I have researched. Every bacteria in which the doctors are already given from the paper कि कौन सी बैक्टीरिया से कौन सी प्रॉब्लम होते हैं, कौन सी फंजाई, तभी आज different types of drug देते हैं. पर इसके बाद भी so many responses we have which doctor also do not know कि this is they give broad spectrum medicine just to cover the problem. क्योंकि हमें immediate relief चाहिए. हम इतना नहीं सोचते कि वो बैक्टीरिया के लिए है कि वायरस के लिए है, कौन सी compositions के लिए. That means we have to be very roadmap of the thing of the disease, because we all know that every country, every state, based upon their livelihood or their ethnicity, we have a typical disease. Delhi का एक अलग ही problem होगा, अलग हरियाणा में, nearby Haryana, nearby UP or Delhi inside. It's don't feel geography doesn't have an influence. डिजीज में जियोग्राफी का भी इन्फ्लुएंस है, डिजीज में एथनिसिटी की है, तभी एक डॉक्टर्स के पास व्हेन यू गो दे टेक केस स्टडी. Delhi is a referral hospital. All people are coming to AIIMS and the referral hospitals. We try to find out from where the patients are coming. It's not Delhi. सबसे पहले मीडिया ने बेड़ा गर्क करके रखे हैं. They have making anything for Delhi. जैसे सुबह भी किसी ने बोला, Delhi don't blame Delhi only. Delhi is a sink. Delhi is a land block area. So आज समझ में आ गया इतना दिन 14 साल बाद मिनिस्टर लोग को कि
प्रॉब्लम आ रहे गाजियाबाद से कि यूपी से, और प्रॉब्लम आ रहे हरियाणा से. Delhi is a sink, Delhi cannot work. The maximum number of policy changes are there in Delhi. But we can't do management only Delhi NCT, we should do Delhi NCR. Similarly, Lucknow city ki problem is not a Lucknow ki problem, imitate. Actual problem is the wind blowing which directions. So we always map wind trajectory. Because pollution यहाँ से उधर जाएंगे ना, pollution इधर से उधर जाएंगे, कौन सी corridor से, no one knows until unless modeler and physicist will come and help us. So this is the way we work with IMD. नहीं तो मैं कौन हूँ, मैं तो biologist हूँ, मेरे को IMD के साथ कोई लेना देना नहीं है. So don't make any innovation of your subject if you only have to be learner. We are always learner. Teacher हम बनने जाएंगे तब भी हम learner नहीं रहेंगे, हम सीखेंगे कुछ, सबसे सीखेंगे. So that mindset you must have. And so ultimately we are doing passive sampling and active. दो होता है, पहले था culture plate, एक plate लेके हम लोग grow करते थे, फिर count करते थे. वो था traditional plate technique. अभी when we started in 2016 to start before pandemic, bioresource monitoring, जब हमारे दिमाग में आया कि हमें देखना पड़ेगा which site is going to alveoli. Someone told that PM 2.5. Now who are going? Is it a bacteria? Is it a fungi? Is it a virus? आज जैसे पता चल गया कि कोरोना वायरस, सबको पता चल, तो उसका साइज को आपको पता चलना चाहिए कि why it has gone. And I must tell you that in Delhi, most of the death of during pandemic is not for the pandemic, it's the coronavirus. It is for the cold lung. Once this is the only reason we are talking about comorbid patient, कि किसी के पास different type, पर in generally Delhi का जो बात सर ने सुबह बताए कि हमारे lung quality is very bad. Whatever it looks from the outside, we are fine, but basically our lung health is lower than the other city where we have a less pollution. There's a study from University of Chicago that they are telling that the people of Delhi 7 years before they are dying, हम घर में अपने बच्चे को ही बोलते कि पैकअप कर ले, सारे काम 7 साल पहले हम चले जाएंगे ऊपर. Important part it is there and it is not a fun. Every city people will die before than the class 2 cities or the rural areas. So this is the one other instrument was from USA and that we purchased. First we borrowed from IIT Delhi. Now I have, through the project we have a different. ये है, इसको बोलते हैं cascade impactor method. Right side जो मैंने बोला settle plate. आपको settle plate लेके you are standing in your breathing range. बार बार बता रही हूँ कि 2 मंजिल ऊपर मत रखो. आपके breathing range, because we are bothered about the exposure model. अब हमारी इंडियन हाइट 6 फीट के ऊपर जाते नहीं है. In other countries maybe they are much more taller. Average height 6 फीट तक. तो आपने breathing range के पास वो प्लेट को रखते हो. So then yeah, this is a media we are using for bacteria and sometimes blood. अगर there is a number of media, आपको वो जानने का, media nothing but a food. Micro food देंगे तभी तो grow करेगा. So हमने food ये देके जब रख के फिर expose करके 15 or 20 minutes हम रख देते हैं, फिर colony grow होता है. But the problem came when we are taking हमारे dead material भी आ रहे हैं, different type of dust भी आ रहे हैं, no screening. This instrument, it looks like a small tiffin carry, but it has a 7-stage. And in Delhi, earlier it was 3-stage Central Pollution Control Board and ED was using. Right now I am in that way, 3 है मेरे पास, वो 7-stage बहुत कम है अभी भी India में. So 7-stage is actually showing you what is doing. I'm coming this thing बाद में. 7-stage का मतलब ये है. This is classified. First 2 is your nasal buccal cavity and the nasal cavity. जो first 2, because we all know that upper respiratory can remove the dust or anything is coming inside your trachea. So that is the first 2 stage. And then 3rd and 4th is coming trachea. And this is the way, and ultimately, if the size is more on this thing, 2 के beyond, then definitely your alveoli has gone. तब हमें जानना क्या है, हवा क्या carry कर रहा है? This 5 or 6 or 1 or 2 or 3 or 4. So in this case, I will come this instrument. इसके पहले ऐसे होता है petri plates for the beginner or starter. ऐसे हम लोग खरीदते हैं. फिर हम we can make autoclave this thing, this media. This is a hand-held weather monitor. It is also because of हर जगह. अब मैं IMD में एक station होता है.
जहाँ पर वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, यू कैनॉट मूव, सो देयर इज अ जियोग्राफिकल लिमिटेशन ऑफ द डाटा। हम लोग एक हैंड हेल्ड वेदर मॉनिटर यूज करते हैं, जहां पर भी जाओ अंदर बाहर आप इसको यूज कर सकते हो। सो एटलीस्ट यू कैन गेट सम नंबर्स ट्रेंड एनालिसिस के लिए जो हेल्पफुल होते हैं। Then we prepared this media preparation. Normally it is available in the net also, so all teachers of your class also they know. And then this media, so बहुत काम करना पड़ता है एक डाटा के लिए। ये समझ जाओ कि ऐसे नहीं है पिक्चर देखते हो, जो पिक्चर आप लोग मोबाइल में देखते हो, कोई काम पीछे नहीं है। We all people are doing just like mothers are cooking in the kitchen. So इसके बाद plate setting technique होते हैं, then definitely we are also using, just like this is the we have installed in the Patil chairs. This is the referral hospital in India and also in Delhi, जहाँ पर respiratory patient ही आते हैं। So we have installed the instrument in the Patil chairs, and it is just nearby to my department. So to get to see, although they have a good management of ventilation and clear sanitation, but still how much they have, because this is the data we have supplied to the director of Patil Chess Institute. So this is the way, you know, after incubation you get to see. Ignorance is blessing. आपको पता नहीं होता है तो आप खुशी घूमते हो। हम जब देखते हैं तो हमें दुख लगता है कि ये तो बच्चे ने इनहेल कर लिया। This is the only reason we are concerned. हम लोग मैड पर्सन नहीं है, हम आए हैं आप लोग को समझाने के लिए कि आपको हाथ धोना, एयर क्लीन करना, सैनिटेशन, जो मोमेंटम में आप लोग पैंडेमिक में जिंदगी जी रहे थे, यू हैव टू लिटिल बिट 20% रिडक्शन कर दो। आप शुड नॉट बी ऑब्सेस्ड, डोंट बी ओसीडी, बट बिना ओसीडी सैनिटेशन को मेंटेन करो। आई मस्ट टेल यू, एज आई एम मॉनिटरिंग पोस्ट पैंडेमिक पॉल्यूशन 2 गुना बढ़ चुका है। अब तक लेसन क्या लर्न किया हम लोग? पोस्ट तो बहुत कर लिया एनवायरमेंट के बारे में, बट व्हेन पॉल्यूशन इज डबलिंग टू द प्री लॉकडाउन मींस पीपल फॉरगॉटन दैट पार्ट। उसके हमारे बहुत शॉर्ट टर्म एमनेशिया है, हम जितना जल्दी भूलते हैं उतना जल्दी याद करते हैं, बीइंग इमोशनल पोस्ट करते हैं, जस्ट वो पैटर्न को छोड़ दो। व्हाट इज द डिफरेंस आई फील विद द डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड कंट्री? आई मस्ट टेल यू दैट दे आर, once they learn they never forget. This is the only reason 1970 में हमारे दिल्ली इंडिया जैसे पॉल्यूशन था, वो आज जहाँ पर हम भागते हैं कली एनवायरमेंट की पिक्चर खींचने के लिए, और किसी चीज में नहीं। वी आर बेटर इन एकेडमिक्स, बेटर इन टेक्नोलॉजी, ओनली हमारे एनवायरमेंट खराब है तो वो पिक्चर आता नहीं है जो पिक्चर पीछे 5 बंदे लेके आ जाता है। तो दिस इज द ओनली थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन मेक इट इफ यू रियली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस। आई टूक रिवर्स माइग्रेशन, बाहर से मैं भाग के इंडिया आई, कोई नौकरी नहीं था, लव ऑफ द कंट्री। प्लीज ये नहीं मैं कोई प्रीचिंग कर रही हूँ, मुझे कहीं पर लगा था, तो आज भी हम तुम लोग को अपने बच्चे मानते हैं। हमने अपने बच्चे को जाने के लिए बंद कर दिया कि जाओ सीखो लौट के आ जाओ। दिस कंट्री नीड्स ऑल ऑफ यू, द गुड ब्रेन, नॉट द बैड पीपल दोज आर मूविंग अराउंड। हमें आपकी जरूरत है इस कंट्री की, तो प्लीज कम बैक, लर्न प्रॉपरली, डोंट चीट द सिस्टम एंड डू द थिंग एंड कम बैक एंड कंट्रीब्यूट इन द सिस्टम। एक सिस्टम जो इंडिया की चलती है उसमें कंट्रीब्यूट करनी है, जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं। सो दिस इज द वे वी कैलकुलेट कंसंट्रेशन। जनरली ये इस टाइप का प्रोग्राम वर्कशॉप में आई टेक द स्टूडेंट इन ड्यू to the lab and I give them samples to do by hand, and they come back and they show me the thing, interpreting the thing. I can't afford to be in outside, so I just try to show you the real time pictures. ये सारे real time है, कोई कट एंड पेस्ट नहीं है। तो इस टाइप के जो डाटा सैंपल आते हैं लैब में हमारी, उसको काउंट करके दिस इज द 2 कैलकुलेशन ओपन प्लेट टेक्निक, इसमें नंबर ऑफ कॉलोनी जो मिलता है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पेट्री प्लेट्स, एंड देन सैंपलिंग ड्यूरेशन 10 मिनट्स 15 मैक्सिमम 20 मिनट्स। इससे ज्यादा सैंपलिंग करने का जरूरत नहीं, तो बहुत ज्यादा माइक्रोब्स आ जाएंगे, आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओ, इट्स ओवर क्लस्टरिंग हो जाते हैं। 10 मिनट्स अच्छा होता है। कभी कभी जहाँ पर एक्टिविटी कम है, सोचो कि आप मार्केट एरिया में कर रहे हो, आप बहुत कम टाइम के लिए ओपन करो, पर आप फील्ड में कर रहे हो, यू मस्ट नो देयर इज नो बायोलॉजिकल ओरिजिन है, ये भी समझ के करना पड़ता है, तो वहां पर अपने ज्यादा कर। सो दैट मीन्स मैक्सिमम इज 10 to 15 मिनट्स। देन जैसे एरिया ऑफ द पेट्री प्लेट्स वी आर हैविंग दिस डायमीटर एंड द ड्यूरेशन 10। कैस्केड में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वी आर फ्लो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द एयर moving there. So you are artificially simulating this instrument, your lung and your airflow,
and making this thing we are sampling duration. उसमें भी हम लोग तय करते हैं कि air flow, because you all know wind flow should be low and high. किसी को पता है कब low wind बोलते हैं, कब high wind बोलते हैं? कोई physics वाले को पता है? Anyone? जब 3 मीटर पर सेकेंड wind जाते हैं उसको it's IMD की क्लासिफिकेशन है, then it is low wind, and when below 3 मीटर पर सेकेंड and when it is 3 मीटर per second के ज्यादा है, then high wind, and when there is a turbulence you can understand it should be much higher. So हमारे season के साथ साथ dispersion भी अलग होते हैं. So if you're having a time of summer it will be highly dispersed. We are heading for winter, stable weather है मतलब wind dispersion है. Now whatever is there it is falling on you as the gravitational. So this is the reason seasonal dimension is also very important. As I shown you, this is the Petri plates, जिसमें 4 size based upon stage 1, stage 2, as you see, इसको हम इसके अंदर हम लोग कोई Petri plates रखते हैं, रख के हम लोग इसको इंस्ट्रूमेंट को जो मैं दिखा नहीं पाई ऑन कर देते हैं, and they suck the air and it will go through this impaction and they deposit the side segregation by the instrumental engine power. So like this is the thing, important part is there, who are the different side segregation, pre-separator, fairings. So this is the way we compare with the problem, number of colonies with that where it is there. तो आपको पता हो जाता है कि अपर रेस्पिरेटरी में ज्यादा है. मैं वही डाटा डॉक्टर्स को भेजती हूँ कि आज के टाइम टुडे सोचो कि आज 11th October upper respiratory more congested, problems are more, or lower respiratory is more. Again, if you're going to December, we expect that problems are more, then definitely we give the compositions of the thing. Doctor then, and then we go for the microbiological analysis, then we try to find out bacteria zyada hai ki fungi zyada hai. And ultimately we are going for the heading for the pathogenic and non-pathogenic, because microbes are not all bad. आपको पता होना चाहिए हम लोग दही इसी कारण खाते हैं कि we have a eco-friendly gut bacteria. So आप जब रात को देर में सोते हो, you are damaging your microflora in your gut also, and this is a huge problem for the young generation. I must tell you, this is already doctor is here. I am going to not able to tell more thing, but only thing I'm telling that this IT job वाले का gut problem, gut analysis is a एक तो psychological हो चुका है, वो तो है mental health is not good. So number of studies are there. Those are the people working in IT. There's a problem. Even the US are also thinking about this. But gut microflora के ऊपर बहुत काम हो रहे हैं research, because जो normal food, normal diet and normal sleeping and eating pattern has changed by all of you. उसमें और भी तड़का है Zomato and Swiggy. So once you have create all the problems and challenges to your body, then you are asking कि हम healthy क्यों नहीं है? एक दिन सह सकता है शरीर आपके जो challenge आप दे रहे हो, we can accept, but every day. So stress, don't feel the teachers are giving and your parents are giving. Stress you are giving for your bad lifestyle. So this is the way I just try to tell you here that this 6-stage impacted, how it is helping, and we have already disease हम लोग map कर चुके हैं. Methodology जो है आपको हम लोग देंगे. ये 2 case study के 2 slide ही खाली दिखा रही हूँ. बच्चे आप हमें पूछते हैं क्यों करें? Why we are going to do? So I told, given them the sample, सारे रूम, ये एक कॉलेज है, मैं नाम नहीं ले रही हूँ तो प्रिंसिपल मुझे मारेंगे. ये कॉलेज की सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेज है जिसमें हम दिए थे, वो नंबर वो टॉप कॉलेज है. So naturally principal was not accepting कि हर कॉलेज there are problem. I have given their student, and अब उसके बाद जब हम लोग ventilation also very important, हम सारे documentation of different site को किए थे, including आपका जो सबसे चाहिदा जगह है cafeteria and other thing, lawn. Then you find out, and another place, this is a department. There also principal told that my department is सबसे green department. मैंने उसको भी दिए थे बच्चे को, वो भी कहे थे, because washrooms are also very important place. You know, one thing I must show you, इसमें visibility थोड़ा सा कम है. 1000 के ऊपर कौन है आप देख लो. 1000 के ऊपर classroom यहाँ पर है pre-monsoon month में indoor में, मतलब indoor is a problem. Botany laboratory थी, zoology laboratory थे, and cafeteria सबसे ज़्यादा. This is the thing is proven. Again the tech park, जहाँ जहाँ water and plant की है samples रखा हुआ. Where is the department?
You see, the only thing department was less क्योंकि कॉलेज में ज्यादा populations होते हैं, footfalls and more, डिपार्टमेंट में कम होते हैं तो लोड कम था। उसी की बात हेड के लिए वही था कि हेड रूम सबसे कम था, तो हेड ने तब उसका क्रेडिट हमसे ले लिया कि आई एम वेरी क्लीन, so that you have to prove that, and generally we are making fun that Jain's principals are not very clean, so he was telling no I am very clean, देखो मेरे डाटा कम आया। So whatever the end of the day, the data will tell you where to sit, how many hours you are going to expose। तो ये सिस्टम का छोटा छोटा स्टडी आप लोग कर सकते हो अपने टीचर्स के साथ, जो आपको काफी reality bites देंगे, what you can understand there। So this is the pictures of the garden, take part, washroom, indoor, indoor में ज्यादा होते हैं। This is the takeaway message, outdoor में कम होते हैं because dispersion है, wind is helping you, rainfall is helping you, whenever there is a rainfall air pollution नीचे आ जाते हैं, नहीं तो wind disperse कर देते हैं, indoor में circulation यहीं घूमते हैं, so this is the reason it is remaining there, we are exposing here, and ultimately this is one lesson हम देख के आए, lunch के बाद इसका कैलकुलेट करके हमें दिखा के अपना कोई एक आके यहाँ पर इंटरप्रेट करोगे, ये लिखा हुआ है, आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है, आप कैलकुलेट करो, अभी नहीं है लंच कर लो, एपेटाइजर के बाद आके मुझे एक आके कोई बताओ इसमें आपको क्या बता रहे हो, आपका राय क्या है। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन राइट नाउ यू कैन आस्क और एंड आल्सो थिंग, एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हो if anyone is interested, otherwise we can interact later on। ये तो लास्ट स्लाइड था ना, ये तो लास्ट है, ठीक है। Very good afternoon, ma'am. Very good afternoon, ma'am. Ma'am, I have a question that after the analysis, what were the procedure or what were the protocols you have done so that these problems were solved in that university or that Excellent area? You see, first of all, I've shown you ये mic. I have shown you the sampling process. Mostly I have focused on the sampling, isolation, calculation. Now we have to go for dyeing, staining जिसको बोलते हैं, कि staining specific staining है जो जिससे आपको पता चलेगा कि बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव आप जानते ही हो, जो माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हो वो ऐसे करके हम लोग आइसोलेट करते हैं, because it is a total colony, total safe, you cannot segregate the thing। Then अभी इसके बाद for the college and institution research अलग एक फोरम होता है जिसमें हम लोग बियॉन्ड जाते हैं पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक के लिए, डीएनए आइसोलेट करके फिर हम लोग मेटाजीनोमिक्स के तरफ से हम जाते हैं। वी आर वर्किंग ऑन दैट पार्ट बिकॉज आवर मेन actually admission and a question from the ministry they are asking, and also we are interested to know what we can add on to the doctors, that what are the pathogenic organisms। अब 100 के अंदर 2 बदमाश है और 5 के अंदर 2 बदमाश है, तो potential gradient of the problems are different। So we have started making site-specific spatio-temporal differences, activity zone-based data sampling, and then we are trying to find out which month pathogenic organisms are more। So disease doctors बताएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगी, प्रॉब्लम मैं बता दूंगी, ये पॉजिटिव एजेंट को हम देख रहे हैं पैथोजेनिक को, अब सर बताएंगे कि कौन सी डिजीज इसके कारण हो रहा है, बिकॉज देयर आर मेनी थिंग एज ए ब्रॉडर व्हिच आर हैविंग सिम्टम्स आर वेरी सिनोनिम, दैट इसके लिए भी हो सकता है, जैसे 2.5 अस्थमा भी होते हैं, सीओपीडी भी होता है, एम्फाइसेमा भी होते हैं। अब स्पेसिफिक एम्फाइसेमा वर्सेस डिजीज का कैसे पता चले, ये क्वेश्चन सभी हम लोग काम कर रहे हैं। दैट अंकिता जो मेरी रिसर्च स्कॉलर आई है उसको मैंने दिए हैं। Till the inventory I have done with one of the student, one MD and one PhD, I have completed with the hospital because मुझे पेशेंट चाहिए, पेशेंट मुझे, हमें तो एक हेयर भी आप लोग टच करने नहीं दोगे, सर को सब कुछ दोगे, तो प्रॉब्लम हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। So we have to be friend with the medical community and we go and take samples। ये एक प्रॉब्लम है बेटा जो हम लोग जा रहे हैं पैथोजेनिसिटी जानने के। सेकंड, जो आपने कॉलेज को इंटरिम मैनेजमेंट की जो बात, इंटरिम मैनेजमेंट में हम जब ये ट्रेंड एनालिसिस, पॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन ट्रेंड एनालिसिस, सो लाइक आई हैव डन कार्बन फुटप्रिंट ऑफ दिल्ली सिटी,
दिल्ली को हम सेक्टोरियल एमिशन में बांटे थे. दिल्ली इज सच ए ह्यूज 1452 स्क्वायर किलोमीटर को आप कितना मॉनिटर करो. तो वी हैव क्रिएटेड सेक्टोरियल एमिशन मैपिंग. सिमिलरली एक कॉलेज का हम लोग जैसे आपको दिखाए सेक्टोरियल मैपिंग करते हैं जिसमें GIS यूज करते हैं. नाउ व्हाट आर द साइन, नॉट ओनली दिस अदर पोल्यूटेड मॉनिटर भी करते हैं. We can name a graded problem. Then we can tell principal are clueless to manage. Any administrative head is clueless to manage. Then we are helping them that आप ये डाटा इस जगह आपका रेड है, ये डाटा ब्राउन है, ये येलो है, ये ग्रीन है. तो आप सबसे पहले इस जगह को आप सावधानी से देखो. And children can go. I cannot tell don't go to cafeteria. But hanging around throughout the time is a problem. My only concern is the exposure. So एक बच्चे सारे दिन वहां पर ना बैठे, 1 घंटा गए खाना खरीदे बैठे तो चलिए देखे. So this interim management जिसको बोलते हैं, that we are planning with the colleges. Like one college is there, IP College for University for Women, very 100 years old college in Diu. So the similarly one principal को मैंने बताया, it's a very prestigious college. So they told no, I have no problem because they look very good, green. But this is a very bad location because it with the ring road highway. ISBT जो bus terminus is there. So I told that you monitor outside and inside. Find out the area where the entry of the problem is. आपके बगल में, because most of the cases people concentrate on the building, not the outside environment. अब उस कॉलेज के बगल में था पेट्रोल पंप, इसके बगल में ही है एक हॉस्पिटल. So footfalls are more. It's not only biology, chemistry and physics. It's a socio-economical issues. आप हॉस्पिटल को भगा नहीं सकते हो, पेट्रोल पंप को बंद नहीं कर सकते हो. That means you are having a zone of corridor जो कॉलेज के अंदर आ रहे थे. We are always telling that you have to make a planning कि उसमें filter और भी 2-3 the buffering zone बनाना पड़ेगा. With the height of the trees, these are all engineering aspects. So that should be interior architect will be different where the pollution entry will. ठीक है ना, ये एक मकसद में हम काम कर रहे हैं. School of Planning and Architecture engineers are also with us. Having a discussion, but convincing people is more difficult right now. I'm trying to have this. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for your remarkable work. It's now time to have a little break for lunch. All our esteemed guests and faculty members are requested to kindly move to the VIP lounge for lunch. We request you to return to the auditorium by 3 p.m. for the next session. That is, within the next 45 minutes. The students and participants who have procured the food passes may also move to the back of the auditorium for lunch now. It's important that you all return to your seats by 3 p.m. And it's a reminder that attendance will be marked post-lunch as well. So please make sure that you are on time and attend the whole of technical session 2 also. Thank you. You may all take a little rest now. Yes, Yes.
marker we use insect. हम लोग generally practical में ये करवाते हैं, तो like UG and PG student, हम लोग field लेके जाते हैं, we generally take the student, I'll show you all the thing in picture. आज हमें यहाँ पर simulated दिखाना है आप लोग को, as I'm not in that place. There's a two part. You have to go to the field, wherever it is. If it is your landfill site, your urban park, if anything, आप यहाँ पर जो park है आप चले गए, or other river side, then you make the compartment. Then you first find out a sample, representative sample. यहाँ पर representative samples में generally either water insect लिया जाता है, और in soil normal insect. In soil if you get क्या मिलेगा? Ant मिलेगा, bug मिलेंगे, earthworm मिलेगा, कुछ ना कुछ इस टाइप का. Although earthworm is not an insect, it is definitely, but those are the insects are moving at there. So यहाँ पर beetles मिलता है, mealybug मिलता है, तो hemiptera, these are the all insect general occurrence. कुछ अलग भी मिल सकता है. So now you are making a quadrant, and then you take the sample. Where you are having litters, you collect the litter because this is in the surface. And then where you have to take soil also. We all know that insects will be only biological fauna will be there if their humus is more or organic food is more. So if there are biological diversity is more, that means it will be less polluted. This is the indicator. If in the same streamline, if you're going and walking down the river, and if you find out if there is a 10, here is 2, again some place is 5, some place is 8, matlab, so sudden drop and sudden increase is showing that pollution level is different. So definitely we have to start the gradation of your management based upon that area from where it is the very low. So आप सारी जगह एक मैनेजमेंट करके पैसा ना खर्चा करके, इससे ज्यादा है, you have to make a graded response. So you have to find out the grade of 1, 2, 3, 4, 5 based upon the compartment, which area you will have having your action plan. The same way this year, as I'm a committee of winter emergency in Delhi, we are, along with the Chief Minister, we have done a graded response for Delhi. Winter is approaching. We all in Delhi. I'll tell kindly, आप लोग सुनो. मैं यहाँ पर ऐसे जिसको अच्छा नहीं लग रहा है, I have a request, please go outside. That will be more easier for me to discuss. मुझे ये problem होता है as a teacher. देखो हम teacher हैं, हम इधर हैं कि उधर मुझे पता नहीं है. जिसको अच्छा नहीं लग रहा है, it will be good for the other people to listen. So the problem is that once you are making, just like Delhi city, the whole Delhi is not a problem. Delhi ka graded problem hota hai. I mean, right now we have mapped with using AI. The AI we have used, उसमें heat map, pollution map बनाया गया है Delhi के लिए. That also you have to know that computer science engineers are all helping us. It's not that खाली biology वाले आए हैं. Computer engineers are coming. They are helping to make AI-based heat map and AI-based pollution map. Now, based upon this map, we have identified 13 locations in Delhi city. जहाँ से government को first action of the program शुरू करना. There they have started utilizing drone-based monitoring. There also we have a technology. We need technology to manage. Policy level, the important part, most of the thing you are not aware. पर आपको ये मोबाइल नहीं बताएंगे, बार-बार बता रही हूँ, हम बताएंगे जो कमेटी में जाते हैं, जो हम रिसर्च में काम करते हैं. आपको पता होना चाहिए, जनरल स्टेटमेंट ऑफ द स्टूडेंट कुछ नहीं होता है. दिल्ली में कुछ, ये देश में कुछ होने वाला नहीं है. सब बैग पैक करो और बाहर निकल जाओ. This is the thing. If you are not concentrating on the all discussion, not learning anything, तो कैसे सीखोगे, कैसे जानोगे देश में क्या क्या काम होता है. देश में काम हो रहा है, and वो गवर्नमेंट तभी हमें बताया जाता है कि आप जाके बताओ, this money they have given, tell us what government is doing for you and where you can come and understand and can tell other people. If someone is telling you no work is happening by Delhi, by the Indian government or state government, then you must know that there are work.
But you have to criticize also, you have to demand also. Because generally market run by the demand versus supply. So many, the elections are going on, not a single demand on the environmental issues, clean air, clean water, clean agenda नहीं था, कोई भी स्टेट में नहीं था. ये भी हमारे मिस्टेक है, बिकॉज हम समझते नहीं है, हमें कैजुअल एटीट्यूड है, हमें कोई फर्क नहीं होता है. जब हमें फर्क नहीं होगा पर हम ही मेडिकल कॉस्ट ज्यादा हॉस्पिटल में जाके देंगे. सो द रीजन इज दैट you don't have to be unever critics, you have to be ever critics. This is my request. This is the only reason I'm telling you. Graded response of every city is needed in terms of the air pollution and water pollution, because you are drinking the water. How many people, maybe you are from the good houses, middle income, high mid income, but you just try to understand the people, those are in the roadside, those are below economy level, they can't afford the coping strategy of the RO or other things. They are forced to drink this water, which is highly contaminated. Our health survey is going down for that reason only. So speciation is there. We take the sample, any sample, as a marker to understand which one is the good and bad. और कुछ नहीं, ये counting करते हैं. There's a number shows us कि beyond this level, this is a polluted stretch. If it is less than this number, it is a good stretch. So our graded response of government is there. When you give them, they go for action plan. Pollution is a major diversion of the biodiversity loss. Pollution, and जब भी आपको species कम मिलेगा, मतलब you are having 10 species था. You all know that biodiversity आज सारे दुनिया में काफी चीज है, जैसे डायनासोर, we all know that there was a dinosaur, now it was not available, हमें पता है. The orange orangutan देखे हो कोई? Have anyone seen orangutan anywhere? कहाँ देखे हो बेटा? हाँ? Thailand. So orangutan is very soon, due to climate change, going to abolish from this mother. इसके बाद तुम्हारी जनरेशन की जो बच्चे आएंगे, नेक्स्ट जनरेशन, वो पिक्चर में ही देखेंगे. ये शायद लास्ट जनरेशन तुम लोग हो, क्योंकि 50 to 60 orangutan is available throughout the world. And this is the reason is happening due to Amazon damage. Amazon forest, it was a mismanaged by the South America and Brazil, who is responsible for managing Amazon. जैसे हम green area को बोलते हैं lung of the city, Amazon is the lung of the world, global lung. ये lung हमारे वही lung की बात शुरू हुई थी. This lung we are killing. Ultimately, it's not that the people will die, all the animals. So they cannot come and tell you, but they are going to die. So there's an alarm call, is whole world is working. Children, students are working in USA, Canada to save the orangutan. वो orangutan के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने बारे में सोच नहीं रहे. This is the irony of our education system. We never feel that way. We have to be vocal. It's not that dependency to the senior people only. You have to be vocal. कल जब मांगोगे clean air of the city, clean soil and clean water, government has to force to come to this thing. Observation of the phenotypic change, कुछ नहीं, कोई research नहीं चाहिए, कोई dissection नहीं चाहिए. You can do this way. CPCB doesn't have biodiversity index, so it's only have a comprehensive environmental pollution. So there are scale, either 0 to 10 or 0 to 100, where we calculate in this CEPI, that is quality index, health क्या है. तो एक जगह का साइट ए का एयर वाटर सॉइल एक साथ मॉनिटर किया है, उसका इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है. आपका AQI is something, WQI is something and soil, then cumulative way you can grade. It is just like your result or mark sheet, that you are good, means good in all subject, not in one paper and second. Then you can talk about the ecosystem. It's a simplified method of non-biologist, and it is the difference stream pollution study, as I told you, and it used in the land also. You need 70% ethanol as a preservative. आप इंसेक्ट को पकड़ के कोई भायल में डालोगे, कितने बंदे इंसेक्ट से डरते हो? कौन कौन पकड़ सकते हो? Can you raise your hand? Okay. So most of the time, girls are frightening by the insect, but zoology वाले नहीं करेंगे, animal वाले. So इंसेक्ट को आपने ऐसे भायल में रखोगे to squeeze, तो इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में नहीं आएगा. So we use 70% ethanol to preserve the
इंटेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द थिंग. सो आप अपने फील्ड में जाते हो, उसमें एक सॉइल कोर काटर लिया जाता है, बिकॉज फर्स्ट सरफेस टू O, A and B प्रोफाइल होता है सॉइल का, जहां पर अपने यू मे गेट द डिफरेंट इंसेक्ट्स. सो यू जस्ट फाइंड आउट द हाउ मच इट इज पोल्यूटेड द एरिया. इट्स नॉट ओनली surface, below surface also, because below surface always create problem for the surface. So these are the things is available for calculating. pH is one of the things is very important, because if pH changes, there is a pH which is needed for the organism to survive, and also oven and balance. We are showing you the step. This is the quadrate formation. हम जब जाते हैं, आप linear लेंगे तो linear quadrate बनेगा. तो what first starting step 1 2, आप 5 मीटर तक अपना लंबा एक quadrate बनाए. Or if you're going to land, then you are having the step, the quadrate of squares. That can be 1 by 1, 2 by 2, 5 by 5, based upon the area you are going. Then the students are collecting the samples from there. Pale surface, if there's a foliar, because for the leaf litters are also can hide some insect, they are also a substrate. Then you are taking, so you are collecting leaf also. You are collecting normal the movement of the samples, and then you are having this is the core cutter. I'm not using any highly sophisticated instrument. This is a lab-based study you can do. ये core cutter is a dark pi r square and h, because dia है, height है. अब 10 सेंटीमीटर डालो, 40 सेंटीमीटर डालो. This is the way we take the soil core. Now, if you sample soil core within your quadrant, you mix up the soil, then you have a homogeneous sample of that area, and you can find out what type of samples are available. The insects are available, and you have to understand the insects are photo positive and photo negative. Some soils insects are always going down, so you will get the photo negative and photo positive. Some insects are transient. They are only coming for foraging. खाना खाने के लिए आता है, वहाँ पर रहते नहीं है. Some are resident, some are living here. So this is, if you are having a sampling in different times, at least 2-3 times in a day, you are going to get a good samples, and then you can come back to the lab. और कुछ काम बाहर में नहीं है. आप representative sampling को location map करके, if you bring the sample, then definitely you have a representative sample of your location. If you are, सोचो कि आपको नौकरी मिला है, आपको भेजा गया है कोई साइट पे, तब टीचर नहीं जाते हैं साथ में. आप कहाँ से शुरू करोगे? कैसे जानोगे कि polluted site क्या है? This type of practical I teach my student to be a worker in your future. तब को मैम फोन करेंगे कि मैम कहाँ से शुरू करूँ? Generally we have a dependency. So this type of very simple practicals of physics, chemistry, engineers. I must tell you, in my department, I teach MA and MSc Environmental Studies. So we get a student of history, geography, journalism, and most of the students are clearing the UPSC and their IS, IFS, and IRS. So I know them this type of thing. क्योंकि other time जब हम जाते हैं तो हमें बताया जाता है UPSC से कि आप लोग बच्चे तैयार कीजिए कि उसको जाके डिजास्टर साइट में नहीं बताना ना पड़े कि ये क्या प्रॉब्लम है एनवायरमेंट. तो the only thing I am requesting कि नौकरी आपका मकसद है तो आपको समझना सब कुछ पड़ेगा कि जॉब नेचर में आपको कब क्या बताना पड़े आपको पता नहीं है. Syllabus will not help you in your job. Getting job is important, but beyond syllabus आपको job nature में चाहिए. So you have to be holistic information rather than this. Now, you please look at the thing. I will ask you to come and one person at least do the thing here. Now, instead, as we cannot do the field practicals and sample with me, मेरे lab में सारी insect रखा है from the Delhi floodplain and other places. This is the sample. Now, you try to understand that we are bringing the sample in the lab. I'm starting from here. Please pay attention to the thing. जिसको picture खींचना है बाहर में खींच लो, वो आसान होगा वहां पर जाके. यहाँ पर जाके problem मत करो. You have samples. Now, how many samples are here? How many organisms are here? Total? मुझे कोई बताओ क्या लिखा है? Already, हाँ? 9. मतलब total 9 organism है. Species कितना है?
स्पीसीज कितना है? स्पीसीज कितना है? 3, किसने 3 बोला? वेरी गुड, 3. A is one species, N is one species, D is one species. ये इसको बता रही प्रैक्टिकल बेस्ड अपॉन द, तो इसमें से सोचो एक A फॉर एंट है, N है कोई एक मिलीबग है और कोई बिटल है, तो जो मिला आपको जैसे मिला लेके आ, इट्स नॉन टैक्सोनॉमिकल नॉन बायोलॉजिकल, आपको कुछ करना नहीं है, ट्रे में डालना है। एक कागज सोचो ये है, आपने लीनियर ऑर्डर में सजा रहे हैं। इफ यू आर picking up also you should not pick up by clustering them, नहीं चाहिए, जैसे हाथ पे आ रहे हैं this is the way, without segregating them you are arranging, इसको बोलते हैं random selection, you are random selecting the sample। अब 2 बार A वाले सैंपल आ गए तो आपने 2 बार सैंपल को बगल बगल में रखे हो। नेक्स्ट N वाले सैंपल, just for mimicking the thing, simulating the thing, I try to show you, N वाले सैंपल आ गया तो आप इसको 3 बार आ गए, उसके बाद अलग एक सैंपल आ गया, that is D, you are keeping D and it came 2 times randomly select करने से। फिर A आए single sample, फिर N आए single sample। Now this is the order you are arranging। Then one word is there known as run। रन इज मतलब दौड़ना नहीं है, रन मतलब जहां आपका पैटर्न सैंपल स्पेसिएशन चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट यू आर हैविंग, सो हियर वी आर हैविंग 5 रन्स। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस और नो? खाना खाने के बाद शुरू। यस, वेरी गुड, एटलीस्ट गर्ल्स शुड सपोर्ट मी। तो मतलब यहाँ पर जो है यू हैव 9 इंडिविजुअल, you have 3 species and 5 runs, so we have, this is the way we arrange the sample। ये तो सोचो सिमुलेटेड है, हम जब फील्ड से लाते हैं hundreds and hundreds samples, we first arrange them and then make the run arrangement। Similarly we are taxonomically भी दिखा रहे हैं, ऐसे ही होता है कि कभी यहाँ पर number of run is 6 and then you are the organism भागा, number of species 5। If any doubt, you can go with and you can find out। तो इस हिसाब से जब हम सजाते हैं, उसके बाद ऐसे बच्चे का ये प्रैक्टिकल सीट है, मैं इसको पिक्चर दिखाया कि बच्चे फिर उठा लेते हैं, फिर हम इसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन क्या है? दिस इज द फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। आपका जो वैल्यू आ रहे हैं वो 0 to 1 होनी चाहिए फॉर द नॉर्मल फ्रेश वाटर। एज ए रिजल्ट आपके क्या हो रही है, आपका सीवियर पोल्यूशन, इफ इट इज गोइंग मोर देन 1, डेफिनेटली 8 के ऊपर जाते हैं तो नेचुरली इट इज ए मोर, एंड इफ इट इज इन बिटवीन मॉडरेट पोल्यूशन एंड 12 के ऊपर जाता है तो बहुत सीवियर होता है, 8 के नीचे है तो इट इज बिलो 8। ये स्केल है, नीचे वाली स्केल है फॉर द वेस्ट वाटर एंड ऊपर वाली जो स्केल है दिस इज फॉर फ्रेश वाटर। सो द टाइप्स ऑफ द वाटर बॉडी और नॉर्मल लैंड साइट यू गो एंड फाइंड आउट, देयर यू यूज, आपको पता है कि अपने लैंडफिल साइट से सैंपलिंग कर रहे हो, और इफ यू आर गोइंग फॉर द अर्बन पार्क, इफ यू आर गोइंग टू वेस्ट वाटर और द कंटामिनेटेड रिवर साइड, एंड दिस इज द वे वी डू। मैं अब इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग we do moisture content also, we do pH। इसे क्या होता है कि we can understand the soil health। Now this is one problem I'm giving you। आप इसका 3 नंबर खाली नोट कर लीजिए, इसको करना है। तो SCI वैल्यू मैं एंड में आपको एक बार दिखाऊंगी, एंड यहाँ पर एक है, if anyone is volunteer they can come after my second presentation। You can do here, arrange the thing by your own hand। यहाँ पर इंसेक्ट की जगह हम लोग बीड्स लाए हैं, कलर बीड्स, they are representing the different species of the insect। So you can just for arranging and learn, a research scholar will help you, and you just collect, this is the sample data, calculate and give me। Okay, so is it clear from your side? Very simple, practical, nothing is severe। But आप ऐसे कहीं पर भी जाके if you want to do something health analysis,
You have this, naturally the scale, and based upon this thing is value calculation. You can tell that the soil health is good or bad, or you can make ascending and descending order understanding of the site. And the second few slides I'll show you another thing, that is the nano preparation. Here madams are all working on nano. I'm only doing nano for understanding zero waste management. I think Anita, you joined here. Anita? This green nanosynthesis is one thing. How many people understand what is nano means? Kitna more small? Within that. So, generally, we are very much habituated with the macro and micro, but nano is today's tool. We are using nano as a preparation of nano material, and which is actually having huge absorption and adsorption capacity. जीरो वेस्ट में ये हम दिखा रहे हैं कि नैनो मटेरियल सिंथेसिस की 3 मेथड है. One is physical method, the physicists are doing. One is chemical method, that is the chemistry people are doing, because nano everyone is doing research. Another is the biological method. हम दिखाएंगे biological method. मैं खाली demonstrate करूंगी, कुछ नहीं बनाना है आप लोगों को. ये real time बनता कैसे दिखाना है कि how it is we are making in the lab. Physical method, you are making small, creating a smaller structure by pressure. Chemically, definitely there are different methods you are using. And biologically, definitely we are using normal green material, but generally it is coming under the green chemistry, where waste is used for using the waste remediation. So we are using the leaf material, foliar material, and microbes also. So these are all can be your nano material substrate. So I'm again for the student not to make much bored. So I just want to tell you, just like I discussed the biological entity, microbes, fungi, bacteria, plant extract, anything can be a substrate of nano preparations. So here we made a plant extract. So now plant extract can be like, those are the plant, can be invasive plant, those are not needed. Up crop, agricultural crop ko nano nahi bana sakte ho. That you have to understand. Which is edible plant, you cannot make nano. Nano concept is that whatever is not usable, you make it as a tool where you use this thing nano, and then from there you use them as a or different types of biological treatment method. So here we make this type of nano with any metals are there. So there are iron nano, silver, there's a silver nano. There are a number of metals we are using to make nano, but biological method should be low cost. So we are using very abundant metal, that is iron. So iron nano is the mostly used method in case of biological solution, because physics and chemistry can do silver coated or platinum or other things. For them, it is a technological solution, but biologically, आप बस जब low cost solution आप दिखाएंगे, तब आप ऐसे कोई metal नहीं ले सकते हैं जो बहुत high costly material होंगे. And you have to remove the metal also from the technique ultimately, because you cannot leave any extra load of metal on the site where you are going for bioremediation. So you can find out the parts of the plant. So here I am using, Delhi is a hub of fashion and design, as you all know. So as I told you, our challenges, we have to find out Lucknow ka alag problem hai, Delhi ka alag problem. We found that Sonipat and Panipat, 2 cities are full of textile industries. They are using huge colorful dyes, acid and basic and azure dyes. And ultimately what happened? Water are highly conductive. We have given in MSc student, I am giving as an internal assessment, no MCQ, they are making documentary. I am giving a topic, they go, they choose their own place, and then they, as you know, there are many students from Haryana in Delhi University. So they prefer to go their own city, own place, and find out their challenge and problem. And I found that
when they create with the doctors up there and the people up inside, it was a huge sample they bring. They take the instrument from us, from the lab, they analyze the sample and they found the huge problem of their own groundwater and surface water. That was the concern created them to find out the solution, and many people are now coming for solution, asking for the solution of dye degradation. कपड़ा यहाँ पर बन रहा है, लैक्मे फैशन वीक में इतना ग्लिटरेटी हम देखते हैं, वॉक करते हैं, पर द पीछे का स्टोरी बहुत खराब. I must tell you. From their national fashion technology, they are asking us, "Ki madam, help us the color," because we all know we are very colorful people. India, always we want to wear colorful dresses, and ultimately it is one of the problems that colors and dyes are coming to bear. Beside other mechanical use of any colors in the paint, fountain pen, any other industries. So removal of heavy metals, and these are all places we are using this level. So all the issues, there are many problems. I'm not going on that part, rather I leave. For you, it will be too much. But dyes name we have listed. The health effects we have listed. Effects of the environment we have listed from different reports. You can't do alone. All the researcher we need help. We have reviewed the dye. So we found that EBT, erythritol black tea, acid fustian or basic fustian, these are the dyes that are mostly used in case of textile industries and other industries, which are the colorful potteries and other things everywhere. So any consumable item, those are highly colorful. देखो, if we compare internationally, उसके पास black, white ये सब ड्रेस ही ज्यादा पसंद है. इतना कलर नहीं पहनते हम जितना पहनते हैं. तो important मतलब we are using more dyes which are creating more health hazard. तो दिल्ली तो समझ नहीं पाते हैं, but those are the place it was there. So we have to work for them. So this is, I am showing you that EBT we have used. He has the EBT dye. दूर से मैं दिखाने के लिए थोड़ा सैंपल लाई हूँ. कोई भी स्टोरी जो मैं बता रही हूँ ये नॉर्मल मैंने डाउनलोडेड स्टोरी नहीं है, लैब की स्टोरी है. The people are working, children's lab working. She is doing PhD on this topic. So we are adding, making this color of the samples, and ultimately this dye की structure ये है. मैं अपने बच्चे हो अभी इतना ज़्यादा भी जानने की जरूरत नहीं है, but you have to understand it's a chemical compound, it's a highly toxic compound that we are using for only our own choice. No one is telling you कि आपको dye करनी पड़ेगी. पहले आपको है कि हर नुक्कड़ में आपको dye वाले बंदे मिलता था जो आपको कपड़ा dye करके देते थे. Now government is serious about this. Now they have banned the dyeing people ki you should not dye anywhere. So there are the authorized people that water is coming and mixing in our normal sewage water or normal drinking water place. So this is the chemicals required what we generally use. So these are the thing, conical flux, beaker, as you know, the water, these are the things are the typical chemical laboratory. Base instrument, many people you know, but I just try to tell you what you need, not very costly thing. You can have this thing, आपको थोड़ा magnetic stirrer चाहिए, आपको oven चाहिए, एक spectrophotometer और colorimeter चाहिए, and balance चाहिए. First thing is we are using waste to waste management. In Delhi University is a big university, as you know, we are having 2 campuses. We are having 88 colleges. So you can understand, iska symbol bhi hathi hai. We are having logo elephant. We make a fun that our university bhi hathi hai. Because itna bacche, itna students are coming every day. So we have almost, we can't manage. So we are having huge plantation. And there's a major problem in the campus is that is the leaf litter. प्लांट की बात की है, प्लांट लगाना चाहिए. तो सेकंड बात अभी तक बोले ही नहीं थी कि लीटर भी तो आएगा विंटर मंथ्स. आप मैनेज कैसे करें? If you are having proper composting site within the college, that's fine. Then all leaf litter should go, because this is also natural resource. Every green waste is a natural resource. इसको हम क्या करते हैं, लेके कूड़ादान में फेंक देते हैं, and as a result of this thing, ये anaerobic degradation में जाते, फिर ये air pollution भी करते, soil pollution भी करते. I have a folded hand request to everyone.
अपने पेरेंट्स को सिखाना, अपने घर में सिखाना, जितना भी सब्जी जब भी खराब हो जाते कुछ नहीं करना है, मिट्टी में गाड़ दो। Soil is there to take care of all biological things. आप फेंक के गड़बड़ करते हो. If you are just going and dumping in a packet, एक तो प्लास्टिक वाले पात पे आते हैं. Nothing you do. आपके mulches आए. All colleges they are doing जो घास जब रोलर जाते हैं तो ऊपर ही बिछा देते. Because Mother Earth has a capacity to take everything inside, and there is no contamination in the outside. सबसे mistake हम करते हैं कि इतना leaf litter, vegetable thing, fruits waste, we are all dumping on the thing and ultimately it is scattering everywhere. I must tell you, I'm not telling you only for the sake of my lecture. ये मेरी भी बाइटिंग था कि मैं जो बोलने जा रही थी तो पहले 3 फिंगर मेरे तरफ. I have started my own composting bin. और वो कुछ नहीं है, पहले मेरे बच्चे भी हंसे कि क्या कर रहे हो मम्मी ये, पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द टीचर्स. यू मस्ट हैव ए कंपोस्टिंग बिन जिसमें एक टैप लगाया कस्टमाइज, एक ब्लू कलर का जो डिब्बा होता है ढक्कन वाले प्लास्टिक की, ऐसे हैं. I trained my cook to have a vegetable separately and I keep the onion pulp, the peel and the orange peel separately. So I keep the in a balti in one bucket orange, because orange and the peel and the onion peel, if you are mixed with the composting, pH will change. So acidity हो जाते हैं तो pH नीचे आ जाते हैं. Your composting organism will not work. हम गुड़ के साथ वो अलग से भिगो के रखते हैं, वो जो पानी छानते हैं पौधे में दे देते हैं. Excellent enzymes, I must tell you. Excellent enzymes. आप सारी महीने का onion, the peel and things you keep there and you just make this 1:1 ratio उसमें गुड़ के साथ करके आप दोगे. This is an enzyme. And this, the vegetable and waste I keep in the composting bin. I add coco peat just to not the water should come out. So I put in a week, I put a coco peat powder there. And the excellent compost come out, I stop buying any manure for my plants. And I don't have land, being in Delhi, I can't. I have few buckets, the gamlas, and I'm telling you they are flowering based on this, my own prepared. इसमें मेरा कोई time नहीं जाता है. So important part is they're channelizing the resources. We are dumping, फिर waste अब solid waste की problem बना दिया अपने घर का कूड़ा. ये थोड़ा सा जो है, मैं बार-बार बता रही हूँ, train your mother, train your sister, train yourself in your hostel, कहीं पर भी करो. बार-बार ये नहीं है कि only ladies की काम है. As I'm telling you, take a girl or boys साथ में मिल के करो, and please have the biological thing, research तक जाने का जरूरत नहीं हो. So leaf litter, you saw we have collected leaf litter from different campus, from North Delhi and South Delhi colleges, brought them, dried them, making them powder. ये हमारे substrate बन गए. Because my option is there, and this is the thing I just brought, this thing. And then उसके बाद इसको boil करते हैं बीकर में. इससे 60 ग्राम लिया, आप देख रहे हो. इसको बीकर में बॉईल करते हैं. बॉईल करने के बाद इसको थोड़ा सीप करके रख देते हैं, तो एक्सट्रैक्शन इज कमिंग. एंड देन इसके बाद ये सब मेथड है. इसमें डालने के बाद आपका एक फेरिक क्लोराइड इज द वन थिंग मेकिंग हेल्पिंग फॉर नैनो प्रिपरेशन, नैनो पार्टिकल. सो ये इसके बाद जब ड्राई करेंगे एंड अल्टीमेटली ये जब पोस्टल एंड पेस्टल मोटर में आपने ड्राई करोगे, धीरे धीरे पाउडर बन जाते हैं सूखने के बाद. So this is the step. If you just skip the step, आपको ultimate product क्या बना? Nano particle. This is the nano. तो leaf litter यहाँ तक आ गया, तो मैंने वॉल्यूम के हिसाब से इसको हम लोग कंट्रोल कर दिया. तो इतना जब हमने leaf litter जाके फेंक दोगे, so you can understand either you managing your composting pit, fine. I have no issue because we are also working with MCD, not campus zone. तो MCD का अपने capacity है to manage the whole load of leaf litter during winter months. So that means our suggestion is that you can go with the physical management, chemical management. Chemical तो हम नहीं चाहते हैं. Green synthesis. आज सारी government is asking about this solutions of the thing. You come with the green synthesis. So this is the way you can make nano, and this nano can use for
एनी अदर पर्पसेस। हम यहाँ पर डाई डिग्रेडेशन में यूज किए हैं, इसके मतलब खाली डाई नहीं है, इट कैन बी गुड एब्जॉर्बर लाइक एक्टिवेटेड चारकोल। आप इसको यूज करो, इसको आप सॉइल में फैला दो, कुछ नहीं करना है, उसको बना के अपने सॉइल में फैला दो। आयरन ही तो है और ऑर्गेनिक मटेरियल है क्या इसमें? हम लोग इस हिसाब से इसको एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना रहे हैं। The second step we have done with that, this is the EBT solution, आपको दिखाने के लिए लाए हैं, and from her research I bought the sample कि this is not a falsifying or neither I am doing। ये एक थी, with a time धीरे 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 इसका कलर चला जाता है। तो हमारे दो टारगेट हो रहा है, एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। So this is the way we do the absorbance calculation, we make the thing कि एक लिमिट होगा, उसके बाद ये और काम नहीं करेगा, फिर remove the thing, again we add the different types of solution। So this is the table we are getting that कब इसका different color। So आपको ये ज्यादा भारी लगे इसको समझना नहीं है, only thing is that the amount of concentration and the removal efficiency, because any wastewater will accept you any technology when you are having 85% minimum removal of the problem। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका removal beyond 85% है। So this is the way we are now standardizing, we are trying to make it much more acceptable, and this is the way DC has done the study, and she was working that it is coming back, and from there she brought that sample। So this, thank you for this program, यहाँ तक है आप लोग को समझने के लिए। अब कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, और ACI कोई करना चाहते हो, samples are there, anyone is interested, any teacher, student, anyone can come। Thank you, ma'am. Thank you, Professor Chirati Bose ma'am, Ankita ma'am, and Anita ma'am. Next, we move on to our next demonstration. It is an honor to introduce our very own esteemed faculty member, Dr. Upasana Yadav ma'am. As an act of appreciation, I request Dr. Ghosh to kindly come forward and present a planter and memento to Dr. Upasana Yadav ma'am as a token of appreciation and gratitude. Please give a huge round of applause. Ma'am, thank you for very, very nice lecture. First I was sitting there, then I shifted here because I was not able to see the slides properly. Okay, so ma'am, just out of curiosity, I am asking you a few questions. How do you choose the area for core cutting? Because in step 4 you used core cutting. So because if there is a land, so amount of contamination or pollutants can be different in different areas. So, in what is the? It's very important. Most of the time, people are not giving attention to the sampling. I am giving more importance to the sampling rather than lab-based analysis in this program, because I found our generation has more ideas about field. जो आज की generation ज़्यादा they are sessile, they want to work in the lab. तो उसके लिए field sampling बहुत important होता है.
एक जो क्वेश्चन आपके थे कि बैठिए ना मैम, just like I'm going, as I told that this is a practical for the non-biologist or non-experimentalist, they don't have to know. Generally हम लोग कहीं पर जाते हैं तो पहले एक GPS mapping, GIS mapping करके जाते हैं. What are the problems are there? What are there? So we start with actually geology and geography, then we come for this thing and survey. But for it, randomly when you are going, I'm sending a person that go and find out the site, how it is good or bad. कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग monitoring. So then this type of जब name stage से we are starting, then definitely we target whom we are targeting. Here as I told you that we are targeting insect. कभी होता है तो हम लोग फिश को भी मार कर ले सकते हैं वाटर बॉडीज में. कभी होते हैं तो हम लोग एल्गाई को भी ले सकते हैं. Marker can be anyone. I can be marker. You can be marker. Biological system में anyone can be marker. So if insect easy होता है, कोई बच्चा आए नहीं तो करके एक बार देख लेते तो अच्छा समझ में आ जाते जो भी है. The things are there that insect is easily available. आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा. हर सीजन में कुछ ना कुछ इंसेक्ट घूम रहे हैं. That we all know. कुछ मैक्सिमम अवेलेबल है जैसे एंड जिसको बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज, वो रहेगा ही रहेगा. और सबको पता होना चाहिए कि टर्माइट एंड एंट किसको मारना चाहिए किसको रहना चाहिए, तो बता दो मैम को बताने के पहले. एंट इज नीडेड फॉर द सॉइल और नॉट. यस मैम का मतलब किसको चाहिए, एंट को टर्माइट को किसको चाहिए, अब दोनों को ही चाहिए. टर्माइट को मैम बोले मारना चाहिए, तुम लोग बताओ मारना चाहिए मैम. अच्छा, टर्माइट को भी नहीं मारना चाहिए. The both are keystone species because any semi-arid soil you are having, they are the subterranean, नीचे जाते हैं perforations करते हैं. नहीं तो जहां पर canker like soil हो जाते हैं जिसका perforation कभी नहीं हो पाएगा until unless टर्माइट रहेंगे. जब तक ना टर्माइट ये परफोरेशन नहीं बनाएंगे अदर ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स एंड द एंट विल नॉट वर्क. दे आर वर्किंग विद अ पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर. टर्माइट नीचे वो छेद बनाते हैं, एंट जाते हैं, पत्ता काटते हैं, फिर द माइक्रोब्स आर स्टार्टेड वर्किंग. सो दिस इज द वे दे वर्क. दे हैव अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड एंड इफ यू कभी वीडियो भी देख लो अच्छा लगेगा, तो समझ में आएगा हमारे से ज्यादा एआई तो उसके पास है. हाँ क्या बच्चे का भी रूप है, वेक्टर है. There is a paste we know, you cannot kill the thing. बिना paste you cannot know that because everything, एक तुम्हारे लिए वो paste है, किसी के लिए वो हर्बल है ना. वायरस और बैक्टीरिया तुम सब मार नहीं सकते हो, उसके लिए वो this is the carrier. So all organism are living. नंबर ज्यादा है तो हम तो जाके रह रहे हैं ना, गंदगी मचा रहे तो मच्छर आ रहे हैं. मच्छर तभी आएगा when you are not managing it. And climate is another. Okay ma'am, so once you are having any site, we go with surface and subsurface. Our plantation आपको देखना पड़ेगा and site of the contiguation. If you are having landfill, definitely your core cutter depth will be much higher because contamination will be much deeper nearby landfill or ढलाव कुछ रहेगा. But if you are normal surface problem, तो हम लोग 40 सेंटीमीटर तक restrict रखते हैं because we know the organic materials are there. So the organism or humus are there, तो organism will happen. आप जितना नीचे जाओगे इतना प्रोफाइल वर्टिकल प्रोफाइल बना सकते हो, पर basic as I told you, it's a basic understanding the site of the problem which is surface loading. सरफेस के लिए हम लोग 40 सेंटीमीटर तक खोद को डालते हैं, 10, 20, 30 ऐसे सॉइल अलग अलग ले आके हम लोग कंपाउंड सॉइल बनाते हैं. क्योंकि 10 में कितना है 20 में कितना, एक आप पानी किसे करो as a researcher that is different. And for the again a normal pilot study, we create a sampling, we mix the sample till 40 centimeter, then we target that maximum abundance will be there. नीचे रह सकता है तो ज्यादा photo negative point, तो लाइट से भाग के जो इंसेक्ट नीचे चलेंगे. तो this is the way we at least try to find. They get subterranean termite can go almost 5 feet also, 10 feet also, 20 feet. आज हमारे घर में जो टर्माइट आते हैं मारते हैं, पर वो हम टर्माइट के घर में गए हैं. This is their domain. हम लोग वहां पर गए हैं, so they are infecting this the way because हम बेसमेंट नीचे बेसमेंट B1, B2, B3 जा रहे हैं.
तो किसके घर में हम जा रहे हैं? वो हमारे घर में नहीं आ रहे, तब हम लोग उसको पेस्ट कंट्रोल करते हैं. So basically they are going much deeper. Termite is going much deeper, but not the all surface of the insects are there. It means that soil pollution will not affect the underwater. If we are not dumping or if we are not creating this problem, that or groundwater is clean. आपको तो soil बीच का है ना, it's a skin of the earth. तो ऊपर से भी ना प्रॉब्लम करे, नीचे से भी ना करे, तभी तो सॉइल ठीक रहेगा. आप सॉइल में डंप नहीं कर रहे, पर आपका पोल्यूशन वाटर इज, आज गोमती रिवर तो खाली गोमती रिवर प्रॉब्लम नहीं है, all groundwater, ground soil also contaminated. So that means whatever is coming from bottom also will be contaminated. Yeah. Ma'am, you were talking about the nanoparticles. Actually, I was interested in nanoparticles. So, the green synthesis, biological nanoparticles, basically. So, are they stable outside their microbes also? माइक्रोब्स नैनो मैंने नहीं बनाया, जो नहीं बनाया उसके ऊपर मेरे राय देना ठीक नहीं रहेगा. पढ़ाई के ऊपर जस्ट पेपर पढ़ती हूँ. बट ग्रीन नैनो जो हम लोग ग्रीन टी का भी बनाए, बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट रिच है. We are making now, we have gone to the leaf litters. They are all stable. We are using 2-3 उसको निकाल के ड्राई करके फिर यूज करते हैं. हमें देखना है कि लाइफ साइकिल ऑफ द नैनो, how many times we can use them in the treatment system. अभी हम लोग CBA में गए हैं, cost benefit analysis, and बच्चे अब कितना कर पाएंगे देखते हैं, जो भी है हमारे, कि we want to make a LCA and CBA analysis. एक पर्टिकुलर के लाइफ साइकिल कितने बार वो यूज कर सकते हैं हम लोग, एंड कॉस्ट बेनिफिट जितने बार ज्यादा होगा, कॉस्ट बेनिफिट भी उसी टेक्निक भी ज्यादा होगा. वो हम लोग अभी देखना है बच्चे के साथ. तो मैंने तो माइक्रोब्स नहीं यूज किया, बार बार बता रही हूँ. मैंने प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, मैंने ऑरेंज फील्ड से किया, मैंने कॉलीफ्लावर इस पर मैंने सब्जी मंडी की हुए से किए, मैंने ग्रीन नैनो, अभी तो मैंने लीफ लिटर से करा. हाँ, माइक्रोस में वही होगा, आपने बना के उसका एक एकदम. एंड वी आर मेकिंग स्कैनिंग आल्सो कि उसका कितने बार स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं. एमोर्फस बन गया, उसको ब्रेक हो गया स्ट्रक्चर, देन यू कैन नॉट गो ऑन. तो क्या होगा जब डिस्ट्रैक्टेड हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो हम लोग स्कैन सेम एंड टेम भी करते जाते हैं उसका इंटैक्ट स्ट्रक्चर रह रहा है कि नहीं. सो आफ्टर गोइंग थ्रू देन वी कैन यूज एज अ थिंग. तो स्पॉन्ज के जैसे यूज हो रहा है ना, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं. थैंक यू. Thank you, professors. Please give a huge round of applause, everyone. Dr. Yadav from the Amity School of Applied Sciences at Amity University, Uttar Pradesh, Lucknow campus, is a distinguished scholar and assistant professor whose academic journey exemplifies excellence and dedication. Her academic credentials include a BSc in Botany, Zoology and Chemistry from Lucknow University, an MSc in Biochemistry, an MTech in Biotechnology from IET, and a PhD in Biotechnology from Amity Institute of Biotechnology, Amity University, Uttar Pradesh, Lucknow campus. She also serves as the coordinator of the Eco Club at Amity University. Today, Mr. Yadav will be presenting an insightful demonstration on air pollution and climate change in Lucknow, a growing health crisis. Without further ado, please join me in welcoming Dr. Upasana Yadav ma'am to the stage.
Thank you, students. As you all know that many things have been discussed from the morning. So my topic, as you all can see, wait a minute. My topic of presentation, as you can see, that air pollution and climate change in Lucknow are growing health crisis. So I am not going to discuss whatever the things have been discussed already. I'm going to tell you majorly the Lucknow, the problem actually it is facing due to the climate change and the air pollution, and how can you manage such problems and make your city a smart city. So first of all, I want to introduce this climate change refers to a significant long-term changes in the global climate pattern. This is very important because you are always confused what is air pollution, what is climate change. So it's a long-term changes in the global climate pattern, particularly rise in the global temperature, shifts in the weather patterns and other extreme weather events. So it means that due to air pollution, the global warming has occurred and global warming has persisted for many years, and that has resulted into a climate change problem. And climate change is, what is it causing? It is aggravating the problem of air pollution. Whatever the problem, mostly the air pollution is causing the health diseases, or it is affecting all the environmental biotic factors. But the problems have aggravated due to climate change. Reports of IITR Lucknow states that from 2021 to 24, persistence decline in the air quality of Lucknow, and due to which and majorly the sources are vehicular and rising fuel consumption. And this has been discussed earlier also. So I want to show you this very interesting slide, which states that in future, by 2030 and 2050, what will be the weather change pattern due to climate change? You can see that the temperature has been increased by 1.5 degree. It would increase by 2.5 degree by 2050. And summer temperature that has exceeded to 42 degree, it would increase by 4 to 5 degrees in summers. Nighttime temperature has increased by 2.2 degrees centigrade and continued to rise in the nighttime temperature. This is also due to island effect. And annual rainfall decreases by 10%, but relatively stable but more intense event. This is very important to note. Now, extreme rainfall event. This is due to the climate change. Increased 25% since 2000. Increased 30 to 40% by 2050. Now, as already been discussed, that this PM 2.5 level increases during winter seasons, and it is causing a lot of health problem. So I will after the winter season, these pollutant mix with water and fall down into the soil and to the water bodies, again create problem to the aquatic and the soil microorganisms. Now you can see this pattern. It's very well showing that how the PM 2.5 level increases in Lucknow from January to February, and then it becomes stagnant, and then again it increases from November to December. Now these reports already sir has showed that many places in Lucknow the AQI level has increased. Again, this is a news from Times of India that 2nd November, that is Saturday, was considered to be the highest AQI level was seen. Now these are the hotspots where the AQI level was high. Now there are some few events, like I told you that this climate change is aggravating all the these climatic factors, like increase in the rainfall is causing, the intensity of the rainfall has increased. Rainfall was occurring earlier also, but the intensity has been increased, and therefore which is causing flooding, and that is causing huge loss to the infrastructure, agriculture and public health. Rivers like Ghagra and Rapti frequently overflow, and which is impacting to the agriculture, infrastructure and local communities. Now, again, the season pattern has been changed and due to heavy pollution and due to climate change. Now, prolonged dry spells have been observed in the regions of Bundelkhand, where the drought conditions have become more common. This arid trend poses a risk to agriculture, water resources, and raising concerns to the about future food security, viability of traditional farming in the state.
So rising temperature across Uttar Pradesh has been observed with an increase of 0.7 degrees centigrade from 1901 to 2018. Now this warming again, I will tell you that it has increased the severity of the heat waves, prolonged droughts and variable monsoon pattern, leading to agricultural stress, impacting water availability in urban and rural regions. Now, heat waves, what is the effect of heat waves on air pollution? Increased ground level ozone formation. This is very important fact. And higher temperature accelerates the chemical reactions that create ground level ozone formation. During the heat wave, the sunlight interact with pollutant from the vehicles, such as nitrogen oxides, volatile organic compounds, and intensifies the ozone formation. Now, ozone is not a healthy gas, and it causes large harmful impacts to the human beings, especially it is aggravating the asthma and other lung diseases. Now, heat waves often accompanied by the stagnant air, where the minimal wind movement traps the pollutant near the ground and create high pollution concentration in the urban areas. Without wind to disperse emission, pollutant like PM 2.5 and PM 10 and nitrogen dioxide accumulate, reducing the air quality and increasing the health risk for the residents. Now, due to the, again, increased temperature, increased energy uses and emission, wildfire risk, intense heat and dry condition is associated with heat waves can lead to forest fires. Now, which releases large amount of particulate matter and toxic gases like carbon monoxide into the air. Now, this wildlife fire smoke can spread across large area, worsening the air pollution and posing respiratory and cardiovascular health risk. Now, air pollution has affected to the crop yield also in UP, and so air pollution has detrimental effects on vegetation and crop yields. Higher concentration of pollutants such as nitrogen oxides, particulate matter causes stunt plant growth, reduce photosynthesis, make plant more susceptible to diseases. So you can see that not only the human beings, plants are also affected by the air pollution. Now, as earlier also discussed, that burning of crop residues after the post-harvest session, causing the particulate matter increase in the air, and which is causing a lot of problem to the local peoples and affecting the quality of soil and water resources. Air pollution can also disturb the reproductive system of crop, leading to reduced yield. Now, it also reduces biodiversity. The air pollution is also reducing the biodiversity. The presence of high level of particulate matter gases such as ozone can interfere with the ability of the bird and insects to navigate or find food. Air pollution contribute to the urban island effect. This effect we have seen this time in the summers, where the cities like Lucknow experience higher temperature compared to the surrounding rural areas. So what is urban island effect? Anybody know? Can what happens in this during the daytime, since you know that in the urban area all are concrete land buildings and all are made, very less vegetative areas are present. So what happened during the daytime, all these these concrete buildings absorb the heat, and in the night time they radiate that heat, and that increases the temperature more. This is known as urban heat island effect. This further exacerbate the environmental stress, leading to loss of biodiversity. Many species have been lost due to this and shifting of ecosystem to the less suitable areas. As already discussed, I will not discuss much more on because already sir Surikant sir have discussed that lot of majorly the respiratory and cardiovascular diseases. As sir has already told that in 2020 alone, the Lucknow population was associated with about 6,700 premature deaths, equivalent to roughly 18 deaths per day. Now, COPD, it has been approximately estimated that 200 to 300 COPD deaths annually in Lucknow, particularly individuals over 50 years of age. So this is big data. Again, then long-term exposure to high level of PM 2.5 and benzene is linked to increased lung cancer. Studies indicate that air pollution in Lucknow contribute to about 50 to 100 lung cancer deaths per year. Now, heart diseases, again, the exposure to the pollutant like NO2 and PM 2.5 significantly increases the heart attacks and cardiovascular issues. And we can see that about 500 to 800 deaths annually attributed to air pollution and cardiovascular conditions in Lucknow.
Now stroke-related death again accounts for 200 deaths each year in the city, Lucknow. Impacts of children's, as already discussed, that children in the Lucknow particularly vulnerable, the children and the old age people are most vulnerable population, and due to air, and they got respiratory infections, developmental delays, becoming more prevalent. Air pollution has been linked to increased school absenteeism and long-term developmental issues in the children. Now, mental health, this is also very important, and I have seen myself such cases. Emerging studies have found that prolonged exposure to the air pollution increases the risk of mental health disorders, including anxiety, depression, especially to the vulnerable population like elderly and children's. Mortality, this I have discussed. Premature deaths, we have discussed earlier, challenges and limitations. So the city growing population is a very big issue, and resulting in a higher demand of transportation, energy and resources, all of which contribute to the worsening of the air quality. Now, NCAP program promoting clean fuel, increasing green cover. However, these measures have been limited in scope and effectiveness. Despite of the efforts to address air pollution and climate change, Lucknow faces challenges in effective policy implementation due to lack of enforcement, inadequate infrastructure, and limited public engagement. Additionally, economic constraints hindered the transition to cleaner energy and transportation solutions. So these are the challenges why we are not able to cope up with these pollution problems. So there are some strategies I'm going to discuss in quickly. Comprehensive waste management. So this efficient waste management system such as widespread recycling program, composting initiatives can reduce the amount of waste that end up in the landfill site. Just now ma'am has discussed very well. Because it contributes to the production of greenhouse gases, majorly the methane. Now, circular economy. This is very important factor. Encouraging the circular economy where the materials and the products are reused, recycled, and repurposed can help to minimize the waste and reduce the environmental impact on urbanization. This also lowers the pollution level, especially from the industrial and manufacturing waste. Now, climate resilient infrastructure. Incorporating the climate resilience into the infrastructure design, such as flood resistant buildings, stormwater management systems can help to prevent the worst impact of climate change. Now, stubble building, as already discussed earlier also, quickly I will discuss air pollution, stubble burning, soil degradation. How soil degradation? Because by stubble burning, we are destroying the organic waste, which is going to give a good compost. Now, by burning, a large amount of harmful gases are released, which causes the health risk. So how can we prevent such stubble burning? By education, providing farmers with information, training on sustainable waste management, financial incentives should be given, offering subsidies, tax benefits, other financial initiatives to encourage adoption of green solution, technology supports. As because farmers, we have to give them all these kind of support, and then we can prevent the stubble burning. Assisting farmers with access to equipments and technology, implementing suitable practices, sustainable practices, collaborative efforts. In the environmental, no problem can be solved by a single person or a group of person. Everybody has to be involved. So collaborative efforts, partnering with the local authorities and stakeholders, fostering collaboration between farmers, local authorities, and environmental organizations. So all have to collaborate, coordinated actions, implementing the coordinated region-wide policies, initiative to address the stubble burning issues, funding and resources. Securing necessary funding and resources to support sustainable farming practices. Now, strict pollution control regulation should be there. Stronger enforcement of laws means the punishment should be given those who are not, those who are creating the pollution. In situ crop residue management. There are some technologies by which the farmers which can adopt and prevent the stubble burning, like happy seeder technology. This machine enables farmers to sow the next crop like wheat directly into the residues of the previous crops like paddy. This machine cuts and lifts the straw and allow the sowing without the need of burning the stubble.
This reduces the air pollution and help in maintaining the soil health by retaining the organic matter in the field. Now, second method is super straw management system developed by the Punjab Agricultural University. The system involves chopping the straw into small pieces and spreading it evenly across the field. This helps to crop the residues into the soil and enhancing the soil organic matter and preventing the need for the burning. Now, crop residue incorporation. So we have all the technology, but we have to coordinate. So these are some crop residue incorporation. This technique involves using of agricultural machineries like rotavators and mulchers to incorporate the crop residues into the soil, where they decompose naturally and enrich the soil, improving its structure and nutrient content. Crop residual animal feed, we can use that for the animal feed, composting and mulching. Now there is again this Pusa decomposers is a microbial solution developed by the IARI, that is Indian Agricultural Research Institute. This solution speed up the decomposition of crop residues and allowing the farmers to incorporate into the soil without need for the burning. This technique is gaining popularity, especially during the paddy wheat crop cycle. Now, use of biodecomposers. Various microbial formulations and biodecomposers are available, being promoted to break down the residues which can be used for the organic matter and the compost. That will increase the soil health and will not create the air pollution. And the need for the synthetic fertilizers will also be reduced. So, in case of Lucknow, we require a green infrastructure for the pollution control, improved urban planning for the Lucknow. A comprehensive approach is needed to create more reliable, eco-friendly city. So how can we do that? Reducing the urban runoff with the nature-based solutions, bio-walls, vegetative drainage channels that slow and filter the storm water runoff, reducing the impact of the local waterways, permeable surfaces, porous pavement. This is very important. Porous pavement and pavers that allow the water to infiltrate and grow and infiltrate the ground and reducing the surface runoff. As you know that most of the rainwater is going to the sewer water in Lucknow city. So it can be prevented. Rain gardens, shallow depressions planted with native species that capture capture and store the rainwater, preventing the pollution runoff. Enhancing the air quality through vegetation and green spaces. We have to make some green spaces in every area. So what will they do? They will capture the particulate matter, oxygen production, and urban cooling. So we have whenever we plan any, for example, we are planning for any kind of Gomti Nagar हमारा जो भी planned होता है या अगर हमारे और भी colonies बनते हैं तो हमें ये सारी चीजें incorporate करनी है for sustainable development. Creating greener spaces again, urban forest, neighborhood parks, rooftop gardens. Expanding the public transport. How? Integrated network, ensure the public transport is accessible and affordable for all residents. Reduced emissions, promote the use of electric and hybrid vehicles, and multimodal hubs. Development of multimodal transportation hub that seamlessly connect different modes of public and non-motorized transport. Now, this is very important. Promoting the non-motorized transport. During presently, there is no space for the cycles to, it's full of cars and vehicles, other heavy vehicles. So we have to give a pavement for the cycles. Promoting non-motorized supports like pedestrian infrastructure. Those who want to walk, they should be a space, bicycle network, and traffic calming. Means that implementing the traffic calming measures such as speed bumps, reduce speed limits to prioritize the pedestrian and cyclist safety. Again, the strict regulation is important for the industrial emissions, monitoring and reporting penalties and incentives, enforcing the construction dust. In Lucknow, a lot of air pollution is due to the construction site. So mandatory dust suppression, site monitoring, penalties for non-compliances should be followed. Real-time air quality monitoring crucial for the rapid response. So if you want to make your city smart, so you have to adopt such measures like sensory developments, installing network of air quality sensors throughout the city to collect the real-time data analysis, continuous analyzing the sensor data to identify the emerging pollution trends and hotspots, rapid response, quick and mobilization of resources to address the high pollution level and minimize the health risk.
strengthening the local authority enforcement capacity, regulatory framework, ensuring the robust set of air pollution regulation and guidelines that can be effectively enforced, training the resources, providing the local authorities with necessary training, equipment, and resources to monitor the air quality standards, coordination and accountability, establishing clear lines of responsibility and coordination between the local and national agencies for the air pollution management. Increase collaboration between local and national agencies. So every data sharing should be there, joint planning and coordinated enforcement. Sustained progress through the robust environmental law enforcement. Many, just now I have organized a conference on environmental law. So it's very important that the law should be always updated. Comprehensive legislation, rigorous enforcement, public engagement, and technological advancement. So I would like to conclude my presentation that we can improve our city air pollution conditions and make the city smart by the awareness programs, adopting whatever the measures given by our scientists and doctors, and for example, encouraging the use of air purifiers, cleaner energy alternatives, and use of eco-friendly practices help to improve the air quality. Now, community engagement is very important, engaging the citizens to take actions, work together toward the cleaner air and create a sustainable and lasting impact. Thank you. Thank you, madam. Any questions for ma'am? So I have given the summary of all the new. Before all of you come for question now, I just want to say, whatever you see started with a full house. Now slowly, this is the condition of science and technology of India. That धीरे-धीरे सबका जोश खत्म हो जाते हैं. पर मुझे ये लगता है, ये जोश मुझे चाहिए, जितना बंदे हैं, इसके अंदर वो जोश रहना चाहिए. मुझे नहीं चाहिए नंबर. I'm not unhappy. I'm going with a very fresh and very happy mood. मुझे एमएटी का वो बच्चे चाहिए जिसके अंदर वो जोश है ना. मुझे वो नहीं बच्चे चाहिए जो सर्टिफिकेट के लिए क्लास में आते हैं. I'm very happy. At least you are sustaining the pressure of whole day, and now you are still batting us. Now this is the end. Now हमारी बारी हो गया. जो पैसा दिया इतना ही होता है. इसके बाद नहीं होगा. Now मैं am coming in my mood. So this is my way to take class. अब मैं कुछ नहीं कर, अब तुम लोग को करना पड़ेगा. ऐसे नहीं मैं जाने दूंगी. आज सारे दिन खाना खिलाया, मैं तो कुछ चाहूंगी आप लोग से. कुछ तो क्विज है सारे दिन के जो प्रोग्राम, कुछ कीवर्ड्स है. I will ask you. इसके लिए फ्री में नहीं लेती हूँ मैं. कुछ बच्चे के पास कुछ शीट पेन है, नॉर्मल पेन नहीं. जो पेन आप जाके यूज करने के बाद गाड़ दो तो उससे पौधे उगेगा. You know. So I brought a pen. How many pen you can earn? That is one challenge I am giving you right now. And the questions are ready with the student. And before that, I just try to tell you कि मैं आप लोग खाली दिल्ली के बारे में सुनते हो. दिल्ली is a capital. मीडिया सारे हमारी तरफ पे कैमरा लगा के बैठे हुए हैं. I told मैम कि आप आओ लखनऊ सिटी लेके. ये नहीं है कि दिल्ली खाली खराब है. Delhi badnaam hai wo. I know everyone is blaming Delhi. But I must tell you, Delhi is a known and monitored under surveillance. हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ रहते हैं, हम अंडर सर्वेलेंस है. दिल्ली में जो प्रॉब्लम आप सुन रहे हो कि ये हमारे नोन फैक्ट हो गया. Now people are aware. Even the small uneducated, the unauthorized colonies or the झुग्गी झोपड़ी वो भी आज एयर पोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं. I don't know, not only go to the college and universities, I go to the IIT दिल्ली में जाने के बाद ही वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में प्रोग्राम है. So I go to this brilliant people like all of you, but I also go to the Sunday मैं जाती हूँ झुग्गीज में. You know, this is more challenging. कि आप कौन सी भाषा में समझाओगे? आप तो इंग्लिश में समझ गए सब कुछ. तो हमें समझाना है थ्रू नुक्कड़ नाटक. हमें समझाना है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑन देयर बाइलिंगुअल. मैं बंगाली होके जितना हो सके हिंदी बोलती हूँ कि वो समझ जाए मेरी हिंदी. तो इम्पोर्टेंट होता है कि वो आई फाउंड दे आर मोर सीरियस. दे आर मोर सीरियस. ये जो
डाउन हो गया है ना पॉपुलेशन सुबह से, वहां पर नहीं होता है। मैं देखती हूँ शाम तक और आ जाते हैं मेला जैसे। द चिल्ड्रंस ऑफ दिस पीपल आफ्टर पैंडेमिक, बिफोर पैंडेमिक वाज नॉट दैट रिस्पॉन्स। After pandemic, I found that people are more they're starving for the information. क्योंकि उसको समझ में नहीं है कोरोना क्या है, वो तो कोरोना बोलता है, तो कोरोना है क्या, कैसे होता है, कैसे बीमारी होते हैं, हमारे सांस क्यों फूल रहे, बिकॉज एवरी हाउस से समवन इज डाइंग बिकॉज ऑफ द अदर डिसीज। इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर हमें उसको हेल्प करनी है। आप कहीं से भी हो, हम तो ये आप इसकी जिम्मेदारी भी आप लो। आज जो कंजेशन आपके कॉलेज के समय, and inside the thing, beautiful. I always make fight with my vice chancellor that हमारे नॉर्थ कैंपस जो ऑलवेज पेपर में रहते, फैशन डिजाइनिंग खाना, नॉर्थ कैंपस के आने के पहले सारे कुछ पेपर में एज ए कमोडिटी आ गया। But no one bothers about the pollution. No one bothers about the lung quality. कितने बच्चे मर रहा है, कितने सांस फूल रहे। I found after our this drive, two thing I found कि इतना प्रोग्राम करने के बाद एक बार एक रांची से फोन आए, एक बच्चे ने मुझे बोला, इट वाज टचिंग होते, मैं आपको इसी कारण शेयर कर रही हूँ, आप कर सकते हो, आप बार बार बताइए, आप कमाल कर सकते हो। बच्चे ने मुझे बोला संजीवियर्स कॉलेज के लिए, मुझे पता नहीं था they have attended the program and it's not that you and IT only people do the thing, आप सब जानते हैं, बोलो ऐसे बात नहीं है। बोला मैडम हम लोग हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने रास्ते के ऊपर पेड़ काट रहे हैं, we have to do something, and after that they are 11 o'clock they called me that आप इस immediately कुछ बताओ कैसे अप्रोच करें। That type of thing, then I talked to MOF, because I do not know anything about Ranchi as I'm not there, and then I told number from the Ranchi Forest Department and their government PWD, मैंने बोला बेटा ऐसे कुछ एक्टिविज्म मत कर दो, फिर जेल में तुम लोग भी सबसे पहले डाल देंगे, तो आप अच्छे करने जाते हो आप फंस जाओ। Go with form, not against government, नारा मत लगाओ, एक्टिविज्म मत करो, आपको जो करना है, मैं एक्टिविज्म के लिए आप लोग के पास आई हूँ, मैंने आप लोग को साथ लेके चलने के लिए आई हूँ, जहां तक मेरे हो सके, फिर आप लोग आगे जाओगे, हम लोग पीछे चले जाएंगे। The reason is that then what they did, I have forgotten after discussing, मेरे को तो मेरे बेटे गाली भी रहा है मारे कि रात 11 बजे तुम किससे बात कर रहे हो, खाना तो दे दो। The reason is that I found they are same पागलपन है उसके अंदर, and after 1-2 months I found they are sending me photo at 11 o'clock that उसने जेपी जी बुलाए, वो प्लांट को सब उठा के ट्रांसप्लांट कर दिया, रास्ते से काटने नहीं दिया बच्चे। ये भी एक टाइप का चिपको मूवमेंट है। I'm feeling I'll try and I feel happy, वो हैप्पीनेस के कारण मैंने बच्चे को एक तभी भेजा कि आप लोग, मुझे पता नहीं आपका नाम क्या है, आप कौन हो, आप मेरे स्टूडेंट भी नहीं हो, पर कहीं पर तो आप थे जो मैसेज मेरे हमारे हैं कि आप लोग सब निकल पड़ो रास्ते पे, पॉलिटिक्स छोड़ो, इलेक्शन छोड़ो, सब कुछ छोड़ के वो करो जो हमारे लिए जीने के लिए जरूरत है। दिस इज द ओनली मैसेज आई वांट टू गिव यू कि आज के जो प्रयास थे, मैम के साथ मैं आई, बहुत बार मैं एमिटी नोएडा पहुंच जाती हूँ, मैं उसके पार्ट हूँ, सिलेबस देखती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मैम से अचानक मिले तो मैम ने बोले मैम आ जाओ, तो मैंने बोला चलो एक बार कभी ना टाइम मिल के आ जाता है। सो आई एम थैंकफुल दैट शी वाज टेकिंग ऑल द पेन टू ब्रिंग अस एंड टू डू दिस जॉब, बट यहाँ से आपकी जिम्मेदारी शुरू है, फिर मिले और ना मिले, but I want to say someday, some point of the time you may send me a photo कि मैम ये प्लांट हमने लगाए, कि ये चीज हम किए हैं एनवायरमेंट के लिए, this is the actual मेरे लिए खुशी की बात होंगी। 25 बंदे के अंदर 2 बंदे तो करना। Thank you very much. I feel now you go with the questions. Where is Ankita? No, you. Pen? Okay, so अब हम एक क्विज सेशन करेंगे। तो आप लोग अभी तक बैठे हो, you have heard everything, आप सब समझे हो, you have listened to all the speakers, तो let's go for a quiz session now. जो भी सही आंसर देगा, they will get a very unique pen. It's a pen, वो बहुत, it's a biodegradable pen basically, और उसके पीछे we have seeds of different vegetables.
तो जो भी जीतेगा दे विल गेट दैट पेन एंड यू कैन जस्ट आप यूज करने के बाद उस पेन को आप अपने पॉट में इन सॉइल आप उसको डाल देना एंड इट विल ग्रो। उसके वो कार्डबोर्ड का बना है एंड वो वैसे भी बायोडिग्रेडेबल है, इट विल एक्ट एज अ मैन्योर आल्सो। ठीक है, सो आर यू रेडी? लाइक गिव मी सम एक्साइटमेंट, कम ऑन, say yes, come on, say yes. All right, shall I start? ठीक है, जो सही आंसर देगा एंड बिफोर आंसरिंग यू हैव टू रेज योर हैंड्स, थोड़ा क्योटिक मत करना, ठीक? ओके, आई विल स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट इज AQI? यस यू। ओके, और उसके कितने मतलब उसका क्या रेंज होता है? If there is no pollution, the air quality index will be less. If there is more pollution, the air quality index will be high. From if I talk about moderate, it would be 170, which is moderate pollution level. If it will be high, it will be more and more. It will keep on increasing. So what is the lowest and what is the highest value that the AQI can have? Since you answered one question, I'll give you one pen. So, okay, so this is the another question. What is the range of AQI? Yeah, you in the black. What's your name? I am Neenal Saxena. Okay. So for low, it is 0 to 50, and for high, like it can go over like 2002. Okay, वैसे usually हमारी जो range होती है क्या है कि that is 0 to 500. However, if the pollution is very high, it can go up to 1000, 1500 as well. Yes. So since you answered correctly, we'll give you a pen. Clap for her. Clap for her. अच्छा, ये बताइए कि how does the PM 2.5 जो सर ने बताया था कि how does it affect the human health? Like what is the main organ that it deposits into? Okay, you in the yellow. First, tell me your name and then you answer the question. Hello, ma'am. My name is Pratiksha Dubey. It generally affects the alveoli part of the lung. That's great. You have answered correctly. Clap for her, everyone. Please give her a pen. Okay. हमारा टेक्निकल सेशन जो 1 था, it was about bioaerosols, basically indoor air pollution. तो मैम ने एक टर्म बोली थी, that is SBS. ध्यान दिया था किसी ने? Do not Google. Do not Google. Okay, what is the full form of SBS? It's related to indoor air pollution. Anyone? Anyone from here? Who said it? Raise your hand first. I can't. Someone said something. Batao. Hello, my name is Pranav. It's sick building syndrome. Yes, you have answered correctly. Very good. He was actually paying attention. You were also. Tough question, but good job. Okay. मुझे कोई भी give me 3 sources of bioaerosols. 3 sources. In indoor environment, indoor microenvironments. Just give me 3 sources of bioaerosols. Yes. Please give her the mic. Hello, my name is Ayushi Agarwal. The indoor sources of bioaerosols are damp areas, HVAC ducts, and potted plants. Yes, that's right. Good. Okay, अभी just अभी हमने एक technical session कराया था, which was SCI. What is the full form of SCI? I hope it's not presenting right now. What is the full form of SCI? Yes, you, either left me. Sequential comparison index. Yes, good.
अच्छा, अभी जब आप सुबह उठते हो तो यू सी द एटमॉस्फेयर वेरी हेजी, उसका क्या रीजन है? बताओ। इट्स विंटर्स राइट नाउ। हाँ, अभी विंटर्स चल रही है, यस। I'm Avantika, and usually in winter times it's fog, but recent times it's smog, photochemical smog and other kinds of smog. Yes, yes, good. Another question. What is photochemical smog composed of? Anyone? मैं बता दूं? At least try. गलत आंसर दे दो। Yeah. Nitrogen oxide and volatile organic compounds. Yes, good. Give her a round of applause. उसको पेन दे। हाँ, in presence of light. अच्छा, अभी को 29 होने वाला है नवंबर दिसंबर में। Where is it going to be held? Yes, you one in the white. What's your name? Okay. Baku, Azerbaijan. Yes, good. You read. Good. Then. Okay, जो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, उसमें डिसाइड हुआ था कि इतने एक सर्टेन डिग्री ऑफ टेम्परेचर से ऊपर हम अर्थ का टेम्परेचर जाने नहीं देंगे। तो व्हाट वाज दैट सेट डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर? एनीवन? चलो गेस कर लो। 48. नो, ऐसा होता है कि इतना इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होने देंगे। ऑप्शन मांग रहे हो? चलो आई गिव यू 2.5, 1.5, 2, 3 डिग्री सेल्सियस। ही रेज हैंड फर्स्ट, येलो में। Two degrees Celsius. No, unfortunately that is wrong. 1.5. Yes, you did a guess, but you got it right. Clap for him. Good. Lucky. हाँ जी, तो it's because of all our जो हम करते हैं, all anthropogenic sources, yeah, Paris Agreement के according, हाँ जी. Have you heard of a Minamata disease? Have you? वो किसकी वजह से होता है? Like which element causes Minamata disease? Yes? Yes. Good. Mercury से होता है. Okay, I'll ask 2 more questions. ठीक है, अब बस सिंपल से पूछूंगी मैं, ठीक है? जब मैम इंडोर एयर पॉल्यूशन की बात कर रही थी तो शी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट POPs. What does it stand for? Yes. Yes, good. उनको पेन दो. Okay, what is the supreme decision-making body of United Nations Framework Convention on Climate Change? UNFCCC है जो, बताइए उसकी क्या डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी. ऑप्शंस चाहिए दूं? Shall I give the options? ठीक है. Okay. The first option is United Nations Environment Program.
The second option is Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. And the third one is Conference of Parties, COP. Yes, she raised the hand first. The conference of the party. Yes, good. Options चाहिए होते हैं मतलब तुम लोगों को. Good. Please give her the pen. Okay, last two questions. घूमने का किसको शौक है? सबको है. ठीक है, चलो जिसने ये आंसर दिया, they will get 2 pens. Okay, just for this question. Okay. एक फ्लोटिंग पार्क है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. वो कहाँ पर है? मतलब what is the name of that floating park in Northeast India? बताओ चलो. पीछे वो सब गूगल कर रहे हैं. हाँ, गूगल कर लिया तुमने? You will get second chance. Okay, let someone else Google. Anyone? किसने? Yeah, you in the center. Yeah, you. KBU Lamjao National Park. Yes. Please give her 1 pen and him too. You have to split it now. I know you must have Googled it right. Okay, last question. It is one of the basic questions जो I hope सबको पता होना चाहिए. ठीक है? तो who coined the term ecology? ऐसे करोगे? हाँ? No. Yeah. Did you Google? Be honest. You did Google. नहीं ऐसे नहीं चलेगा. Fine, we'll give you a pen. Okay, that was the end of our quiz session. I hope you liked it. मजा आया? How was the program? अच्छा था? Very nice. Last में थोड़ा आप energetic हो गए हो, मुझे दिख रहा है. ठीक है? हाँ? Yeah. What did you get? Okay, nice. तो जब इसको यूज कर लो, खत्म हो जाए ये पेन, you just sow it in the soil and you will get vegetables, organic vegetables मिल जाएंगी. Okay, thank you so much. I'll now hand over the rice to Rumaisa and Mithika. Thank you. Thank you, ma'am. It's a very interesting quiz. We're displaying a QR code which is screen here. We request all the participants to fill up the feedback form for the workshop to receive a certificate. Only those who fill up the feedback form will be receiving any certificate. You can scan the QR. We display shortly and please fill it out. Okay, at the end, we have reached to the end part of the program, as we have already discussed. So now I hope you have enjoyed, you have bored also, you have enjoyed also. आज ये feedback देना, because feedback is not only for good thing, you have a right to give your suggestion, because this is the program we are doing in every places. What you need, as we have a list, I asked you to give some suggestion also or interactions. आपने कोई आए नहीं, आप लोग बहुत आलसी हूँ मैं ये देख रही हूँ, कोई उठ के आए नहीं यहाँ तक स्टेज तक. आना चाहिए था, कुछ 2-4 बातें हो जाते आपके साथ. जो भी है आपका फीडबैक देना, आपको क्या अच्छा लगे, क्या बुरा लगे, क्या करना आप जानना चाहते हो, because I just want the mind mapping of yourself that in the next program, next venue, next place, I should take care of your suggestion and I can add on this thing on the topic. This is my feedback mission, and I hope everything will be something, one deed you do in your life जो environment related है. आज पता नहीं आप लोग कौन सी डिसिप्लिन की हो, इतना तो इंटरेक्शंस हुई नहीं हमारी.
आप लोग नाम बताए, डिपार्टमेंट नहीं बताए, पर जो भी डिपार्टमेंट के हो, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आप कुछ करो, मिल के करो सारे डिपार्टमेंट के साथ। एंड अब तो कॉलेज के लिए, बट डेफिनेटली यू डू सम फॉर कम्युनिटी. You as the one of the youth brigade, I'm relying on that you can do. हम तो political person है नहीं, हमारे पास और कोई power नहीं है, man power ही है, and that is you are the guys. So thank you very much, and we'll meet sometime, someday, maybe in some place. Wish you for the better future. Thank you. You are on the. वेबसाइट नहीं आ रही ना उससे. And hope all the participants have filled the form. Before we wrap up, we would like to express our heartfelt gratitude to all our chief guests, all our esteemed guests, faculty members, the dignitaries, all the participants, our student coordinators, our volunteers, all the organizers, the food team, the tech team, and the photography team, the IT tech team of both AMD Noida campus and AMD Lucknow campus, and everyone else who was a part of this event for making this workshop a great success. Thank you all once again for your participation. We hope that this event has been enlightening and that you carry forward the knowledge gained here today to tackle environmental challenges more effectively. Safe travels home and have a great evening ahead. Thank you. As for the dignitaries, we do have a team plan for you to make. Thank you, everyone. तो मैं बना के दिया.